यहाँ कौन सी मैडम है जो इधर रहती है? हाँ, दुर्गे स्मृता हरसि भीतिम् अशेषजन्तोः स्वस्थये स्मृता मतिमतीव शुभान् ददासि दारिद्र्यदुःखभय हारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनं मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव 300 रुपये पेमेंट कर दी। प्रौढदावाग्निलीलम्। उपयोग से कुछ नहीं होता। डॉक्टर के यहाँ पैसे दे दो, अपने आप इलाज इलाज भी नहीं कराओ, बस वहां जाके लाइन में लगो, पर्चा कट रहा है, दवाई दे रहे हैं, यहाँ पे गुड आफ्टरनून एवरीवन। नमस्कार सभी को। आज के इन दिस इवेंट ऑफ नाड़ी प्रबोधिनी डे 3 आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि पिछले 2 दिनों से हम लोग लगातार नाड़ी प्राचीन से लेकर अर्वाचीन और विविध विषयों के साथ यहाँ पर अनेक सारे स्पीकर के साथ और एक्सपर्ट सेशंस
और कल जो था पेपर प्रेजेंटेशन का डे था, तो आज के इस तीसरे दिवस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज भी हमारे यहाँ पर कुल टोटल देयर आर 6 सेशंस ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, जनरल प्रैक्टिस में और शास्त्रोक्त नाड़ी परीक्षा कैसे करें, नाड़ी परीक्षा को लेकर आगे फ्यूचर क्या है, स्कोप क्या है, उसको लेकर ऐसे अलग अलग विषयों के साथ भी आज का ये हमारा तीसरा दिन होगा। यहाँ पे उपस्थित आप सभी वैद्यों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ नाड़ी गुरु आचार्य संजय कुमार सर से वो 2 शब्द कहे इस अवसर पर। आज का हमारा पहला सेशन है वैद्य हरीश पाटनकर सर का शास्त्रोक्त नाड़ी परीक्षा को लेकर। यस सर। सर अनम्यूट करें। अनम्यूट करा सर। एक मिनिट सॉरी। हाँ सर, आता करू शकता। नाड़ी प्रबोधिनी इस आयुष दर्पण फाउंडेशन के द्वारा आयोजित 3 दिवसीय नाड़ी महायज्ञ में उपस्थित सभी वैद्यों का मनपूर्वक स्वागत। पिछले 2 दिनों से हमने नाड़ी के बारे में बहुत कुछ समझने का प्रयास किया और साथ में ही नाड़ी के बारे में हमारे नई जनरेशन क्या सोचती है, कैसे उसको समझती है, इसको भी समझने का प्रयास किया। मेरे ख्याल से इस पूरे उपक्रम का सबसे महत्वपूर्ण जो हिस्सा है वो यही है कि नई जनरेशन क्या सोच रही है। जो नाड़ी परीक्षा करने वाले वैद्य है, ऐसा न हो कि वो एक्सटिंक्ट हो जाए और शास्त्र को पीछे छोड़े ही नहीं। आवश्यकता ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से यही है कि नवीनतम जो हमारे वैद्य मित्र है, जो हमारे विद्यार्थी है, जो हमारे साथी है, वो नाड़ी परीक्षा के नए आयामों को छुए, नए आयामों को खोले और नाड़ी परीक्षा जो एक विश्व में बहुत उम्दे तरीके से सभी जगह पर इस्तेमाल हो, उसमें प्रयासरत रहे। तो आज का दिन मैं आशा करता हूं कि जो हरीश जी से शुरू होकर हमारे टेक्निकल एंड तक जाने वाला है और आखिर में मदन जी जो एक अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जीनोम साइंटिस्ट है, यूरोपियन आयुर्वेद एसोसिएशन के संस्थापक है, चेयरमैन है, उनके माध्यम से नवीनतम स्थितियों में नाड़ी परीक्षा का क्या रोल हो सकता है, इसके बारे में भी समझने का प्रयास करेंगे। मैं आशा करता हूं कि हरीश जी से आज सवाल शुरू होने वाला ये जो हमारा प्रयास है वो रंग लाएगा। सभी लोग उत्सुक है हरीश जी को सुनने के लिए। मैं भी। हरीश जी का स्वागत। मैडम। हाँ सर, ये हरीश सर की पहचान की जरूरत नहीं, वो अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त केश विशेषज्ञ है, सौंदर्य को लेकर काम कर रहे हैं। तो सौंदर्य के लिए तो सभी का एक अपना ये रहता है, तो आई थिंक कि उसको लेकर सर का बहुत ही अच्छा काम है। और नाड़ी के बारे में भी आज हम पहली बार नाड़ी के बारे में सर से सुनेंगे। शायद मैंने कभी सुना नहीं सर को नाड़ी शास्त्र को लेकर, सो ये एक अच्छा मौका है। बाकी तो त्वचा रोग और स्किन को लेकर बहुत बार सुना है। वेलकम सर। नमस्ते, थैंक यू मैडम जी एंड थैंक यू रिस्पेक्टेड संजय सर। आपने बहुत ही अच्छी तरीके से सराहना की। हमारे बारे में भी आपने जो भी प्यार भरे शब्द कहे वो हमेशा हमें मोटिवेशन ही देते हैं। पीपीटी शेयर करते हैं। हाँ, यस डेफिनेटली।
कब शुरू करना है? शुरू करें अभी? हाँ यस करिए यस। हाँ, ओके। ये वरती ध्यान रखना। ऑटो प्ले बंद। नंतर आपल्याला डिस्कशन करता येईल सर, थोडे क्वेश्चन्स वगैरे असले ना तर आपण घेऊ शकतो टायमिंग्स मध्ये. येस हाँ ठीक है, हरकत नाही. अगोदर माझा विषय पूर्ण करू ना आता. हो हो येस बिलकुल. हाँ हाँ चालेल, ठीक आहे. रागादि रोगान सततान शक्तान अशेष काय प्रसुतान शेषान औस्तुक्य मोहाजृतिदाशगान यो पूर्व विद्याय नमोस्तु तस्मै. नमस्ते, मैं वैद्य हरीश पाटनकर आज आपके सामने आयुष दर्पण के इस प्लेटफॉर्म के जरिए आपके सामने आज शास्त्रोक्त नाड़ी परीक्षा ये जो विषय है वो हम आपके सामने प्रेषित करने जा रहे हैं. तो सबसे पहले इस विषय की शुरुआत करने से पहले कुछ चीजें जो है जिनके बारे में हम बात करते हैं कि जैसे अभी 2 दिन से आप ये ज्ञान यज्ञ जो है नाड़ी का वो बहुत ही अच्छी तरीके से हम सब लोग सीख रहे हैं. शुरुआत ही आदरणीय लक्ष्मण लावगनकर सर ने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको शास्त्रोक्त नाड़ी परीक्षा सभी बताया है. तो आज का जो मेरा कार्य है वो बहुत ही उन्होंने हल्का किया है, लघु किया है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल शुरुआत से ही प्रारंभता से ही शास्त्रोक्त नाड़ी परीक्षा आपको बताया है. उसके बाद अनिरुद्ध सर ने भी इसका जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसके बारे में भी बहुत अच्छे तरीके से बात कही है. बाकी बीच बीच में हमें छाजड़ सर भी बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर रहे हैं. मेरा जो आज का विषय है शास्त्रोक्त नाड़ी परीक्षा में ये कुछ इम्पोर्टेंट चीजें जो इसमें मुझे लगता है कि आपके पास तक पहुंचनी चाहिए वो मैं आज जो भी ज्ञान मेरे से प्राप्त हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर करने का प्रयास करूंगा. तो यहाँ पे एक श्लोक आप देख रहे हैं कि यथा वीणा सर्वरागान प्रजायते तथा नाड़ी सर्वरोगान प्रजायते. तो आदरणीय द्वेकर सर हमें हमेशा ये बात कहा करते थे कि आदरणीय द्वेकर सर हमें हमेशा ये बात करते थे कि जिस कार से कोई भी जो वीणा होती है कोई भी जो वाद्य होता है उसकी तार छेदने के बाद जैसे सप्त स्वरों का ज्ञान हो जाता है, उन ध्वनि परिचित हो जाती है, उसी प्रकार जो भी वैद्य नाड़ी जानने वाला होता है उसको बस नाड़ी की तार चाहिए. वो अगर नाड़ी की तार अच्छी तरह से छेड़ता है तो वहां तो उत्पन्न होने वाले नाद उसको बहुत अच्छी तरीके से सुनाई दे सकते हैं और वो उस देह में क्या हो रहा है वो जान सकता है. तो हम देखो बहुत बार ऐसे कहते हैं कि मुझे आपकी नाड़ी सुननी है या आपकी नाड़ी देखनी है. नाड़ी सुनी भी जाती है, ओके, केवल ये स्पर्शन परीक्षा का विषय नहीं है. ये जैसे सर ने भी बताया कि ये शास्त्र भी है, ये कला भी है और ये एक सिद्धि भी है. तो तीनों चीजों को हमें साथ में लेके इसको समझना है. जैसे वीणा का वादन करना ये शास्त्र भी है, वो एक कला भी है और उसकी एक सिद्धि भी होती है. जो नाड़ी की तार छेदना जानता है दूसरा वैद्य भी सेम उसी लैंग्वेज में बात कर सकता है कि आपने छेड़ी हुई नाड़ी की तार सही है या गलत है. जैसे वीणा की तार आप छेड़ते हैं तो उससे उत्पन्न होने वाले सारे ग म प ध नि सा जो शास्त्रीय संगीत को जानते हैं वो पहचान सकते हैं कि आपने गलत छेड़ा है या सही छेड़ा है. उसी प्रकार से नाड़ी विशेषज्ञ जान सकते हैं कि आपने जो नाड़ी की तार छेड़ी है, जो सुना है वो सही सुना है या गलत सुना है. इसलिए ये आना बहुत ही जरूरी है. तो हम देखते हैं कि मेरे दोनों आदरणीय गुरुवर्य वैद्य दिवाकर जुवेकर सर और वैद्य जमदग्नि सर, इन दोनों को प्रणाम करके मैं ये जो विषय है दोनों परंपराओं का जो नाड़ी शास्त्र है, जैसे जुवेकर सर जी के पास से हमने शास्त्रोक्त नाड़ी परीक्षण का अध्ययन किया और आदरणीय जमदग्नि सर के यहाँ पे हमने सदगुरु परंपरा से जो आती है वो नाड़ी परीक्षण, नाथपंथीय नाड़ी परीक्षण जो है उसका भी अध्ययन करने का सौभाग्य हमें मिला. तो इन दोनों गुरुवरियों को सादर पूर्वक नमन करके मैं आगे के जो मेरे विचार है वो प्रस्तुत करने जा रहा हूँ. तो इनको लेके हमने बहुत सालों पहले एक नाड़ी विज्ञान की एक डीवीडी भी जो है
वो प्रचलित है, उसका प्रकाशन 16 भी बहुत अच्छी तरीके से हुआ था। आप सब लोगों को पता है कि हम एक गुरुकुल चलाते हैं, प्राचीन संहिता गुरुकुल। तो प्राचीन संहिता गुरुकुल में ये विषय बहुत ही डिटेल में प्रकट किया गया था, इसलिए उसका जो पूरा मेरा व्याख्यान है वो आप इस नाड़ी विज्ञान की डीवीडी में सुन सकते हैं। मैं इसलिए ये चीज बता रहा हूँ कि क्योंकि अभी जो एक 30-35 मिनट यहाँ पे मिलने वाले हैं, शायद इसमें सभी चीजें मैं आपके पास ना पहुंचा पाऊँ, पर अगर किसी को इसमें ज्यादा रुचि है, वो सुनना चाहता है, तो ये खुद का जो ज्ञान है वो इस तरीके से भी बढ़ा सकता है। इसी प्रकार हर एक जो भी वैद्य है उनके पास हमने जाना चाहिए, हर किसी के पास से हमने जो भी ज्ञान है वो सीखना चाहिए। शिल्पा मैम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, नवीन जोशी सर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, वो भी नाड़ी के कोर्सेज चलाते हैं। तो आप उनसे भी ये जो नाड़ी परीक्षण का अध्ययन है वो ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। इन कोर्सेज के लिए महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ के जरिए भी हमने एक प्रमाण पत्र अभ्यासक्रम निर्माण किया था। डॉक्टर अरुण जामकर सर उस वक्त वहाँ के वाइस चांसलर थे। तो ये सर्टिफिकेट कोर्स भी जल्द ही आने वाला था, लेकिन कुछ चीजों के कारण वो शुरू नहीं हो पाया। फिर भी 4.5-5 साल हम आयुर्वेद शास्त्र सीखते हैं, लेकिन हम कभी नाड़ी का शास्त्र जो है वो साइंटिफिकली हमारे सिलेबस में ही नहीं है। तो मेरा ये तो हमेशा कहना है कि अगर हमें नाड़ी की थियरी पता नहीं है, तो नाड़ी का जो प्रैक्टिकल है वो भी समझने में हमें दिक्कत आती है। तो इसलिए हमने हमेशा नाड़ी की थियरी अच्छी तरीके से सीखनी चाहिए। अगर हम नाड़ी की थियरी अच्छी तरीके से सीखते हैं तो नाड़ी का प्रैक्टिकल भी हमें अपने आप आना शुरू हो जाता है। इसलिए सर्टिफिकेट कोर्स इन नाड़ी विज्ञान ये जो है ये भी हम बहुत सालों से चला रहे हैं। हमारे गुरुकुल के विद्यार्थी इसको सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और नाड़ी की जो कला है वो बहुत आनंद हो रहा है कि अब ज्यादा से ज्यादा वैद्य इसको सीख के आत्मसात करके लोगों में इसका जो ज्ञान है वो बटोर रहे हैं। सो जैसे मैंने कहा था, विदाउट लर्निंग द थियरी ऑफ नाड़ी वन कैन नॉट अंडरस्टैंड द प्रैक्टिकलिटी ऑफ द नाड़ी। तो अगर हमें नाड़ी का प्रैक्टिकल आना चाहिए ऐसा लगता है, तो नाड़ी की थियरी हमने बहुत अच्छी तरीके से सीखनी चाहिए। जिसको वात पित्त कफ अच्छी तरीके से पता है, जिसको ग्रंथ का ज्ञान अच्छी तरीके से पता है, वही रोगी की परीक्षण अच्छी तरीके से कर सकता है ना। जैसे हम कहते हैं कि दर्शन स्पर्शन प्रश्न ही परीक्षेतात रोगिणम, तो वो रोगी परीक्षण तभी हो जाएगा अच्छे से जब आपका शास्त्र का पठन अच्छे से हो गया है। इसी प्रकार नाड़ी का सुनते वक्त बस ऐसा होता है कि हमें नाड़ी का थियरी करना नहीं है और हमें डायरेक्टली ऐसा लगता है कि नाड़ी का प्रैक्टिकल हमें आ जाए, तो ये संभव नहीं है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा हमने नाड़ी के थियरी के ऊपर काम करना चाहिए। अब जो नाड़ी की थियरी ग्रंथ में आई है, वो ग्रंथ में आई हुई नाड़ी की थियरी वैलिडेट करनी भी जरूरी है। वैलिडेट करना मतलब जो हमारा साइंस है वो अभी के जो लेटेस्ट मॉडर्न के पैरामीटर्स है उसके ऊपर भी टिकता है कि नहीं टिकता है, वो हमने दिखाना चाहिए, वो हमने साइंटिफिकली प्रूव करना चाहिए। तो जैसे आपने नाड़ी तरंगिणी डिवाइस देखा, अनिरुद्ध जोशी सर ने उसके ऊपर बहुत काम किया है, उनका लेक्चर भी आपने सुना, द साइंस फ्रॉम द ओशियन टू प्रूव इट्स लॉजिकल साइंस। तो आयुर्वेद ऑलरेडी लॉजिकल है ही, ये मैजिकल साइंस नहीं है। और उसमें आई हुई नाड़ी परीक्षा विधि ये भी 100% लॉजिकल साइंस है, इसमें कोई मैजिकल साइंस नहीं है। तो बस हमें इसका लॉजिक जो है वो खुद पहले समझना है, और उसके बाद हमें ये रोगियों को भी समझाना है, अदर पैथीज को भी हमें ये समझाना है, और जितना हो सके इसका शास्त्रोक्त प्रचार प्रसार हमें करना है। तो इसलिए हम देखते हैं कि यहाँ पे एक छोटी सी आप सक्सेस स्टोरी देख रहे हैं, द सक्सेस स्टोरी ऑफ 10,000 आवर्स जो कहा जाता है। यहाँ पे आप मांझी की थियरी देख रहे हैं कि अगर वो तय करता है कि वो पूरे पहाड़ को भी तोड़ के वहां से एक रास्ता बनवा सकता है, जो अशक्य है वो भी शक्य हो जाता है अगर आप उस चीज को ठान लेते हैं। तो बहुत बार जब हम फर्स्ट ईयर को आते हैं तभी हमें एक इम्प्रेशन के अंदर दबाया जाता है कि हजारों नाड़ियां परीक्षण करने के नहीं करेंगे तब तक आप नाड़ी परीक्षण आपको पता नहीं चलेगा, आप ये मत करो वो मत करो। और नाड़ी के मन शास्त्र के बारे में जो एक थोड़ी सी भीति है, वो फियर है, वो फियर फैक्टर हमारे दिमाग में डाला जाता है। तो उसको पहले निकालो, आप उस फियर फैक्टर को पहले निकालो। सब पहले तो ये बात याद रखो कि आवर आईज कांट सी द थिंग्स विच आवर माइंड डजंट नो। हमारी आंखें वो चीजें नहीं देख सको, पता नहीं है। तो सबसे पहले तो आप शास्त्र का अध्ययन शुरू करो, मन को नाड़ी परीक्षण के जो ग्रंथोक्त श्लोक है वो बताना शुरू करो, उसका अध्ययन शुरू करो,
और सभी जो यहाँ पे आयुर्वेद और नाड़ी शास्त्र सीखने के लिए आए हुए विद्यार्थीगण हैं, उनको मेरा बस यही रिक्वेस्ट है कि आप अभी एक बार अगर आप सोचते हैं, ठान लेते हैं कि आपको नाड़ी विशेषज्ञ बनना है, तो 1000 नाड़ी कंप्लीट करना कोई ज्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है। एक दिन में आप 30 बार खुद की नाड़ी परीक्षण भी करेंगे, 100 नाड़ी परीक्षण एक दिन में 30 बार आप खुद का नाड़ी परीक्षण तो आराम से कर सकते हैं। दिन में 30 बार आप खुद का नाड़ी परीक्षण करते हैं तो महीने में 30 दिन में ऑलमोस्ट 900 टाइम्स नाड़ी परीक्षण हो जाता है, और 3 महीने में 2700 मतलब तकरीबन 3000 नाड़ी परीक्षण हो जाता है खुद का। तो 100 नाड़ी परीक्षण करके 3 महीने में हम नाड़ी सिद्धि हासिल कर सकते हैं। और जो लोग कहते हैं कि हजारों नाड़ी देखनी चाहिए, तो उनको आप जवाब दे सकते हैं कि हजारों नहीं, हमने 3000 नाड़ी देख के जो भी हमारा इसके ऊपर का मत है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप खुद से पहले ठान सकते हैं। आप खुद सोचो, जो भी यहाँ पे स्टूडेंट है इनके लिए मेरा ये मोटिवेशनल लेक्चर है। जो भी बड़े वैद्य हैं, कृपया इस लेक्चर को दूसरे एंगल से ना ले, बस यही रिक्वेस्ट है मेरी। तो जो भी यहाँ पे स्टूडेंट है, 4.5, 5, 10 साल से आप आयुर्वेद पढ़ रहे हैं, बस मेरा उनको यही कहना है कि आप तय तो करो। आप सोचो पहले आपने कितनी बार खुद की नाड़ी परीक्षण किया है। हम करते ही नहीं है, तो शुरुआत खुद से करो 100 नाड़ी परीक्षण। और जैसे ही 100 नाड़ी परीक्षण करके आप कोशिश करना शुरू करेंगे, आपको automatic के साथ को अपना सर आवाज शायद हैंग हो रही है। फिर से एक बार शेयर करिए। हरीश सर आर यू देयर? यस। हाँ, नेट कनेक्ट डिस्कनेक्ट हुआ था। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ यस सर, कंटिन्यू प्लीज। शायद पीपीटी रीलोड करना पड़ेगा। तो ये किस्सा मैं आपको बता रहा था कि रशियन एम्बेसी का किस्सा है। तो जैसे ही मैंने फॉर्म फिल किया, मैंने वहां पे आयुर्वेद विशेषज्ञ और नाड़ी विशेषज्ञ ये लिखा था। तो जाहिर है कि जैसे मेरा नंबर आ गया, मैं क्यू पे था, लाइन पे था, नंबर आते ही उन्होंने वो देखा, फॉर्म देखा और पहले ही सवाल पूछा कि आप रशिया क्यों जाना चाहते हैं। तो मैंने बताया कि वहां से इनविटेशन है हॉस्पिटल से, तो मैं वहां पे जाना चाहता हूँ, वहां पे कुछ चीजें देखना चाहता हूँ। मैं एक आयुर्वेद कंसल्टेंट हूँ, तो हो सके तो जो मेरे लेक्चर्स उन्होंने वहां पे शेड्यूल किए हैं, मैं वहां पे रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपने यहाँ पे आयुर्वेद विशेषज्ञ और नाड़ी तज्ञ लिखा है। तो मैंने कहा हाँ। तो जाहिर है कि उन्होंने उसके ऊपर कुछ सवाल किए। मैं चाहता था तो यही था, अगर मैं चाहूँ तो वहां पे डॉक्टर लिख के भी हम जा सकते थे, लेकिन मैं चाहता ही था कि ये आयुर्वेद के बारे में हमें सवाल पूछे, मैं ही था कि ये नाड़ी के बारे में हमें कुछ सवाल पूछे, तब जाके तो मुलाकात बनेगी, तब जाके तो कुछ डिस्कशन हो जाएगा। तो रशिया में नाड़ी परीक्षण को पुल्स एग्जामिनेशन कहते हैं।
तो जाहिर है कि वो एम्बेसडर ने पूछा कि डू आर यू पुलिस एग्जामिनेटर, तो मैंने कहा हाँ। तो हर एक को दिलचस्पी होती है कि कर सकते हैं, तो मैंने कहा हाँ मैं कर सकता हूँ। तो उन्होंने अंदर बुलाया, सब लोगों को पीछे लगा कि अब क्या हो गया है, जो मेरे साथ आए भी लगा कि कुछ प्रॉब्लम हो गया क्या, इनको अंदर बुलाया है। मुझे तो पता था कि अब किस चीज के लिए बुलाया है। तो हम अंदर गए, उसकी नाड़ी देखी तो जैसे ही पता चला, ग्रंथ में बताया है, तो ये अर्श की नाड़ी थी। तो मैंने उसको बताया कि आपको शायद अर्श हो सकते हैं। तो वो एकदम तार से खड़ा हो गया, उसको वो एकदम सरप्राइजिंग और शॉकिंग लग गया। तो उसने क्या किया, और एक दो जो बंदे थे वहां के उनको भी बिठाया, बोला कि इन ऑफिसर्स की भी नाड़ी देख लो। तो मैंने उनकी की भी नाड़ी परीक्षण किया, और जो भी उनके व्याधि वो मैंने गेस करने की कोशिश की और बताई, तो उनके भी व्याधि सही निकले। तो उनको एकदम ही आश्चर्यचकित वो हो गए, और ही बिकम वेरी इम्प्रेस्ड। मुझे तो वीजा दिया ही, ऑन द स्पॉट वीजा दिया, बहुत ही अप्रिशिएट करके हैप्पीली दिया। ऊपर से उनके जो फ्रेंड्स थे वहां पे रशिया में, उनको भी उन्होंने बता के रखा कि ये डॉक्टर आने वाले हैं। उनकी जो वाइफ वगैरह थी उनको बता के रखा कि ये डॉक्टर आएंगे, कृपया आप आपका भी नाड़ी परीक्षण करवा के ले लो। तो धीरे धीरे रशिया में भी जहां जहां पे मैं जाता हूँ, सोची, स्मॉलेंस, यारोस्लावा, इवानोवा, सब जगह पे धीरे धीरे इसका प्रचार प्रसार होते चला गया, और लोग केवल नाड़ी परीक्षण करने के लिए, नाड़ी दिखाने के लिए वहां पे आना शुरू हो गए। तो एक छोटी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी कि मुझे लगा कि जो नए स्टूडेंट्स है, जो अभी ये पढ़ना चाहते हैं, उनको उनको इसका फायदा हो जाएगा। ओके, तो इससे बस हमें यही सीख लेनी है कि नाड़ी आपको इट्स लाइक नॉकिंग, डोर नॉकिंग एजेंट है। आपके पास कुछ भी नहीं है तो भी एक ये बहुत बड़ी कला है कि आप किसी भी घर में जाके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, रोड पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कहीं पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लिनिक आपका हो या ना हो, बहुत कुछ ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। बस आपको आप बड़े बड़े लोगों के घर में जाके भी उनकी नाड़ी परीक्षण करके, उनको इस विधि के कारण आप एक प्रसिद्ध हो सकते हैं। आयुर्वेद शास्त्र की बहुत बड़ी देन भी है आपको, जिसका यूटिलाइजेशन करके आप ऑथेंटिक नाड़ी परीक्षण करके, ग्रंथोक्त नाड़ी परीक्षण करके रोगों को रोके के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि दिस इज द डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन टूल गिवन टू यू बाय आवर शास्त्र, एंड द डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन ऑलवेज लीड्स टू ट्रीटमेंट वैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन ही ट्रीटमेंट वैल्यूएशन को जन्म देता है। तो इसलिए नाड़ी की थ्योरी सीखना बहुत जरूरी है। इसलिए समय का जो टाइम लिमिट है उसको ध्यान में रखे, मैं षड्रस की नाड़ी केवल आपके आज लेने वाला हूँ। और वो षड्रस की नाड़ी ग्रंथ में कैसी बताई है, हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो हमें कैसी वो दिखती है। और अगर ये षड्रस की नाड़ी किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ, किसी मशीन के साथ हमें देख के आगे लोगों को भी प्रूव करना है, तो हम इसको प्रो भी कर सकते हैं। तो ये जो चीज है वो हम आज देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो टास्क लिया है, क्योंकि बाकी के टास्क सब वैद्यों ने लिए ही है, तो मैंने यहाँ पे टास्क लिया है कि रस और नाड़ी। तो देखते हैं षड्रस में से पहला रस मधुर रस। में कहा है कि मधुरे हंसगामिनी या फिर मधुरे बहिर्गा नाड़ी, नाड़ी ज्ञान तरंगिनी में भी, या फिर कणादकृत नाड़ी दर्शन में मधुरे बहिर्गा नाड़ी, इस प्रकार का श्लोक आपको मधुर रस का मिलेगा। तो जैसे कि आप सब लोगों को पता है, अब देखो शास्त्र कितना कनेक्टेड है। शास्त्र कितना कनेक्टेड है ये भी देखते हैं, और नाड़ी इस प्रकार से वहन क्यों होती है मधुर रस में, ये भी देखते हैं। तो पहले तो हम सब लोगों को पता है कि मधुर रस की जो निर्मिति है वो पृथ्वी और जल महाभूत के कारण हो जाती है, उसमें पृथ्वी और जल महाभूत की प्रधानता है। तो सबसे पहली चीज हमने याद रखनी चाहिए, पृथ्वी और जल महाभूत प्रधान मधुर रस में आ जाएगी। दूसरी चीज, मधुर रस कफवर्धक है, तो कफ की वृद्धि इसमें आ गई, तो ये भी दूसरी चीज आपको स्वाभाविकता आ गई। तो मधुर जाहिर है कि शरीर में कफ की वृद्धि
वृद्धि हो जाए, मधुर रस याद आ गई में पृथ्वी और जल महाभूत की वृद्धि हो जाएगी। इन दोनों की वृद्धि के कारण डेफिनेटली अगर देखो कोई भी जो फ्लो है, कोई भी वाटर है, कोई भी लिक्विड है, अगर उसमें पृथ्वी महाभूत बढ़ जाता है तो उसका स्पीड कम होने वाला है। अगर उसमें पृथ्वी महाभूत बढ़ जाता है तो के लिए उसका जो फोर्स है, उसका जो होने वाला यहाँ पे अल्प नाड़ी की गति जो है वो थोड़ी सी मंद हो जाती है, तो जाहिर है कि उसकी जो गति है वो हंसगामिनी बन जाती। अब वो सर्प जैसी या मंडूक जैसी चपल तो नहीं रहेगी, या फिर प्रोजेक्टिंग तो नहीं रहेगी। उसमें कफ और उसमें पृथ्वी महाभूत बढ़ने के कारण गति उसकी थोड़ी सी मंद रहेगी। ये जब चीजें मैं बच्चों को सिखाता हूँ, द्रव्य ले लो, फॉर एग्जाम्पल मधुर रस प्रैक्टिकल ले दूसरा एक चाहे तो कोई भी नींबू से वो आप ले लो। तो नींबू शरबत का एक ग्लास बनाओ, एक कोको कोला का ग्लास बनाओ और एक ग्लास आप मस्तानी का बनाओ। तीनों में स्ट्रॉ डालो, तीनों में स्ट्रॉ डाल के देखो, जब आप मस्तानी पीते हैं मधुर रस का गाढ़ा कफ जैसा जो द्रव पदार्थ है उस वहन होता है, तो ऑटोमेटिकली आपको पता है कि वो जो मस्तानी है वो उस स्ट्रॉ को ऐसे दबाती है और पतला हो जाता है, मतलब उसकी जो है वो कम जाती है, क्योंकि अंदर का जो द्रव्य है वो बायलैटरल फोर्स उस स्ट्रॉ के ऊपर बनाए रखता है। उस फोर्स के कारण जो नाड़ी है वो चपटी हो जाती है, पतली आप कह सकते हैं कि वो हो जाती है। तो ऑटोमेटिकली ये जो द लैटरल फोर्स exerted by the blood on the walls of artery, जैसे हम वो नाड़ी उस फोर्स को ब्लड प्रेशर कहते हैं, उस प्रकार का आप देखते हैं, उस प्रकार का एक प्रेशर तो आ गया, लेकिन वो प्रेशर बहुत ही मंद और बाहर की तरफ खींचा हुआ आ गया, इसलिए मधुरे बहिर्गा नाड़ी ऐसा ग्रंथ में कहा जाता है। और शीत गुरु और स्थिर गुण अंदर से हो रहा है वो हमें समझ में आता है। इसलिए मैंने कहा कि आप यही चीज जो है वो नींबू पानी में वो स्ट्रॉ डालो और पी के देखो, आपको वो स्ट्रॉ के ऊपर नाड़ी का फीलिंग अलग आएगा। और वही आप कोको कोला में डाल के देख के पियो, आपको वहां पे जो स्ट्रॉ का स्पर्श है वो अलग दिखेगा। वही चीज आप जब किसी साइकिल में जब आप डालते तो वहां पे जो रबर ट्यूब होती है, उस रबर का वहन हो रहा है, केवल वायु है, तो उसका फीलिंग अलग आ जाता है। तो नाड़ी परीक्षण करना मतलब जो नाड़ी है उसके अंदर से जो भाव पदार्थ का वहन हो रहा है, उस भाव पदार्थ का वहन जिस रस धातु के आधारभूत हो रहा है, उसमें बढ़े हुए मधुर रस, अम्ल रस, लवण, तिक्त, कटु, कषाय, इनको समझना ये नाड़ी शास्त्र है। तो एक जैसे मॉडर्न में मैग्नेटिक क्वांटम एनालिसिस होता है, या फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में ही आजकल हम आप सब जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है उस प्रकार से फ्रीक्वेंसी निकाल के ही आप सब इन चीजों को देखते हैं, उसी प्रकार से ये चीज देखी जाती है। एक एक शास्त्र का वचन अगर हम अच्छी तरीके से सीखना शुरू करें तो हमें पता चलेगा कि मधुरे बहिर्गा नाड़ी का मतलब क्या है। जो हमने रिसर्च किया था उसके भी मैं कुछ रिपोर्ट्स आपके सामने, ये स्लाइड खत्म होते ही आपको दिखाऊंगा, तो धीरे धीरे ये स्पष्ट हो जाएगा कि मधुरे बहिर्गा नाड़ी मतलब क्या। कि जब मधुर रस आप सेवन करेंगे तो उस मधुर रस सेवन करने के कारण शरीर में बढ़ा हुआ पृथ्वी और जल महाभूत, शरीर में बढ़ा हुआ कफ, ये जो है उस नाड़ी की गति को मंद करता है, और मंद करने के साथ ही उसका जो आउटवर्ड फोर्स है, आउटसाइड फोर्स है और बायलैटरल फोर्स है ऑन द वॉल्स ऑफ आर्टरी, वो बढ़ना शुरू हो जाता है। इसलिए हमें नाड़ी बाहर की तरफ जा रही है ऐसा लगता है, इसलिए ग्रंथ में मधुरे बहिर्गा नाड़ी ऐसा कहा है। इसी प्रकार जो दूसरी है यहाँ पे आप देखते हैं, अम्ले कोष्णाप्लव गति या फिर अम्ले भेक गति कोष्णाहा, ऐसे ग्रंथ में कहा है।
तो अम्ल रस की जो नाड़ी होती है, आप सब लोगों को पता है कि अम्ल रस इटसेल्फ एक पित्तवर्धक है। पंचमहाभूत के हिसाब से देखा जाए तो ये पृथ्वी और अग्नि तत्व का प्रधान है। पृथ्वी और अग्नि तत्व, पृथ्वी और अग्नि महाभूत की वृद्धि के कारण इसमें जो अम्ल रस की प्रधानता आ जाती है, उसमें पृथ्वी और अग्नि के भी जो गुण है वो देखने को मिलते हैं। तो इसके कारण नाड़ी भी जो है वो अल्प उष्ण और चंचल हो जाती है। उसी के साथ जिस प्रकार से भेक गति होती है, ओके, जैसे मंडूक गति भी आप कह सकते हैं, तो उस प्रकार से नाड़ी थोड़ी सी उछल के जाती है। कोई भी जब अम्ल रस का आप सेवन करते हैं, कोष्ण और प्लव, ये जो प्लव शब्द है ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे ये सीखने जैसा शब्द है। प्लव गति जो है, इस गति को ग्रंथ में इस प्रकार की एक विशेष गति बताई है कि जो पानी के ऊपर चलता है ना, चलता है या दौड़ता है, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, चलने से भी अच्छा दौड़ना। पानी के ऊपर जो दौड़ता है उस गति को प्लव गति कहते हैं। तो बहुत बार देखो, कुछ छोटे छोटे बतख होते हैं, कुछ छोटे पक्षी होते हैं, वो पानी के ऊपर दौड़ते चले जाते हैं। वो पानी के ऊपर दौड़ के चले जाने की जो एक गति है ना, उसको प्लव गति बोलते हैं। इसके लिए सरफेस टेंशन और फोर्स, इन दोनों का भी जो कॉम्बिनेशन है ना, वो बहुत मायने रखता है। क्योंकि आपको पानी के ऊपर चलना है तो आप चल नहीं सकते, आपको दौड़ना पड़ता है। और दौड़ते समय आपको ये ध्यान में रखना होता है कि पैर डालते ही वो नीचे जाने से पहले ही आपको उछल के आगे जाना होता है। तो इस पर्टिकुलर गति को प्लव गति कहा जाता है। इसलिए अम्ले कोष्णा प्लव गति, अम्ल रस का आप सेवन करेंगे और ये जो पानी के ऊपर भी जो एक दौड़ने की कला है, वो मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में जैसे ही वहां पे स्पर्श होता है, आपको उछल के आगे जाना है। तो जैसे मंडूक की गति होती है, जैसे भेक की गति होती है, वो ही उस प्रकार की गति उष्णता के साथ प्लव गति जैसी प्रतीत होती है। और अम्ल रस में ये जो प्लव गति है वो आ जाती है। और इसके जो महाभूत संगठन है वो इसको मदद करता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। तो आपको प्रयास क्या करना है, जैसे आप मधुरे बहिर्गा नाड़ी सीखेंगे, जैसे आप अम्ले कोष्णा प्लवगति नाड़ी सीखेंगे, तो उस समय आपको द्रव्यतः, गुणतः, कर्मतः क्या क्या उसमें बदलाव आ सकते हैं, द्रव्य गुण कर्म, फिर सामान्य विशेष समवाय और अभाव। इसका जो सूत्र विस्तार है वो विस्तार की मैं बस आपको एक छोटी सी झलक यहाँ पे देना चाहता हूँ कि किस प्रकार से आपको फिर करना है। तो जैसे मधुर रस का आप सेवन कर रहे हैं, तो मस्तानी खाने के बाद कैसे नाड़ी आती है उसका प्रयास करो, वो देखो। श्रीखंड खाने के बाद कैसे नाड़ी आ जाती है वो देखो। जलेबी खाने के बाद नाड़ी कैसे आती है वो देखो। गुड़ का सेवन करने के बाद नाड़ी कैसे आती है वो देखो। शर्करा का सेवन करने के बाद नाड़ी कैसे आती है वो देखो। मतलब मधुर रस का ही आप सेवन कर रहे हैं, लेकिन तरतम भाव से अलग अलग मधुर रस के द्रव्य देने, उसमें बहिर्गा नाड़ी कॉमन होता है। ओके, बहिर्गा जो है वो कॉमन रहेगा, बस उसका जो फोर्स है वो चेंज हो जाएगा, उसकी जो एम्पलीट्यूड है वो चेंज हो जाएगी, उसकी जो फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज है वो चेंज हो जाएगा। ये आपको काउंट करना है। ये आप काउंट करने की कला धीरे धीरे सीखेंगे। तो जैसे लाघवनकर सर ने बताया था कि वो उनके पेशेंट, आपने जलेबी खाई थी क्या, आपने ये खाया था क्या, तो ये भी आप परफेक्टली जज कर सकते हैं अगर आप उसको द्रव्यता, गुणता और कर्मतः देखने का प्रयास आपका बढ़ाते हैं। तो जैसे मधुर रस है, अम्ल रस है, उसी प्रकार आप लवण रस की नाड़ी देखो तो आपको ये जो विषय है और अधिकतया अच्छी तरीके से स्पष्ट हो जाएगा। तो लवणे सरला द्रुतः, ऐसे ग्रंथ में बताया है। तो लवण रस की जो नाड़ी होती है वो सरल होती है और द्रुत भी होती है। अब सरल और द्रुत नाड़ी, ये दोनों भी थोड़े से ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स है उनको एक साथ कैसे सीखा जाए। तो आपको पता है कि आजकल कोविड के चक्कर में सब लोगों ने जो नस्य थेरेपी है वो ज्यादा और यूज भी की। तो उसमें जल है का जो पात्र होता है, उस पात्र में जब आप पानी लेते हैं तो वो पानी कौन सा देते हैं आप, लवण रस का पानी डालते हैं। आप थोड़ा सा सेंधो बना के लवण डाल के उसका पानी बनाते हैं। और जब नेति करते आप, यहाँ से आप वो जल नेति करते हैं, लवण रस का पानी डालते हैं और यहाँ से झट से वो पानी बाहर आता है और एक लाइन में आ जाता है।
तो ये जो झट से आ गया ये द्रुत है, और जो एक लाइन में आ गया ये सरल है। हमेशा ध्यान में रखो, लवने सरला द्रुता। लवण रस की जो नाड़ी होती है वो सरल होती है और द्रुत होती है, मतलब वो सीधी भी जाएगी और द्रुत जाएगी, मतलब जल्दी से जाएगी। यही लॉजिक सरफेस टेंशन का यूज करके जो वो जो संतृप्त द्रावण है लवण रस का, सेंधो डाल के बनाए हुए खारे पानी का जल नीति के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि अगर आप सिंपल वाटर यूज करेंगे तो वो उधर जाने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि वो जल का गुण है। लेकिन जब जल लवण रस के साथ युक्त होता है, लवण रस लवण जल बन जाता है, तो लवण जल एक ही दिशा में जाता है, वो इधर उधर जाता नहीं है। वो उसका स्वभावतः सरलता और द्रुतता उसमें आ जाती है। तो ये भी यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर चीज है कि जो आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं। तो मैंने जो भी चीज यहाँ पे बताई, मधुर रस की बताई, अम्ल रस की बताई, लवण रस की बताई, ये आपको प्रैक्टिकली देखने को मिलेगा। लवणे सरला द्रुता, आप उसका जल बनाएंगे तो भी आपको ये देखने को मिलेगा। आप उसका नेति पात्र के वक्त गिरते समय पानी देखेंगे तो भी आपको इसी श्लोक के आधार पर देखने को मिलेगा। यही आगे जाके हमने नाड़ी तरंगिणी के इंस्ट्रूमेंट के ऊपर इसका वैलिडेशन किया, तो वहीं पर भी यही देखने को मिला। आयुर्वेद में हमने वो को देखने को मिला। नाड़ी अम्ल कोष्णा प्लवगति लवणे सरला, जैसे ग्रंथ में श्लोक है उसी प्रकार से नाड़ी की प्रचिति हो जाती है। तो इसलिए मैं बार बार हमेशा एक चीज दोहरा रहा हूं कि पहले हम नाड़ी की थियरी सीखते हैं, नाड़ी का प्रैक्टिकल हमें ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो लवण रस जैसे कि जल और से पित्त की भी वृद्धि होती है और कफ की भी वृद्धि होती है, लेकिन कफ वृद्धि है जो हम सबको पता है, मधुर से भी कफ की वृद्धि होती है, अम्ल से भी कफ की वृद्धि है और लवण से भी कफ की वृद्धि है। लेकिन मधुर रस से होने वाली कफ की वृद्धि जो है वो गहनतः होती है। अम्ल रस से होने वाली कफ की जो वृद्धि है वो द्रव है, और लवण रस से द्रवतः होती है। घन द्रवतः कफ की वृद्धि करते हैं, इसलिए उसकी जो कफ बढ़ने की भी जो एक मात्रा है वो नाड़ी में हमें पता चलती है कि ये जो कफ बढ़ा है वो मधुर रस से बढ़ा है, अम्ल रस से बढ़ा है या लवण रस से बढ़ा है। क्योंकि अगर वो मधुर रस से बढ़ा होगा तो नाड़ी बहिर्गामिनी होगी, अगर वो अम्ल रस से बढ़ा होगा तो नाड़ी कोष्ण और प्लवगति की आपको देखने को मिली। अगर वही मधुर मतलब शरीर का जो रस है वो कफ है, वो अगर लवण रस से बढ़ा हुआ है तो वो स्राव रूप से बढ़ा है, सरल और द्रुत नाड़ी आपको देखने को मिलेगी। तो देखो, शरीर में जो कफ वृद्धि हो गई है वो शरीर में हुई हुई कफ की वृद्धि भी मधुर रस से, अम्ल रस से या लवण रस से कैसे हो गई है, ये भी आप नाड़ी परीक्षण से जान सकते हैं। या आपको वमन करते समय बहुत फायदा होता है। तो जब आप वमन देते हैं किसी रोगी को, तब आप सेंधा नमक का जल, लवण मिश्रित जल उसको पिलाते हैं। एक आप वहां पे मधुर रस का दूध पिलाते हैं, और तीसरा होता है कोई भी यष्टि मधु फांट वगैरह आप उसको देते हैं, या कुछ लोग इक्षु रस का सुरस वहां पे। वमन करते समय भी मधुर रस के द्रव्यों का वमन, अम्ल रस के द्रव्यों का वमन या फिर लवण रस के द्रव्यों का वमन आप देते हैं। तो घनतः, द्रवतः या सारतः, स्रावतः किस प्रकार का कफ आपको निष्कासित करना है वहां पे, वो आप सोचते हैं, उसके प्रकार से आप द्रव्य बदल करते हैं, और वो द्रव्य उसको पिला के आप नाड़ी देखते हैं तो आपको पता चलता है कि वहां पे कफ की वृद्धि, घनता हो गई है, द्रवता हो गई है। यहाँ पे देखने को मिलता है कि ग्रंथ में मधुरे बहिर्गा नाड़ी अम्ले कोष्णा प्लवगति लवणे तो इसी प्रकार अगर हम आगे जाते हैं तो आपको आगे का ऐसा श्लोक देखने का, चपला कटुका देश या फिर कटुके भृग सन्निभा ऐसे कहा जाता है। जैसे आप सब लोगों को पता है कि कटु रस जो है वो वायु और अग्नि महाभूत से निर्मित है, और ये जो रस है वात और पित्त, ये दोनों की वृद्धि करने के लिए सक्षम है। तो ये
भृग सन्निभा, जो भृग है ना, भुंगा जो होता है, वो आपको पता है कि वो चलता तो बहुत तीक्ष्ण है लेकिन रुकता तो एक ही जगह पे। तो एक ही जगह पे रुक के जोर जोर से पंख फड़फड़ाना, ये जो उसकी कला है ना, ये कटुरस में हमें देखने को मिलती है। मतलब नाड़ी तो तीव्र होती है, नाड़ी तो बहुत जोर से चलती है, लेकिन होती तो एक ही जगह पे। वो भेक इव, ऐसे जो प्लव गति जैसी, भेक गति जैसी आगे आगे नहीं जाती, वो एक ही जगह पे होती है, लेकिन वो फड़फड़ाती है एक ही जगह पे। तो इसको भृग सन्निभा कहा है। तो कटुरस की जब जब भी आप सेवन ज्यादा करेंगे तो आपके शरीर में वायु और अग्नि की वृद्धि हो जाएगी, और वायु और अग्नि की वृद्धि होने के कारण वहां पे आपको भृग सन्निभ जो नाड़ी है वो देखने को मिलेगी। इसलिए गुण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो मृदु गुण और उष्ण और लघु, ये तीनों भी जो स्पर्श है वो वहां पे आपको मिलेंगे। मृदु स्पर्श भी नाड़ी का मिलेगा, उष्ण स्पर्श भी मिलेगा, लघु स्पर्श में भी मिलेगा। और जैसे मैंने कहा कि इसमें कोई हंस गति इव, भेक गति इव, इस प्रकार से नहीं मिलेगा आपको। नाड़ी एक ही जगह पे है लेकिन फड़फड़ा रही है, इस प्रकार का आपको भृग संज्ञा आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो अलग अलग द्रव्यों का सेवन करके भी आप कटुरस की नाड़ी जो है वो जान सकते हैं। उसी प्रकार तिक्ते स्थूल गतिर भवेत, या फिर तिक्ते स्यात् भूतला गति ही, ऐसे यहाँ पे कहा है ग्रंथ में, जो कणादकृत नाड़ी दर्शन में जो बताया गया है। यहाँ पे भूतला ये जो शब्द है वो सीखने जैसा है। बहुत बार चलता है भूगर्भ में चलने की गति, जिसको अवगत है उस गति की नाड़ी हमें तिक्त रस में देखने को मिलते हैं। देखो ये सब हमारे आचार्यों की कितनी खासियत है कि हर एक चीज नाड़ी परीक्षा से होता है, वो आगे वाले को समझाने के लिए पशु का, पक्षी का वर्णन किया है। कहेंगे भूतल, कहेंगे हंस, कहेंगे सर्प, कहेंगे मंडूक, कहेंगे भेक, कहेंगे। तो हम उनको देख के एक इमेजिनरी ग्राफ बना सकते हैं, और उस ग्राफ से हम उस प्रकार का ग्राफ हमें नाड़ी में दिखता है क्या वो देख सकते हैं। तो कोई भी अब ग्राफिटिकल इंस्ट्रूमेंट अगर आज हम यूज करेंगे तो होता तो वही है ना, जो भी नाड़ी जा रही है आप उसका ग्राफ निकाल रहे हैं। फिर मतलब आपने क्या किया, जो अनुमान प्रमाण की चीज थी वो स्पर्शगम्य की, जो स्पर्शगम्य थी वो फिर से आपने अनुमान बना के ग्राफिटिकल फॉर्म में दे दी। फिर जो ग्राफिटिकल फॉर्म में था उसको आपने अनुमान से समझ लिया, और फिर स्पर्श से आपने उसको कंफर्म किया। तो यही एक सर्कल है जो आपको कंप्लीट करना है, जो शास्त्र में भी बताया है। भूतला इसका मतलब है जिसकी भूगर्भ में चलने की गति होती है उसको भूतला गति कहते हैं। ये किसको हासिल है, आपने गांडूल, मराठी में हम उसको गांडूल बोलते हैं, हिंदी या इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे शायद पता नहीं है, आप देखो। जो दोनों तरफ उसका मतलब मुंह होता है, या जो गांडुल होता है खेती में भी हम यूज करते हैं, कंपोस्ट खत बनाने के लिए भी यूज होता है। वो जैसे जैसे अंदर जाता है माटी में, तो वो ऐसे 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 करके जाता है, मतलब वो उसी मुंह से ओपनिंग करेगा, फिर थोड़ा अंदर जाएगा, फिर थोड़ी माटी ऊपर डालेगा, फिर थोड़ा अंदर जाएगा। तो ऐसे जो जाने की गति है, अंदर अंदर जाने की गति है, वो तिक्त रस में आ जाती है। इसलिए तिक्ते साथ भूतला गति ही ऐसा है, गांडुल की जो गति है वो हमें इसमें देखने को मिलती है। वायु और आकाश महाभूत के कारण ये जो गति है वो मिलती है। वो उस मिट्टी को भी भुसभूषित करत असतो तो गांडुल, उसको वो बहुत वायु और आकाश महाभूत उसके डाल के अपना खुद का मार्ग वो बनाता है। और ये तिक्त रस की खासियत है, तिक्त रस जहां पर भी जाता है वो खुद का मार्ग बना के आगे आगे निकल जाता है। और ये चीज हमें नाड़ी में जब देखने को मिलती है, जब नाड़ी का वहन उस प्रकार से चल रहा है, उसके प्रस्पंद उस प्रकार से चल रहे हैं, तो आप वहां पे तिक्ते भूतला गति ही ये समझ के ले सकते हैं। और जो भी वो रोगी है उसने तिक्त रस का भाव पदार्थ का सेवन किया है, इसका अनुमान आप इस प्रकार की नाड़ी से लगा सकते हैं। और लास्ट षड रस में जो लास्ट रस है कषाय रस, कषाय कठिना म्लाना। तो कषाय कठिना म्लाना जब ऐसे कणाद जी कहते हैं, तो कषाय रस का जो मूल है वो वायु और पृथ्वी महाभूत से आता है। हम सबको भी ये पता है कि इसके भी जो पंच महाभूत है वो वायु और पृथ्वी महाभूत से बनते हैं। तो जाहिर है कि कषाय रस की नाड़ी वातवर्धक हो जाएगी, है ना। वात होते हुए भी
उसके स्पर्श में पृथ्वी के कारण कठिनता आ जाती है। ओके, जैसे अस्थि धातु है, अस्थि धातु में भी यही होता है, वायु भी है लेकिन पृथ्वी महाभूत भी है, इसलिए वो सुशिर है पर कठिन है। ओके, वो सुशिर है पर कठिन है। यही प्रकाश में सेवन हो जाता है कि वो कठिन होता है म्लान है, वो वायु के कारण आई है, कठिनता आई है वो पृथ्वी के कारण आई है। तो जैसे भी कोई एम्प्टी बॉवेल होता है, जैसे भी कोई बलून होता है, देखो ये छोटे बलून होते हैं, बहुत बड़े बलून होते हैं, उसमें आप अगर एयर को ब्लो करते हैं तो वो बलून एकदम कठिन हो जाता है, लेकिन आप उसको ट्विस्ट करेंगे तो वो ट्विस्ट भी हो जाएगा, तो म्लान करेंगे तो म्लान भी हो जाएगा। तो इसके कहते हैं कठिना म्लाना। तो ये जो चीज है वो आपको कैसे पता चलेगी? जैसे वो सर्कस में भी नहीं क्या, वो बलून फुलाते हैं, छोटा पाइप जैसा बलून होता है, आप उसमें एयर डालेंगे तो एकदम बड़ा हो जाता है, अब फिर आप ट्विस्ट करेंगे तो ट्विस्ट भी हो जाता है, आप उसको खींचेंगे तो एकदम वो म्लान भी हो जाएगा, एकदम खींचा भी जाएगा। तो इसको नाड़ी परीक्षण करते समय धृत्वा धृत्वा विमोचेत, धृत्वा धृत्वा विमोचेत ऐसा कहा गया है। तो जब भी आप नाड़ी परीक्षण करेंगे, आप देखो उसको 3-3 बार नाड़ी परीक्षण करने को हमें बताया है, कंफर्मेटरी टेस्ट करने को बोला है, और धृत्वा धृत्वा विमोचेत इसी प्रकार से वो सब नाड़ी परीक्षण जो है वो करने की सलाह हमें ग्रंथकर्ताएं देते हैं। तो इस प्रकार दूर, अम्ल, लघु और कषाय, ये षड्रस का नाड़ी परीक्षण उदाहरण के तौर पर मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा खाने की कोशिश की कि जो नए प्रैक्टिशनर्स है, जो अभी अभी इसमें एंट्री करना चाहते हैं, उनको पहले ये चीज समझ में आनी चाहिए कि हम नाड़ी की थियरी सीखनी है, इससे नाड़ी का प्रैक्टिस अपने आप आना शुरू होगा। रसद्रव्यश्च नाड़ी शीता विशेषता। अब मधुर अम्ल की नाड़ी आप यहाँ पे देख रहे हैं, अम्लश्च मधुर अम्लश्च नाड़ी शीता विशेषता। मधुर और अम्ल रस एक साथ अगर आप सेवन करते हैं तो नाड़ी विशेषतः शीत रस की बन जाती है। ओके, तो जैसे जैसे हर एक श्लोक आप पढ़ते चले जाएंगे तो यहाँ पे विशिष्ट आहार और विशिष्ट गति किस प्रकार से आपको मिलती है, इसका एक संकलन मैंने आपको यहाँ पे करवा के दिया है। ओके, तो दुग्धाचिता बलियसी या फिर मांसा स्थिर वहा नाड़ी, निरंतरम खरम का सेवन करेंगे तो नाड़ी कैसे बनेगी, रुक्ष और शुष्क अन्न का सेवन करेंगे तो कैसे बनेगी। ओके, तैल गुड़ मांस का सेवन करेंगे तो कैसे बनेंगे। ओके, क्षीर का सेवन करेंगे तो नाड़ी कैसे बनेगी। तो ये सब जो है, ये सब हमारे लिए एक बेंचमार्क्स है। ओके, ग्रंथ ने दिए हुए दीप स्तंभ है, इन दीप स्तंभों को देख के हमने अपना नाड़ी परीक्षण सुधारना चाहिए, बार बार देखना चाहिए। धृत्वा धृत्वा विमोचेत, इस कैटेगरी से हमने उसको पढ़ना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली नाड़ी की थियरी आना शुरू हो जाता है, तो नाड़ी का प्रैक्टिकल भी हमें आसानी से सीखने को मिलता है। यही आहारीय द्रव्यों के बारे में ग्रंथ में हमें निद्रालो कफवत ऐसे नाड़ी विहार में देखने को मिलते हैं, या फिर रुद्ध वेगस्य पित्तवत, कोई भी अगर वेग रुद्ध हो गया तो उसकी नाड़ी जो है वो पित्त जैसे हमें देखने को मिलती है। या फिर सिरम सोरुत चेतलो अपीच वातन वातवत, मतलब वात की नाड़ी कैसे मिलेगी, पित्त की नाड़ी कैसे मिलेगी, कफ की नाड़ी कैसे मिलेगी, विहार के कारण वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो आहारतः क्या आहार सेवन करने के कारण है, विहारतः क्या क्या सेवन करने के कारण नाड़ी के ऊपर परिणमन होता है, औषधितः क्या क्या आप सेवन करने के बाद नाड़ी के ऊपर क्या परिणमन होता है। जैसे लक्ष्मी विलास वटिका आप सेवन करेंगे तो नाड़ी के ऊपर क्या परिणाम हो गया, अग्नितुंडी वटिका सेवन करेंगे तो नाड़ी के ऊपर क्या परिणाम हो गया, त्रिभुवन कीर्ति ये टैबलेट आप किसी को खाने को देते तो क्या हो गया, शुद्ध शेखर दिया तो क्या हो गया, कामदुदा दिया तो क्या हो गया। तो आप जैसे नाड़ी देखना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा। इसलिए लो बीपी हो गया तो आप उस बीपी को बढ़ाने के लिए अग्नितुंडी वटी देते हैं या फिर वटी देते हैं। तो इन दोनों को भी कफावृत्त या पित्तावृत्त, वहां पे जो रक्त धातु है जो वात के साथ उसका वहन कर रहा है, उसको अगर हम देखेंगे तो ऑटोमेटिकली एक आवृत्तवात की संकल्पना भी हमें स्पष्ट हो जाती है। और कफ पित्त और वात के सेगमेंट में ही इस नाड़ी शास्त्र को देखना है, ये ग्रंथ का जो विधान है वो
पुनः एक बार स्पष्ट हो जाता है कि जो भी भाव पदार्थ का वहन नाड़ी के जरिए उस रक्त धातु के जरिए हो रहा है, उसको आपको केवल धातु और मल के आधार पर ही देखना है। तो वात पित्त कफ के आधार पर आप उसको देख सकते हैं, या फिर आप उसको रस रक्त मांस में दस्ती मज्जा शुक्र के आधार पर देख सकते हैं, या फिर आप उसको महाभूत के आधार पर पृथ्वी आप तेज वायु और आकाश इस प्रकार से देख सकते हैं। लास्ट 2 मिनट लेता हूँ, क्योंकि मेरा टाइम अभी खत्म होते चला जा रहा है, क्योंकि थोड़ा देर से शुरू किया था। तो बस 2 मिनट में मैं मेरा कंक्लूड करता हूँ अभी। तो जोर की नाड़ी, प्रमेह की नाड़ी, गुल्म की नाड़ी, यहाँ पे आपको व्याधि की नाड़ी जानने के लिए दी है। गति उष्णा वेगवती नाड़ी जोर कोपो प्रजायते, या प्रमेह ग्रंथि रूप आशा। ये प्रमेह की नाड़ी तो आपको ग्रंथि रूप देखने को मिलेगी। इतने डायबिटिक के पेशेंट आपके पास आते हैं, आप उनको देखना शुरू करो। जैसे हम बिंदु पाक करते हैं च्यवनप्राश बनाते समय, पानी में हम वो शर्करा डाल के जैसा बिंदु बन जाता है, उस प्रकार की ग्रंथि स्वरूप नाड़ी प्रमेह में बन जाती है। मॉडर्न में भी आप देखते हैं कि अगर है तो कहीं गति के ऊपर भी उसका प्रभाव आ जाता है, और ग्रंथि रूप गति बड़ा सूक्ष्म इस वहां पे हमें देखने को मिलती है। तो इस प्रकार हर एक व्याधि का विश्लेषण ग्रंथ में दिया है, वो भी किया करो। जैसे कल हमने बताया कि नाड़ी तरंगिणी डिवाइस के ऊपर भी कुछ रिसर्च हमने किए, वो भी प्रेजेंट किए, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये एक रिसर्च स्टडी है, प्रेजेंट किया। उसमें डोमेन एक्सपर्ट मैं था और टेक्निकल एक्सपर्ट डॉक्टर अनिरुद्ध जोशी। तो हमने स्मृति आयुर्वेद अपने क्लिनिक के जरिए अलग अलग डेटा कलेक्शन करके बहुत से स्टूडेंट वॉलंटियर लेके हमने किसको मस्तानी खिलाई, किसको चना खिलाया, किसको जिंजर का टी पिलाया और मधुर रस का वृद्धि किया, किसी के अम्ल रस की वृद्धि की, किसी के लवण रस की वृद्धि की। और जो नाड़ी के ग्राफ थे उनके ग्राफिटिकल रिप्रेजेंटेशन, ड्रिंकिंग द स्वीट मिल्क शेक, दैट इज द लिख रहे हैं कि मधुरे बहिर का नाड़ी किस प्रकार से आपको बिफोर और आफ्टर में भी देखने को मिलेगी। या इसी प्रकार आप देखते हैं कि कटुके भृग सन्निभा, तो इफेक्ट ऑफ ड्रिंकिंग जिंजर टी, किस प्रकार से वो नाड़ी भृग सन्निभ हो जाती है, एक ही जगह पे बार बार ऑसिलेट हो जाती है, वो भी आपको यहाँ पर सीखने को और देखने को मिलेगा। इसी प्रकार अगर कषाय रस का सेवन हम ज्यादा करते हैं तो कषाय रस की नाड़ी किस प्रकार से कठिन और म्लान बन जाती है। तो इसके जो कोरिलेशन है, ग्रंथ के श्लोकों का जो वैलिडेशन है, वो वैलिडेशन भी आजकल हम इन सब के कर सकते हैं। बहुत सारे रोगी होते हैं, अर्श के, गर्विश के, उदर के, अत्यावर्त के, जो केस स्टडीज मुझे आपको बताना था अलग अलग प्रकार के, लेकिन टाइम के बंधन के कारण शायद मैं आज सभी केसेस कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन बहुत बार ये अनुभव आ जाता है, रोगी सामने आके बैठता है, आप नाड़ी परीक्षण करते हैं, आप पूछते हैं, आपको अगर गर्विश की नाड़ी लगती है तो आप उसको पूछते हैं कौन से। एक मेरा पेशेंट था, वो सीमेंट खाता था जिसके कारण उसको सोरेसिस हुआ था। परीक्षण करते समय केवल गर्विश की नाड़ी लगी, तो मैं ढूंढना चाहता था कि वो क्या गर्विश सेवन करता होगा। तो उसको अलग अलग प्रश्न पूछे तो उससे सवाल आ गया कि उसको सीमेंट खाने की आदत है। तो वैसे ही सीमेंट खाने वाले, मृतिका का भक्षण करने वाले, ओके, तो ये रोगी भी ऑटोमेटिकली आपको प्रश्न परीक्षा से मिलते हैं। हमेशा याद में रखो, दर्शन करके नाड़ी परीक्षण ग्रंथ के हिसाब से कोरिलेट करेंगे और प्रश्न परीक्षा पूछ के उसको आप कंफर्मेटरी टेस्ट में डालेंगे। आपको मधुर रस सेवन किया है ये पता चलेगा, लेकिन द्रव्य जल्दी पता नहीं चलेगा, वो आपको प्रश्न पूछ के ही कंफर्म करना है। आपकी सिद्धि जैसे जैसे बढ़ जाएगी तो आप आगे जाके एग्जैक्ट द्रव्य भी शायद बता पाएंगे। इसकी शुरुआत 100 नाड़ी से करो, 100 नाड़ी परीक्षा करो। नाथ नाड़ी परंपरा का भी परीक्षण आज सदगुरु श्री माधवनाथ जी महाराज जी के कारण और आदरणीय जमदग्नि सर जी के कारण, ये भी एक परंपरा में होने के कारण ये भी होता है। इसके ऊपर भाष्य करने के लिए मैं अधिकारी व्यक्ति नहीं हूँ, इसलिए इसका ये भी नाड़ी परीक्षण की एक विधि होती है, बस ये आपको पता हो इसलिए मैंने बताया। आज का विषय अपना शास्त्रोक्त नाड़ी परीक्षण था, जो मैंने जितना हो सके आपको सिंप्लीफाई करके बताने की कोशिश की है। जो भी अच्छा था वो मेरे गुरुवर्यों ने मुझे सिखाया हुआ था, जो भी कुछ गलती हुई होगी वो मेरी
खुद की है, मेरे कम अध्ययन के कारण वो हुई होगी। मेरा फोन नंबर और वेबसाइट का एड्रेस मैंने आपको यहाँ पे दिया है, किसी को कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू शिल्पा मैडम, थैंक यू नवीन जोशी सर फॉर गिविंग मी चांस टू रिप्रेजेंट माय थॉट्स हियर। एंड आदरणीय गुरुवर्य वैद्य छाजेड़ सर, नमस्ते, बहुत बहुत प्रणाम। आप हमेशा हमें अलग अलग चीजों के लिए मोटिवेट करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Thank you very much. Nice session. Any questions? आप तो सर नाड़ी के गाढ़े अभ्यासक निकले, मुझे नहीं पता था इतना। जी बहुत शानदार नाड़ी परीक्षा करते हैं और उनका बड़ा नाम भी है। यस यस यस, बिल्कुल। प्रशिक्षण भी बहुत उनके बच्चे भी बड़े सुहाने तरीके से नाड़ी परीक्षा करते हैं। रोग नाड़ी परीक्षा ये शायद उनका एक फोर्टे मैं कहूँगा, ऐसा है। और बहुत कम वैद्य है जो रोग नाड़ी परीक्षा करते हैं। उसमें हरीश जी का नाम काफी अव्वल दर्जे पर आता है। अपने गुरुजी के साथ सीखी हुई नाड़ी को एक अच्छे व्यक्त तरीके तक ले जाने की क्षमता रखने वाले वैद्य हैं। जमदग्नि सर जो सिखाते हैं उस नाड़ी परंपरा को शास्त्रीय नाड़ी परंपरा के साथ आधुनिकता की जोड़ देकर एक सटीक रूप में समझने के लिए जो प्रयास। सर सर कुछ आपका क्वेश्चंस आवाज आए हैं नहीं सर, सुनाई दे रहा है, डॉक्टर म्यूट हो हमारे गया। डॉक्टर साईराम जी ने पूछा है कुछ रसों के बारे में। आई थिंक यू कैन सी इन द चैट बॉक्स आल्सो कि ये किस अवस्था के बारे में आप बता रहे थे जो ना। हाँ, छाजेड़ सर बात कर रहे थे, उनका आवाज बीच में ही कट हो गया। शायद माइक म्यूट हो गया। अच्छा, सर आपका माइक म्यूट हो गया है। ओके ओके हाँ। ओके। सो क्वेश्चन से यहाँ पे, आफ्टर विच टाइम ऑफ रसो फूड वी गेट नाड़ी चेंजेस यू आर एक्सप्लेनिंग अबाउट, इज इट यूजुअल आफ्टर 2.5 hours, also in which level of nadi or artery we see things findings, it is most upper part। ओके, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कोई भी द्रव्य जब हम सेवन करते हैं, जैसे जैसे उसका स्पर्श मुख ओष्ठ को होता है, वहीं से परिणमन शुरू हो जाता है। ओके, कोई चीजें जो होती है, जैसे अभी इमली है, अम्ल रस की चीज है, मैं आपके मुख के सामने रखूंगा तो भी आपको स्राव आना शुरू हो जाएगा, हमें इमली खाने की इच्छा होती है, वो भाव पदार्थ हमारे शरीर में वहन होना शुरू होते हैं और उसका परिणमन भी नाड़ी के ऊपर आना शुरू हो जाता है। तो ये जो है, जैसे आपने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स भी सुने होंगे। एक कुत्ते के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था कि 12 बजे उसको खाना खिलाना है, तो पहले घंटी बजाने का, फिर खाने की प्लेट रखने का, फिर घंटी बजाने का, फिर खाने की प्लेट रखने का। तो उसके स्टमक में आए हुए गैस्ट्रिक जूसेस को एनालिसिस करना शुरू किया। बाद में उन्होंने ऐसा किया कि घंटी तो बजाते थे लेकिन प्लेट नहीं लाते थे खाने की, फिर भी उसी प्रकार के गैस्ट्रिक जूसेस वहां पे सिक्रेट होते। तो हमारा जो शरीर है, वो शरीर हमारा बहुत ही योगवाही होता है। इस योगवाही शरीर के कारण आप कोई जो फूड हैबिट्स है, वो आपको अलग अलग टाइम पे क्रॉस चेक करनी है। प्रथम अवस्था पाक में उसके ऊपर क्या असर हुआ, द्वितीय अवस्था पाक में उसका क्या असर हुआ, तृतीय अवस्था पाक में उसका क्या असर हुआ। ये तीनों के अलग अलग परीक्षण हमें देखने को मिलते हैं। और उसी प्रकार केवल मन में भी आप लाएंगे कि आपको रसगुल्ले खाने हैं, आपको इमली खानी है, तो इमली का रस भी आप जैसे स्मरण करते हैं, तो रोगी में उसके भी भाव पदार्थ का वहन होना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत ही सुंदर चीज है, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। हर एक लेवल पे आपको ये देखना है। सर एनी स्पेसिफिक गाइडलाइंस फॉर दिस टू हाउ टू ऑब्जर्व और लाइक मतलब गुणों के हिसाब से ही आप इसको ये करते हैं, अनुमान करते हैं, लाइक गुरुता मंदता कैसे, हाउ हाँ यू हाँ, फील, मैंने फीलिंग कैसी होगी आपके। ये यस, मैंने बताया ना कि ये हाँ। जो पूरे गाइडलाइंस है, उसका एक अलग सा व्याख्यान हो जाएगा। हम्म। हाँ, अच्छा। उसका खुद का एक अलग सा व्याख्यान हो जाएगा, क्योंकि ये शास्त्र ही बड़ा है।
हर एक चीज को दोष धातु और मल के हिसाब से और महाभूत के हिसाब से हमें देखना है। शास्त्र में जो दिया है वो छोड़ के बिल्कुल जाना नहीं है, तो हर एक चीज धीरे धीरे अपने आप समझ में आना शुरू हो जाता है। Some more questions are there, sir. हाँ, रस की नाड़ी, इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर, मेकिस, 2 दिन में सब लेक्चर्स मैंने सुने हैं, मैं लेक्चर्स मैंने भी अटेंड किए हैं। आपको लावगनकर सर से लेके जो मैडम थे कल के, उन्होंने भी बताया एक उंगली में किस प्रकार से 5 भेद करते हैं, वहां से लेके धातुओं के भेद तक आपको हर एक चीज बताई गई है। इसलिए मैं क्वेश्चन का रिपीटेशंस नहीं चाहता हूँ, जो अलग है वो इसलिए मैंने बताया। आप हाँ हाँ, विच पार्ट ऑफ आर्टरी वी सी, अगेन जैसे मैंने कहा कि अंगुष्ठ मूले या नाड़ी सातु जीव साक्षिणी, ऐसा ग्रंथ में कहा है। तो अंगुष्ठ के मूल जो नाड़ी है वो जीव की साक्षिणी है, और वही हमने देखनी चाहिए। ओके, सो बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट द रेडियल आर्टरी, वी शुड एनालाइज दैट पार्ट ओनली। ओके, और वहां पर भी अंगुष्ठ के मूल के नीचे 1 अंगुली प्रमाण छोड़ के हमें नाड़ी परीक्षण शुरू करना है। तो जब भाव पदार्थ का वहन होता है, तो वो भाव पदार्थ का वहन ऐसे नहीं है कि हाथ की तरफ अलग भाव पदार्थ गए, पैरों की तरफ अलग भाव पदार्थ गए, नासिका की तरफ अलग भाव पदार्थ गए, ऐसा नहीं है। केवल एक 5-10% आपको स्थान विशेषत्व की नाड़ी देखने को मिलेगी, लेकिन 95% भाव पदार्थ सेम ही वहन होते हैं। और इसलिए ग्रंथ में पाद की नाड़ी परीक्षण भी बताया है, नासामूल की नाड़ी परीक्षण भी बताया है, मन्या के जगह पर भी नाड़ी परीक्षण बताया है, और हर एक जगह पे आप वही भाव पदार्थों का सेम फीलिंग ले सकते हैं। आई रिपीट अगेन, 95% नाड़ी परीक्षण भाव पदार्थ हर एक नाड़ी में सेम ही होते हैं। स्थान वैगुण्य या स्थान दृष्टि के एक 4-5% जो चेंज होते हैं, वही आपको अलग अलग स्थान में देखने को मिलेंगे। अदरवाइज जो भाव पदार्थ नाभि के यहाँ से निकले हैं, वो आर्टरी के एंडिंग तक आपको वही देखने को मिलेंगे। उनका फिर से शायद वही क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ आर्टरी इन विच लेवल और प्रेशर। लेवल, प्रेशर, ये जो संकल्पनाएं हैं वो आदरणीय छाजेड़ सर आपको 7 लेवल तक नाड़ी परीक्षण बहुत अच्छी तरीके से सिखाएंगे। आप वो लेवल सीखो। सर का एक लेक्चर मैंने सुना था, जब हम आदरणीय अपने मनीष जोशी सर के प्लेटफॉर्म पे उन्होंने बहुत बड़ी सीरीज ली थी लेक्चर्स की। वो नाड़ी गुरु में मेरे एक गुरु भी है, चाहे हम डायरेक्ट कभी मिले नहीं है, लेकिन ऑनलाइन में बहुत कुछ सीखा हूँ सर से। तो सर हमेशा वो कहते थे, मुझे अभी भी याद है, कि आपको बटरफ्लाई जैसा बैठना है उस नाड़ी के ऊपर। बटरफ्लाई जितना इतना सिंपली जाके बैठता है कि पता भी नहीं चलता। इतना आपको नाड़ी के तीनों उंगलियों का आपका स्पर्श का सेंसेशन इतना डेवलप करना है, और बटरफ्लाई जैसे जाके वहां पे बैठना है। तो आप इमेजिन करो कि क्या प्रेशर लेवल आपको शुरू करना है। बटरफ्लाई लेवल का प्रेशर से शुरू करके आपको नाड़ी बंद होने तक का प्रेशर अप्लाई करना है। इसलिए ग्रंथ में भी उसको ध्रुत्वा ध्रुत्वा विमोचेत ऐसा कहा है। तो ये चीज तो मैं उस लेक्चर में सर के साथ बहुत अच्छी तरीके से उनके पास से सीखा। मैं आपको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा थियरी सीखो, ज्यादा से ज्यादा वैद्यों के पास से नाड़ी सीखो, और फिर नाड़ी परीक्षण शुरू करो। हर कोई चीज का आंसर आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ये कोई बहुत बड़ा जादुई कला नहीं है, एकदम साइंटिफिक है, सिस्टमेटिक है। सिस्टमेटिकली सीखो, आपको सब पता चलेगा। यस सर, डेफिनेटली, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सो आगे बढ़ते हुए गुरुवर्य नाड़ी गुरु आचार्य संजय कुमार सर का अगला सेशन है रिसेंट एडवांसेस इन द नाड़ी परीक्षा और टेक्निकल एडवांसेस। आई थिंक it will be the boon for all Nadi Vaidyas. What are the recent advances? And I would like to request Dr. Joshi sir for introducing Nadi Guru. Actually introduction की जरूरत नहीं है सर, वो हमारे परिवार के सदस्य है और co-organizing secretary भी है और हमारे गुरु भी है। जोशी सर। जी सर, जी मैम, जी मैम। आचार्य वैद्य नाड़ी गुरु संजय छाजेड़ सर का बहुत बहुत स्वागत है। सर किसी परिचय के मोहताज नहीं है सर, अपने आप में चलती फिरती नाड़ी की पूरी पाठशाला है। और
जो आपने देखा होगा कि आयुष दर्पण के शुरुआती में जब लॉकडाउन हुआ था तो सर ने पूरी नाड़ी की एक सीरीज पढ़ा चलाई थी। उसके बाद तो फिर बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हुए, उन सभी में संजय छाजेड़ सर का बहुत बड़ा योगदान है। मैं कहता हूँ कि नाड़ी के लिए जो आज नाड़ी का मोटिवेशन, जो आज नाड़ी परीक्षा और ये सब चीजें जो लोग हम लोग कर रहे हैं, उनके पीछे जो एक प्रकार से कोर मोटिवेशन है वो नाड़ी गुरु आचार्य संजय छाजेड़ सर का है। तो सर का बहुत बहुत स्वागत है सर। आप आइए सर, और आपका जो रिसेंट एडवांसेस इन नाड़ी परीक्षा ये लेक्चर सभी लोग सुने और बिल्कुल ध्यान से सुने। धन्यवाद मैम। रागादिरोगा सततानुसक्तान् अशेषकाय प्रसृतान् शेषान् औत्सुक्य मोहारतिजान गंगा यो पूर्ववैद्याय नमोस्तु तस्मै यो पूर्ववैद्याय नमोस्तु तस्मै यो पूर्ववैद्याय नमोस्तु तस्मै। भगवान धन्वंतरी से लेके इंद्राश्विनो परंपरा से आज तक के सभी वैद्यों को प्रणाम करते हुए रिसेंट एडवांसेस इन नाड़ी परीक्षा इस विषय पर भाष्य करने से पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर एक बात कहना चाहता हूँ। मैं तो प्राइमरी टीचर हूँ नाड़ी परीक्षा का। आप सभी महानुभाव हैं जो नाड़ी परीक्षा के अलग अलग स्तरों को, अलग अलग विषयों को, अलग अलग प्रांतों को सबके सम्मुख ले आ रहे हैं। और यही आशा मैं करता हूँ, ये प्रयास अगर अनवरत रहे तो ये जो छोटा सा प्रयास हमारा था कि नाड़ी परीक्षा हर वैद्य को आवे, कम से कम जो सामान्य नाड़ी परीक्षा है, जो हम कहते हैं कि नाड़ी का क ख ग, यह तो सभी वैद्यों को, सभी आयुर्वेद के विद्यार्थियों को आना ही चाहिए। इसी प्रयास में हम केएल यूनिवर्सिटी में एक सर्टिफिकेट कोर्स चलाते हैं। महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस ने हमारा एक पीजी फेलोशिप इन पल्स डायग्नोसिस, ये 1 साल का पीजी फेलोशिप प्रोग्राम अप्रूव कर रखा है, वो शुरू कर रहे हैं। हम 250 घंटे का एक राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम चलाते हैं। भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी तकरीबन 17-18 देशों में नाड़ी परीक्षा सिखाने का प्रयास करते हैं, जो बिल्कुल सामान्य नाड़ी परीक्षा है। सामान्य का मतलब मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि क ख ग नाड़ी परीक्षा मूल प्रक्रिया यही है। कल बड़ा अच्छा प्रश्न दुबे सर के माध्यम से पूछा गया था। नाड़ी परीक्षा करते हो यानी आप नाड़ी की परीक्षा करते हो कि रोगी की परीक्षा करते हो, या रोग की परीक्षा, या अभिन्न है ही नहीं। नाड़ी एक जीवित व्यक्ति का लक्षण है। सा या धम्मते स नाड़ी, वेदों से नाड़ी का वर्णन मिलता है। और मैं अगर सही मायने में कहूं तो चरक संहिता एक ऐसी किताब है जो नाड़ी परीक्षा के सभी मूल सिद्धांतों को स्पर्श विज्ञान के रूप में बताती है और स्ट्रेस के साथ बताती है। इतना सही है, सटीक है कि अगर उतने भी सिद्धांत हम सही तरीके से देखें तो नाड़ी परीक्षा करना बड़ी आसान प्रक्रिया है। सभी ये 3 दिन में जितने भी गुरुवर, नाड़ी वैद्य, नाड़ी परीक्षक इस मंच पर आए, मैं सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। नवीन जोशी जी और इरमे मैडम का तो है ही, क्योंकि उनकी प्रेरणा के बिना, उनके सहकार्य के बिना इतना बड़ा 3 दिवसीय कार्यक्रम करना असंभव होता था। नवीन जी ने अभी हमारा परिचय देते हुए कहा
देहरादून में हमारा प्रोग्राम था 4 और 5 अप्रैल को, नवीन जी ने ही आयोजित किया था, और अचानक 18 तारीख को लॉकडाउन हो गया। हमारे सब प्रोग्राम कैंसिल हो गए। नवीन जी के पैसे अभी तक अटके हुए होटल के पास, हमारे टिकट के पैसे गए। तो उस समय ये विषय आया कि क्यों नहीं इसके ऑनलाइन करके देखने का प्रयास करें। और ये प्रोफेसर, नाड़ी गुरु, मर्म विशेषज्ञ, मर्म गुरु नवीन जी की ही संकल्पना थी कि ऑनलाइन नाड़ी परीक्षा सिखाई जाए। और पिछले 2 वर्षों में अब तक तकरीबन 129 ऑनलाइन कार्यक्रम, करीबन 225 के ऊपर ऑनलाइन लेक्चर्स। ऑनलाइन कार्यक्रम में जब कहता हूं तो वर्कशॉप का आयोजन हमने किया है, और तकरीबन 30,000 35,000 से आसपास लोगों ने ये नाड़ी परीक्षा सीखने का प्रयास भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी अनेक देशों में ऑनलाइन किया है। तो ये एक बड़ी विधा है जिसके बारे में सबको उत्सुकता है, और ये नाड़ी प्रबोधिनी इस उत्सुकता को काफी सारा खाद्य पहुंचा रही है। मैं सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए हिरमे मैडम और नवीन जोशी सर का हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं कि इतना बड़ा, जिसको हम कहते हैं ना शिव धनुष, मराठी में बड़ी कहावत है कि कोई बड़ा काम करते हैं तो कहते हैं शिव धनुष उठाया। परशुराम ने रखा हुआ शिव धनुष सिर्फ राम ही उठा सका। वो शिव धनुष्य नाड़ी परीक्षा का उठाने का बीड़ा नवीन जी ने लिया है, और आयुष दर्पण फाउंडेशन के माध्यम से, नाड़ी प्रबोधिनी के माध्यम से इस कार्य को बड़ा अंजाम दे रहे हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ, और आशा करता हूँ कि इस कार्यक्रम के पश्चात अनेक नए नाड़ी वैद्य, जैसे अभी मैडम ने कहा हरीश जी बड़ा ज्ञात नाड़ी वैद्य है, पर उनके केशायुर्वेद की संकल्पना लोगों को ज्यादा पसंद है, तो वो पता रही। नाड़ी परीक्षा के बारे में अब इसके बाद वो भी एक बड़े ज्ञात, लाघवनकर जी भी एक बड़े विज्ञात नाड़ी वैद्य के रूप में प्रचलित होंगे, यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो आज के विषय को शुरुआत करते हैं। Recent advances in Nadi Pariksha. Nadi Pariksha is an age-old phenomenon. Age-old, the documented phenomena of Nadi Pariksha can be observed almost since the time of Vedas. But if you think in other systems of medicine, we can find documented evidences of Nadi Pariksha, or probably the information about Nadi can be seen almost 10,000 years ago, 8,000 BC. Roman medicine has an expression: he is not pulsating, he must be dead. So the relationship of the life and that pulsating part called artery was known to human beings since ages. Even Charak Samhita carries the same information almost in the similar language. Yasya spandananam cha aspandanam parasuriti vidya. Where there should be pulsation. If you don't find it pulsating, it's a sign of death. He is more categoric in explaining the further thing that yasya manyagate spandananam cha aspandanam parasuriti vidya. And while explaining what manyagate is, Chakrapani says manyagate is Galaparsha. And my dear friends, please remember, even today, if you find some unconscious person anywhere, the first thing examine
is carotid, Gallup partial. If you don't find any pulsation here, it's a sure sign of death. Charak was aware about all this. In latter articles, he has mentioned about Sparsha Vigyanam. Of course, today it is not the main subject topic, so I'm not going to go into details of it. But he was very categorical about conveying us that there is some nutritive phenomena being propelled by the heart throughout the body, and the variations in the qualities of that nutritive liquid which is traveling through the arterial system can be examined, and the variations can be judged for the variations happening in the body. Pulse always fascinated the mankind because of its direct relationship with the life. There were many efforts over the centuries have been carried out for understanding the variations in the pulsations. In 17th century, a sphygmograph was evolved, which with the help of a pointer and a rotating drum with carbonized paper could graph the pulsation. It's like ECG. It was sphygmograph. And the pattern, what we understand today, the PTBD pattern was first discovered in that time. But later on, more concentration went on the electrocardiogram, echocardiogram, thereby shifting the paradigm towards understanding the heart itself than understanding the propagation of the fluid which has been propelled by the heart, which is felt in the pulse. And ECG took over the pulse as such. But searching the variations and understanding about the variations in the pulsations was never stopped. In early 60s, there were efforts of measuring Vata Pitta Kapha with the help of sensors and electronics. Of course, though the patents were awarded, nothing more was done on that part. And being the patent awarded, the law restricted all other experts to work in the same direction. Patent got expired in 76, and there were a lot of studies started pouring in. Meanwhile, the ECG became a handy phenomena for every physician across the world. It became the part of routine investigations. And then slowly people got attracted to the variabilities seen in the electrocardiogram. Since the advent of digitalized form of electrocardiogram and artificial intelligence with machine learning, all these three things came together, and the cardiogram started getting analyzed in more depth, in more details,
which was very difficult for human eye to do it. When human eye, because we know the normal ECG is taken at the speed of 25 millimeter per second, and we get PQRST, where every single wave represents the different activity of the cardiac movement. Like from P, we have atrial contractions, QRS always give us ventricular contractions, and T waves, the depolarization. But this started getting more understanding was pouring in. It started with the variations between the two R waves, the peaks, and it was understood to be heart rate variability. All advances thereafter in pulse diagnosis are based upon particularly this phenomena called heart rate variability. That is the variations between the two R waves. Why R waves? Why not P and T waves in a QRS complex? Reason is very simple, because pulse is formed during the ventricular contraction. That bolus of the blood which is thrown into the arterial system at the time of ventricular contraction and thereafter followed by a period of subtleness, rest, this silent movement of heart caused that particular expansion of the arterial system which was propelled throughout the system. And that was measured as pulse. As we all understand now, because it's a movement of the propelled blood by the ventricular contractions in the arterial system, it always had the waveform. And this waveform were started getting measured. And it was not only in India, but everywhere else in the world. Every single medical science started getting some understanding of this non-invasive understanding of the ventricular contractions through the pulse. In India, in early 80s, it was Deshbandhu Bajpayee from Kanpur who did his role in developing an electro-tridoshograph, ETG. Very surprisingly, though the CCRS and Ayush Ministry were aware about this particular research because it was been expressed to them, unfortunately, somehow this fantastic research carried out by a man indigenously, Dr. Deshbandhu Bajpayee, I would say he is the pioneer of study of Nadi Pariksha electronically, or study of Tridoshas electronically in India. Was never propagated properly through the channels and could reach to the Vaidyas and the students. This is unfortunate, but truth. In a similar effort was done by another veteran, Dr. Shahji Shahjad, retired as Director Forestry,
retired as head of department Dravya Gun Vigyan, a PhD from Jamnagar. He studied the lakshanas into the variations of the doshas and created a software where doshas can be understood just by feeding the symptoms present in the patient. If these two would have been combined, probably it would have been very suffice for use of every single Ayurveda principle in the management. But unfortunately, it never happened. They remained so aloof from each other, they never got together. And then in 2004, a young engineer from Pune, just because his father was diagnosed properly by one of the finest Nadi Vaidyas of India, got intrigued and thought that this can be understood electronically, can be measured, can be documented, and can be used as a objective phenomena than the subjective phenomena the Nadi Pariksha was then. He was no more else than Dr. Aniruddha Joshi. Of course, Dr. PhD, not a medical doctor, but his knowledge about Ayurveda since last 18 years, he's been focused on the one particular subject called Nadi Pariksha, will astonish every single postgraduate of this country at this time. Very clear understanding of the doshas and its activities and the probable methods of learning it. So, out of his research and thereby validating it at multiple centers, he came out with the machine called Nadi Tarangini. This is till today the only machine available in the globe which uses the Ayurvedic algorithm to understand the pulse with his very specific design of 3 fingertips. Yesterday he has given us day before the entire process of understanding the pulse and how he developed this machine. This is the one of the finest effort, and that won the accolades. But I really feel at times people are so skeptical, Vaidyas in special, to try the new technology. If they would have tried it, this would have become an instant hit and super success. But despite of the fact that India has more than 4,50,000 Ayurvedic Vaidyas practicing as on today, he could not meet even 1,000. Beautiful machine, excellent outcome, extraordinary efforts. Results are very good. It is not me alone. Harish ji has used it. Satyajit Kadkol has used it. There are multiple people who has used it. I have machines across all my clinics. Excellent machine. Still not in common use of Ayurveda because it was his dream that
he wanted to make a common language for Nadi Pariksha across India. My dream too, a common language for Nadi Pariksha across India. Now, meanwhile, he thought it is the professional, if it is not going, we should go directly to the consumers. And Turya was born. But yesterday he was telling us that he has refocused on Nadi Tarangini. And I'm sure the newer versions of Nadi Tarangini will be much better and much useful. The pulse, he used the same method as every other Vaidya will use, keeping 3 fingers on the pulse. So using the pressure sensors. But Nadi can be understood, as Harish has very categorically said, by multiple methods, not only by the touch. And then there was another machine called Veda Pulse. Veda Pulse Professional. This multi-algorithmic machine comes with understanding of the pulse with electrical current measurement. And with electrical current measurement, the variations were understood and an algorithms were developed not only to understand Ayurveda, but traditional Chinese medicine, acupuncture, acupressure, Suzhou therapy, yoga therapy, chakra therapy, color therapy. Veda Pulse was designed and developed by none other than Mr. Oleg Sorokin, and Russian scientist. This has been validated by 2 very great Vaidyas who are very strong proponents of Nadi Pariksha, Vaidya Vasant Lad and Vaidya Ram Manohar of Amrita. Vasant Lad is from US, worldwide known Nadi teacher, and Professor Ram Manohar. At his institute it was validated. Has very different kind of understanding about the pulse. This has got very strong component called organ pulse and can define and give us understanding of organs in most rational and most prolific way, which is sustainable, repeatable, and its impact can be seen. Veda Pulse, though it's a good machine, being a Russian machine, becomes very costly to import it. It costed me somewhere around $2,600, and I paid customs duty around $1,780, $1,780, almost $4,500. Very costly. But yes, has a different set of algorithm than that of Nadi Tarangini. Meanwhile, people were searching for cheaper aspects, and one engineer from Hyderabad, Bangalore, came up with trying to understand the acoustic nature of the pulse and came out with the machine called Nadi Swara. I hope you all can see this. Nadi Swara. Probably the simplest possible machine. It uses extreme high density microphones to measure the sound waves of an artery. As we all know, artery is a tubular structure.
where the blood flows from. And when you pass some fluid in the tube, it creates sounds. So the acoustic understanding of the pulse was done. This was basically developed as a Chinese TCM machine. But later he found that the similar algorithm can be useful in Ayurveda, in Marma therapy, in acupuncture, in Suzhou therapy, and a single point acupuncture. Nadiswara, developed by Mr. Basav Raj. An engineer, and by passion and acupuncture practitioner, qualified as an engineer, electronic engineer, but with the passion of practicing acupuncture, he developed this machine. I'm sure he has already sold more than 2000 plus machines, but it is going on very fast because of the ease to use it. Can be carried out in a pocket as Nadi Tarangini. It works with mobile, and you get very easy reports to understand of Pancha Mahabhutas and of Tridoshas with acupressure points, with Suzhou points. You can see how simple the report is. Pancha Mahabhutas, Tridoshas, what to do, what not to do. The best part of Nadiswara is not only the impact which is observed in Pancha Mahabhutas and Tridoshas, but is psychological understanding. Very excellent understanding. And then the Suzhou points, the pressure points, acupressure points, and everything else. It made this machine extremely useful for everyday practitioner. But now the corona came, which really enhanced the need of some kind of understanding of the pulse without human touch. And the winner out of which it came out was none other than Ayurveda. A very excellent kind of, you must have seen this. It's a free to download application, goes well with Android and iPhone equally well, uses nothing else but the light source of your screen and the camera of your mobile phone, and uses the technology called photoplethysmograph, taking multiple pictures. We have its founder, Ramnath Padmanabhanji, speaking today, and you will get more glimpses on what the wearables are going to do in the field of Nadi Pariksha in coming days.
I'm happy to be the partner of this group, Ayurvedam. We conduct multiple researches for Ayurvedam. There is one similar technology been developed by a young Russian by Papelov called VitaPulse. Very different set of technology. This is available only on Android. It gives you the wavelength analysis in details of every pulse. He uses the same technology, PPG, but he uses with the illumination of the flashlight. Takes prolonged time, 5 minutes, 300 seconds of observation, while Ayurvedam does it in 20 seconds. In recent advances, Ayurvedam is coming out with a 20-second video analysis, which can give you extraordinary, profound, and correct understanding of your Prakriti. So this is going to be a wonderful shift. I am associated with IIT Mumbai, and we are developing multiple machines for Nadi Pariksha. And I can foresee an absolute paradigm shift in the understanding, not only in the Nadi, but the diagnostics for Ayurveda and every other medical system through the pulse examination, when these machines will come in existence. With artificial intelligence and machine learning programming coming together with advanced sensor technologies like graphene, like endurance pulse analysis. There were papers published 20 years ago, 25 years ago, about understanding of Prakriti. And it was done by BRC, Baba Atomic Research Center, not by an Ayurveda college or an Ayurveda doctor. So the advances are inevitable. Advances are going to be the part of our life, as they are going to invade the Nadi Pariksha too. We must respect our ancient knowledge. It cannot be replaced. But don't get stuck with that. Keep your eyes open. Keep your experience understood in multiple methods and methodologies and scientific understandings, and that will help all of us to use Nadi Pariksha not only in our day-to-day medical practice, but in our day-to-day life. I'm sure Ramnath Padmanabhanji will be sharing the further part of what I said today. Not only your medicines will be controlled by the pulse understanding, your cosmetics will be controlled by your pulse understanding, your working will be controlled by your pulse understanding. As on today, your food will be controlled by pulse understanding. Every single aspect of life will be engulfed, and you have to choose. You will have to choose. Probably not my generation, but the further generation will be using it for their day-to-day selection of food, clothing, behavior, entertainment, medicines, cosmetics, and whatnot. So with this, I rest my words, thanking once again to Naveen Joshi ji, Shilpa Erme ji, every single participant who has presented their knowledge, understanding, and experiences with all of us, and those who are going to present it further today. I thank them all.
And with this, I seek permission to leave all of you. Thank you very much. Namaskar. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much for inspiring us. I think आपके लिए सवाल पूछना भी मुश्किल है वैसे, क्या पूछे? भाई मुझसे ही सवाल पूछा जा सकता है, जो एक जमाने में शंकासुर के नाम से जाना जाता था। अच्छा, yes. Any questions, doctors? Any of you? I think आयुर्वेदम के बारे में हमने सेशन रखा है, ये एक अच्छा होगा, थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज और एक इंस्पिरेशन भी मिलेगा सभी आगे जनरेशन के लिए भी कि किस प्रकार से हम लोग काम कर सकते हैं। जैसे आपको बता रहा हूँ कि आयुर्वेदम के लेक्चर जब आप सुनेंगे रामनाथन सर को, तो ही विल बी टॉकिंग अबाउट वेरिएबल्स, yeah, definitely. variables invading our day-to-day life with Nadi Pariksha. So it will be a great lecture. I am sure for that, and I wish all of you best of everything and wish you all the best. Thank you very much. I hope Yes, sir. I can take your leave. Yeah, definitely. Thank you. Just we will welcome Dr. Sushant Mishra ji. Welcome, Dr. Sushant ji. धन्यवाद शिल्पा जी। Yes. एक लफ्ज गाड़ी कहिएगा उन्हें। हाँ, yes, वही मैं आपको बताने वाली थी, उनके लिए आप ही 2 शब्द बोल दीजिएगा। मैं नहीं बोलूंगा, सुशांत जी हमारे प्रणाम सर। प्रणाम सर। और नाड़ी परीक्षा का भविष्य है, जिन्होंने स्वयं सिद्ध किया, स्वयं सिद्ध नाड़ी कैसे, नाड़ी परीक्षक कैसे बन सकते हैं। और मैं नहीं हूँ इंस्पिरेशन आज की जनरेशन को, अगर कोई सही में इंस्पिरेशन है तो सुशांत जी है और पाटनकर जी सही मायने में इंस्पिरेशन है नई जनरेशन। और मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आज आप और एक नया कुछ चमत्कार सबको सुनाएंगे। इसके साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। सुशांत जी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। प्रणाम। प्रणाम सर। प्रणाम। वेलकम डॉक्टर सुशांत मिश्रा जी फ्रॉम उत्तराखंड, जो कि जैसे सर बता रहे थे नाड़ी गुरु आचार्य झाजेड़ सर जी के, सर ने खुद से नाड़ी परीक्षा सीखी है। उन्होंने खुद से प्रयास किया, अभ्यास किया और आज एक चरम पर वो पहुंच चुके हैं। आज कदाचित हमें उन्हें मतलब उनको संबोधित करना चाहिए भी कि नाड़ी गुरु आचार्य मिश्रा जी करके भी हम लोग उनको बुला सके, तो निश्चित रूप से ये बहुत ही एक आनंददायी बात भी होगी। सो सर, आपका स्वागत है। आयुर्वेद प्रैक्टिस के साथ साथ नाड़ी परीक्षा ये आपका रुचि का विषय रहा है और इसको लेकर आप लगातार अभ्यास किए जा रहे हैं। और इसी अभ्यास के साथ आज का ये सत्र हम आपके लिए यहाँ पर हमारे सभी दर्शकों के लिए हमने ये खास कर रखा है। और जैसे कि सर एक न्यू जनरेशन के प्रतीक है, तो आप सभी के लिए भी एक इंस्पिरेशन के रूप में निश्चित रूप से आज का ये सेशन उनका रहेगा। स्वागत है सर आपका। आप 1 मिनट अनम्यूट करिए सर, अनम्यूट नहीं किया। या आप सभी का धन्यवाद, विशेष रूप से शिल्पा जी आपका, डॉक्टर नवीन जोशी बॉस का, और अपने जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है भारत में आयुष जर्मन फाउंडेशन, इसका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे एक अवसर दिया कि जो मेरे पास अनुभव जमा है मैं आप सबके साथ उसे बांट सकूं। तो इन शॉर्ट मैं आपको एक छोटी सी अपनी कहानी सुनाता हूं, उसके बाद विषय को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं और अभी तक आपको डे टू डे लेक्चर्स में सुनाया भी गया होगा कि हम लोग जब अपने कॉलेज में जाते हैं तो वहां हमें नाड़ी परीक्षा से संबंधित कोई भी ज्ञान विशेष रूप से प्राप्त नहीं हो पाता है। सो मेरे साथ भी ऐसा ही रहा। आप सब मुझे सुन सकते हैं? यस सर। Am I audible? Yes, clearly you are. Yeah, you can. Okay. तो कहानी शुरू हुई धीरे धीरे। हमने जब BMS कर लिया उसके बाद चिकित्सा करते थे, कई रोगी ठीक होते थे, कई रोगी ठीक नहीं होते थे। तब एक बार एहसास हुआ कि शायद हम बुद्धि रूपी दीपक लेकर रोगी के भीतर प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए रोग का ठीक से ज्ञान हमको नहीं हो पा रहा। तो कैसे किया जाए? तो हमारे पास एक यही टूल था नाड़ी का, पर सिखाने वाला कोई था नहीं। बस सोचा कि जब इतना आसान काम नहीं है
पर फिर भी इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है तो शुरू करते हैं, ऐसा करके शुरू कर दिया। और शुरू करके सिर्फ मैंने 2 नियम बनाए इसके लिए। पहला, जो भी रोगी मेरे पास आएगा उसकी नाड़ी में अवश्य देखूंगा। दूसरा, जो भी उसकी नाड़ी में फाइंडिंग्स मिलेगी उन्हें अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा भी चित्र बना करके या लिख करके कैसे भी करके उनको डॉक्यूमेंटेड जरूर करूंगा कि इस रोग में मुझे इस टाइप का पैटर्न मिला, ऐसे करके। तो ये 2 नियम जो मैंने बनाए इन पर मैं अटल रहा, और इन 2 नियमों के कारण जो है धीरे धीरे करते करते एक सिचुएशन आ गई कि हमने एक नाड़ी परीक्षा के ऊपर एक रिसर्च पेपर भी सबमिट किया है और वो पब्लिश भी हो गया। तो इस तरीके से आज मैं आपके साथ उसे साझा भी करूंगा। और जो मेरा अनुभव है, अभी तो आपने काफी बड़े बड़े विशेषज्ञों को सुना है, पर चूंकि जो मेरा सिस्टम है, मेरा तरीका देखने का है, थोड़ा सा सबसे अलग है, और उसे मैंने धन्वंतरि की कृपा से, उनके आशीर्वाद से डेवलप किया है। तो चूंकि डेवलप धीरे धीरे मेरे साथ ही डेवलप हुआ है, बल्कि कहूँ मैं भी उसके साथ डेवलप होता चला गया हूँ, तो उस सिस्टम के बारे में मैं बेसिक जानकारी आपको जरूर दूंगा, क्योंकि इन जनरल जो जानकारियां आती हैं वो आप सबको पता होती हैं, पर शायद मेरा तरीका थोड़ा सा अलग हो, इसलिए बेसिक जानकारियां भी आपके लिए बहुत जरूरी है। तो मैं एक अपना प्रेजेंटेशन शेयर करने जा रहा हूँ। आप कर सकते हैं सर प्रेजेंट। हाँ, ओके ओके, बस अभी मैं शेयर कर रहा हूँ, थोड़ा सा ये समय लेता है शुरुआत में। ठीक है, कोई बात नहीं। बस अभी 1 मिनट में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है सर, कोई बात। आप सब देख सकते हैं, देख पा रहे हैं आप लोग? यस यस यस। ओके ओके। ओम श्री धन्वंतरे नमः। नमस्कार। अब इस टॉपिक को थोड़ा सा आगे आते हैं। मैं अभी आज चर्चा नहीं करूंगा, आप सब काफी इसको सुन चुके हैं, जानते भी होंगे, और अभी तक आप समझ गए होंगे कि नाड़ी देखने के भारत में कई तरीके प्रचलित हैं। भारत में नहीं, पूरे विश्व में भी। अभी तक मुझे लगभग 9 साल हो गए हैं प्रैक्टिस करते हुए, और इन 9 सालों के दौरान 10,000 से ज्यादा पेशेंट्स की नाड़ी मैंने देखी है, उनको डॉक्यूमेंटेड भी किया है। अच्छा, नाड़ी परीक्षा के पहले कुछ जरूरी बातें जानना बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले थोड़ी सी चर्चा उनकी करेंगे, क्योंकि मैंने जहाँ से शुरुआत की थी मुझे कुछ भी नहीं आता था, तो करने सीखने वाली स्थिति मेरी थी। तो जो गलतियां मैंने करी हैं वो आप ना करें, इस करके हल्का सा तैयार किया है, आप इसे ध्यान से देखिएगा। एक प्रश्न आता है, नाड़ी परीक्षा कब करें? सबके सामने आता है, मेरे सामने भी आया था। तो दिन भर में कई बार नाड़ी देखी, कई पेशेंट नाड़ी देखी, तब समझ में आया कि सबसे अच्छा समय सुबह का होता है, जब आपके पेट में मल भी नहीं होता, भोजन भी नहीं होता, शरीर के दोष अपने स्वाभाविक अवस्था में रहते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली हर पेशेंट को आप सवेरे बुला ले, संभव नहीं है, और हर पेशेंट के लिए सवेरे आना भी संभव नहीं है। फिर अल्टरनेट मेथड क्या रखा उसका? तो महसूस किया कि लगभग 2.5-3 घंटे या कभी कभी 3.5 घंटे भी लग जाते हैं, उसके बाद आप नाड़ी देख सकते हैं। मैंने अगर किसी ने कुछ आहार लिया हुआ है तो
उसके कम से कम 3 घंटे के बाद नाड़ी ठीक आने लग जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि किसी ने बहुत ही तीक्ष्ण और उष्ण आहार लिया हुआ है, यानी कि किसी ने लाल मिर्च का प्रयोग है, चाय का प्रयोग है, गरम मसालों का प्रयोग है, ऐसा बहुत ज्यादा कर रखा है, तो 3 से 3.5 घंटे भी उसको लग जाते हैं नाड़ी को सामान्य आने में। यानी कि इस दौरान, यानी कि खाना खाने के 3 से 3.5 घंटे के दौरान जो नाड़ी मिलती है वो बेसिकली आहार की नाड़ी होती है शुरुआत में। उसके बाद अलग अलग जो पाचन की अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, अवस्था पाक होते हैं, उनकी नाड़ी वो होती है। अभी हम वहां पर नहीं जाएंगे, अभी हम सामान्य चर्चा करेंगे, अभी हम आहार के बाद में करेंगे। एक हम लोग सुनते थे कि भाई स्नान और अभ्यंग के बाद नाड़ी नहीं देखनी चाहिए, पर कोई उत्तर देने वाला नहीं था, तो खुद जब महसूस किया तो पता लगा कि स्नान के बाद में थोड़े समय के लिए पित्त शांत हो जाता है, तो अगर किसी की नाड़ी में पित्त है तो वो थोड़ी देर के लिए नहीं मिलता, इसलिए संभवतः कहा गया होगा कि स्नान के बाद नाड़ी नहीं देखनी चाहिए। और अभ्यंग की बात करें तो अभ्यंग के बाद वात का शमन होता है, तो वात व्याधियों में कोई व्यक्ति वात व्याधि से पीड़ित है और अभ्यंग के पश्चात हम उसकी नाड़ी देख रहे हैं, तो उसकी नाड़ी में वात आपको ठीक से नहीं मिल पाएगा, इसलिए संभवतः इन 2 नियमों को कहा गया होगा। तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण आता है कि भाई हम दाएं हाथ में नाड़ी देखें या बाएं हाथ में। तो चूंकि मुझे तो कुछ पता था नहीं शुरुआत में, तो मैं पेशेंट के दोनों हाथ में नाड़ी देखता था और दाएं बाएं राइट लेफ्ट करके उसको मैं लिखता था कि भाई राइट में ये फाइंडिंग मिली, लेफ्ट में ये फाइंडिंग मिली। तो धीरे 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 करके समझ में आया कि जो शरीर को अगर हम 2 हिस्सों में बांट लें, राइट लैटरल लेफ्ट लैटरल, दक्षिण पार्श्व और वाम पार्श्व, तो जो वाम पार्श्व में अगर कोई अंग पीड़ित है किसी रोग व्याधि विशेष से, तो उसकी नाड़ी उस पार्श्व में विशेष रूप से आपको मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को गृध्रसी है और वो बाएं पैर की तरफ है, लेफ्ट पैर की तरफ है, तो आपको गृध्रसी की नाड़ी बाएं हाथ में आपको स्पष्ट मिल जाएगी। तो ये जरूरी नहीं है कि आप पुरुषों के दाएं और स्त्रियों के बाएं हाथ में ही नाड़ी देखें। ये मेरा तरीका है और लोगों के तरीकों से थोड़ा सा अलग है। जो मेरी फाइंडिंग्स है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो सबका अपना अपना तरीका होता है, उनके अपने अपने अनुभव होते हैं, पर अभी तक पिछले 9 साल में जो मेरे तरीके से अनुभव में आया है, तो जिस पार्श्व में रोग है उस पार्श्व की नाड़ी में वो रोग स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो जाता है। यहाँ पर आपको एक बहुत ही मजेदार बात बताता हूँ। एक बार मेरे पास एक रोगी आया और उसके लेफ्ट साइड में उसको गृध्रसी थी और दाएं हाथ के अंगूठे में उसको वात रक्त यानी कि यूरिक एसिड बढ़ा हुआ था, ऐसा शिकायत लेकर के मेरे पास वो आया था। जब मैंने दोनों हाथ की नाड़ी देखी तो दोनों हाथों में अलग अलग नाड़ी मिली। जिस पार्श्व में उसको यूरिक एसिड का वो शिकायत बता रहा था कि भाई अंगूठे में बहुत दर्द हो रहा है पैर हाथ में, उस हाथ में तो वात रक्त यानी कि यूरिक एसिड जिसको आप आजकल बोलते हैं एलोपैथी में, उसकी नाड़ी मिली। और जो दूसरे पार्श्व में उसकी जो गृध्रसी की नाड़ी होती है वो नाड़ी मिली। तो मेरा कंक्लूजन यही निकला है कि आप जब भी रोगी से बातचीत करें तो ये ऑब्जर्व करने की कोशिश करें कि उसके जो रोग है वो शरीर के किस पार्श्व में है, दाएं में है, बाएं में है। तो अगर आपको लगता है कि किसी एक पार्श्व में रोग है तो उसके उस पार्श्व के यानी कि उस हाथ की नाड़ी आपको जरूर देखनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो एक सामान्य नियम है कि पुरुषों की दाएं हाथ में, स्त्रियों के बाएं हाथ में, ये नियम अपनी जगह ठीक हो सकता है, लेकिन रोग के दृष्टिकोण से, क्योंकि मैं सीधे सीधे रोग की तरफ पहुंचता हूँ, तो जब मैं रोग देखता हूँ तो मुझे उस तरफ, उस पार्श्व में विशेष रूप से उसकी नाड़ी मिलती है। ये मेरे अनुभव में आता है। अब ये नियम बहुत ही सामान्य सा नियम है, लेकिन बेहद जरूरी नियम है, क्योंकि नाड़ी इतनी सेंसिटिव होती है कि आपकी भावनाओं से और आपके रिलैक्स न रहने मात्र से वो उसमें उसका असर दिखने लग जाता है। इसलिए हमेशा एक चिकित्सक को और उसके रोगी को, दोनों को बिल्कुल रिलैक्स अवस्था में होना चाहिए। यानी कि पेशेंट अगर आपके पास बाहर से आया है और बाई चांस आपके ओपीडी में पेशेंट उस समय नहीं है, कोई बैठे हुए, उस सीधे सीधे आपके केबिन में आ जाता है, तो उसको बोलिए कि आप थोड़ी देर 5 मिनट बैठिए, फिर मैं आपको देखूंगा। तो थोड़ा सा वेट जरूर करना चाहिए, क्योंकि तुरंत कोई दूर से पैदल चल करके आ रहा होगा तो उसकी प्राणवायु उस समय बढ़ी हुई मिल जाती है, इसलिए कंफ्यूजन होता है। इसलिए हमेशा पेशेंट अगर आ रहा है तो तत्काल आपके केबिन में आ रहा है, बिना प्रतीक्षा किए, तो उसको थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए जरूर बोलिएगा। देखिए,
प्राणायाम और ध्यान। मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बताऊंगा। मैं हरिद्वार में जो स्वामी रामदेव जी हैं, जिनका पतंजलि योगपीठ है, मैं वहां पर 7 साल रहा हूँ। शुरुआत के उस समय जब नया नया बना था, और इनके साथ में, स्वामी जी के साथ में भारत में मैं लगभग 18 राज्यों में घूमा भी हूँ, गया भी हूँ, और वहां भी मैंने बहुत सारे रोगी देखे। और वहां पर प्राणायाम के लिए मुझे बहुत प्रेरणा मिली, और प्राणायाम के कारण मैं कह सकता हूँ कि शुरुआती अवस्था में ब्रेन को कंसंट्रेट करने के लिए उंगलियों के टिप्स पर मुझे प्राणायाम और ध्यान से मुझे बहुत सहायता मिली है। हालांकि हमारे बीच कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इनका मन वैसे ही बहुत ही स्थिर होता है, कंसंट्रेट होता है, उन्हें किसी प्रकार के प्राणायाम की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी आमतौर पर हम सब, अधिकांश लोगों को इसकी आवश्यकता पड़ती है। और इसमें एक चीज अच्छी होती है कि आप प्राणायाम करते हैं तो जो क्लैरिटी है फाइंडिंग की, वो आपकी बढ़ जाती है, एनहांस हो जाती है। इसलिए आप प्राणायाम करेंगे तो आप अच्छे नाड़ी वैद्य भी बन सकेंगे, और आपका खुद का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। अब ये जो एक बिंदु है कि जो उंगलियां हैं वो ड्राई नहीं होनी चाहिए। दरअसल ये केवल जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ, यहाँ बहुत ठंडक पड़ती है, ठंडक में बहुत ड्राइनेस भी होती है, उस लिहाज से मैंने लिख दिया है। बाकी जहाँ गर्म प्रदेश है, जहाँ ठंडक नहीं पड़ती है, वहाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है, वहाँ उंगलियां आमतौर पर पसीने से ठीक रहती हैं, नम रहती है, क्योंकि ड्राई फिंगर्स में आप पल्सेशन अच्छा नहीं पा सकते। अच्छा, जब मैं नाड़ी परीक्षा कर रहा था, तो कई बार होता था कि भाई नाड़ी मिल नहीं रही है। अब मैं परेशान कि यार क्यों नाड़ी नहीं मिल रही है। धीरे 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 उन कंडीशंस को समराइज करना शुरू किया, तो ये 4 मेरे पास चीजें सामने आई कि लो ब्लड प्रेशर है तो नाड़ी आपकी ठीक से नहीं मिलती है, उसकी स्पष्टता घट जाती है, आप कंफ्यूजन बहुत होता है उसमें। बहुत सर्दियां हैं तो उसमें जो ब्लड वेसल्स हैं थोड़ी सिकुड़ जाती हैं, तो बहुत अच्छा पल्सेशन कई बार नहीं मिलता है। ओल्ड एज है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो चुका है, धमनियां मोटी हो चुकी हैं, तो उसमें भी दिक्कत होती है। और एनीमिया, एनीमिया में जो मेरा तरीका है, मुझे उसमें कभी भी अच्छी नाड़ी नहीं मिलती है। हालांकि मैं देखता हूँ कि कई सिस्टम ऐसे लोग अब जिन जो देखते हैं नाड़ी अपने अलग तरीके से, वो बोलते हैं कि एनीमिया की नाड़ी ऐसे ऐसे चलती, पर मुझे नहीं मिलती है। अब अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो अभी अभी नाड़ी परीक्षा शुरू करने जा रहा है, हालांकि मुझे लगता है कि जो इतने लोग जुड़े हुए हैं वो सब इस समय काफी से पहले से जिज्ञासु भी हैं और अभ्यास भी करते होंगे, परंतु अगर कोई आज ही शुरू करने वाला है तो मैं उसको यही कहूंगा कि शुरुआत में अपने किसी एक हाथ का अभ्यास शुरू करें। और जब आप एक हाथ से सिद्ध कर लेंगे, तब तो आप किसी भी हाथ से देखें, उंगलियों को किसी भी क्रम से रखें, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको सब समझ में आ जाएगा। लेकिन जब अभ्यास शुरू कर रहे हैं तो उस समय वही ठीक रहेगा आपके लिए। तो कुछ बेसिक्स मैंने बनाए हैं, मैं आपको बताता हूँ। अब आगे जो फोटोग्राफ्स मैं आपको दिखाऊंगा, वो उसमें वैद्य का और पेशेंट का, दोनों का जो है राइट हैंड यूज किया गया है, तो इसलिए आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने पहले चीज को मेंशन कर दिया है। जब मैंने नाड़ी देखना शुरू किया तो शुरुआत में मैं उंगलियों को ऐसे रखता था जैसे कि आपको दिखा, इस चित्र में दिखाई पड़ रहा होगा। अब इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो जो मिडिल फिंगर है वो सबसे लंबी होती है, और मिडिल फिंगर से हम पित्त देखते हैं। तो शुरुआत में मुझे हर व्यक्ति में लगता था कि इसमें तो पित्त बहुत बड़ा हुआ है, तो लेकिन बाद में समझ में आया कि ये तरीका तो गलत है, क्योंकि मुझे कोई गुरु मिले नहीं, तो खुद से करके, गलती करके सब सीखा है। तो समझ में आया कि जो ये तरीका है, तीनों फिंगर एक प्लेन में होनी चाहिए, और कोशिश ये होनी चाहिए कि जब तीनों फिंगर के टिप्स एक प्लेन में आ जाएं, तो तीनों फिंगर को आपस में खूब सटा लें। मतलब उसको ऐसे फील करें कि तीनों उंगलियां आपस में फ्यूज हो गई हैं। बस आगे की तरफ 3 प्रोब हैं आपके पास, वात, पित्त और कफ को देखने के लिए। अब समझने के लिए थोड़ी आसानी हो, इसलिए मैंने एक एक्सरे प्लेट यहाँ पर डाली है। यह हाथ की एक्सरे प्लेट है। आप देख सकते हैं कि रेडियल ट्यूबरोसिटी, एक जो रेडियल बोन है, उसका जो एक प्रोसेस, एक उभार होता है, वो कलाई के पास अंगूठे के नीचे होता है। इसलिए अगर इस स्थान पर आप नाड़ी देखते हैं तो आप नाड़ी देख ही नहीं पाएंगे, इसलिए इससे आपको देखना होता है। एक पेशेंट का हाथ आप देख सकते हैं, और एक उसकी रेडियल ट्यूबरोसिटी जो उभार है वो भी आप देख सकते हैं। इसके हाथ में थोड़ा सा क्लियर था,
क्योंकि ये अस्थिसार पुरुष थे। अब आप देखिए कि मैं नाड़ी कहाँ देख रहा हूँ। आप में से कई लोगों को ये लग सकता है कि ये जो दूरी है ये अंगूठे की जो मूल है उससे 1 अंगुल से कहीं ज्यादा है। तो हो सकता है आप में से कई लोगों को कुछ कंफ्यूजन हो रहा हो। देखिए ऐसा नहीं है। सिम नाड़ी देखने का, हम नाड़ी को कहाँ पर रखेंगे, उंगलियों को कहाँ से देखना है हमको। कई बार हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा तो नहीं कि हम थोड़ा सा आगे चले जाएंगे तो नहीं मिलेगी, उस जगह पे दाएं बाएं शिफ्ट हो जाएंगे उंगलियां तो हो सकता है नाड़ी ना मिले। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ये बहुत सिंपल है कि हम उंगलियां कहाँ रखें। सिंपल, आपको जहां ठीक से तीनों उंगलियों पे पल्स मिलने लगे, तीनों उंगलियों पर, किसी एक पर नहीं, आप कलाई पर रख लीजिए उंगलियों को, धीरे धीरे उसको एल्बो की तरफ खिसकाइए और फिर देखिए कि जिस जगह पे तीनों उंगलियों पे आपको ठीक से पल्स मिलने लग जाएगी, बस आप समझिए कि आपको वही नाड़ी देखनी है। इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं कि उंगलियां दाएं हो जाएं बाएं हो जाएं, कोई दिक्कत नहीं आती इसमें। जिस स्थान पर मैंने इस समय उंगलियां रखी हुई हैं, अगर इससे आप 1 अंगुल आगे भी चले जाएं परंतु वहां पल्स तीनों पे अगर मिल रही है तो आप ये समझ लीजिएगा कि वहां भी नाड़ी वही आपको बताएगी जो इस स्थान पर बताएगी। इसलिए इसमें कहाँ पर उंगलियां रखनी है इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जहां तीनों पे पल्स से मिलेगा बस वहीं पर आपको रखना है। अब मेरा तरीका क्या है उसको आपको बताता हूँ। जो मेरा तरीका है इसमें मैं 3 स्टेप रखता हूँ। सबसे पहले तो दोष प्राधान्य में देखता हूँ। दोष प्राधान्य की जहां तक बात करें तो अभी तक जो विकृति का लेवल आपको बताया गया होगा वो उसकी बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। जो नंबर 1 पर यहाँ दोष प्राधान्य लिखा है, ये दोष विकृत दोष की बात यहाँ पर कर रहा हूं मैं। उसके बाद नंबर 2 पर भेद प्राधान्य, यानी कि वात के 5 भेद, पित्त के 5 भेद, कफ के 5 भेद, उनमें कौन कौन सा भेद आपको स्पंदन के द्वारा महसूस हो रहा है, उसको हम उसके बाद में देखते हैं। इसी पर मेरा रिसर्च आर्टिकल है, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। फिर नाड़ी का बल क्या है उसको हम देखते हैं कि नाड़ी कितने ताकत के साथ में आपकी उंगलियों को धक्का दे रही है, फोर्स लगा रही है, उसको हम देखते हैं। अब सबसे पहली बात कर लें, ये बहुत बेसिक बातें हैं, आप में से अधिकांश लोग तो इनको अच्छी तरीके से समझते ही होंगे, परंतु फिर भी मैं एक बार, चूंकि मेरा तरीका है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोष प्राधान्य देखने के लिए, मतलब कि ये टॉप लेवल जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको विकृति बोलते हैं। तीनों उंगलियों को हम जैसे हमने बताया था वैसे करके सिर्फ टच करते हैं, एकदम कलाई पे टच करते हैं, क्योंकि किसी किसी की नाड़ी एकदम आपको ऊपर ही मिल जाएगी, किसी किसी की थोड़ा सा आपको अंदर उंगलियों को प्रेस करना पड़ेगा। तो एकदम सिर्फ टच कराइए। अगर टच में ही आपको नाड़ी किसी उंगली पे मिल रही है तो आप समझ लीजिए कि उस उंगली पे, यानी कि अगर आपकी इंडेक्स फिंगर पर है तो वात, मिडिल फिंगर पर है तो पित्त, और इंडेक्स सॉरी रिंग फिंगर पर है तो कफ। ये जो है आपको किस उंगली में पल्सेशन मिल रहा है वो आपको ये बताएगा। किस उंगली पर मिल रहा है उसी को आप मान के चलेंगे कि वो दोष उसका विकृत हो गया है। एक बार फिर से बोल देता हूँ इसको। सिर्फ उंगलियों को टच करना है कलाई को, अगर टच करते ही मिल जाए तो वेरी गुड, नहीं अगर पल्सेशन मिलता है टच करने पर, थोड़ा सा धीरे 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 दबाएंगे, तब तक दबाएंगे जब तक आपको पल्स मिलना स्टार्ट नहीं हो जाती। जिस उंगली पर मिल रही है ये आप मान के चलेंगे कि वही दोष विकृत हुआ है। कुछ इस तरीके से तीनों उंगलियां हम एक साथ रखते हैं और कौन सी विकृत दोष की हम पहचान करते हैं। ये सिंपल है कि वात नाड़ी अगर इंडेक्स में मिल रही है तो वात, मिडिल में मिल रही है तो पित्त, और रिंग फिंगर में मिल रही है तो कफ नाड़ी है। तो सामान्य सी बात है। अब नाड़ी के जो भेद की परीक्षा करेंगे तो मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है, इसलिए इसको आप जरूर ध्यान से सुन लीजिएगा। जो अलग बात है वो ये है कि हर उंगली को स्वतंत्र रूप से रखा जाता है इसमें। यानी कि अगर हमें वात के भेदों को देखना है, प्राण, उदान, समान, व्यान, अपान, इनको, तो केवल और केवल हम इंडेक्स फिंगर को रखेंगे उसकी जगह पर जहां हम उसको रखते हैं, बाकी दोनों उंगलियों को हम हवा में ऊपर उठा लेंगे। ठीक इसी तरीके से जब हमको पित्त के भेद देखने होंगे तो केवल मिडिल फिंगर हम उसके स्थान पर रखते हैं और फिर बाकी उंगलियों को हम हवा में ऊपर उठा लेते हैं। ऐसे हम रिंग फिंगर को केवल रिंग फिंगर को ही रखते हैं। दरअसल हुआ ऐसा कि शुरू में जब मैंने तीनों उंगलियों को एक साथ रख के तैयार अभ्यास शुरू किया
तो मैं तो कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा इसमें तो मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा कि स्पंदन कहाँ मिल रहा है। तो मैंने कहा ट्राई करते हैं, एक एक उंगली को रख के देखते हैं, शायद कुछ समझ में आए। तो ये तरीका सफल रहा और ये इससे मुझे बहुत हेल्प मिली। जैसे कि आप देखिए कि अगर आपको वात के भेदों को देखना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स फिंगर को रखना होगा। अब इसमें कितना प्रेस करना है, एक प्रश्न ये आता है। तो अगर हमको भेदों को देखना है तो ये मान के चलिए कि जो आर्टरी की मोटाई होती है, यानी कि अगर हमने ऊपर टच किया, जहां से आपको पल्स मिलना शुरू हुआ, फिर आपने इतना दबा दिया कि पल्स मिलना बंद हो गया, तो आप एक आर्टरी की मोटाई का अनुमान लगा लेते हैं। तो जो मिडिल पॉइंट होता है, उसका जो मिडिल लेवल होता है, उसके जस्ट ऊपर आपको ये जो वात पित्त कफ के भेद हैं, ये 5-5 भेद, ये उस लेवल पे आपको मिलने लगते हैं। ठीक है, जैसे मिडिल फिंगर रखेंगे, आपको पित्त के 5 भेदों को देखेंगे, और ऐसे ही आप रिंग फिंगर, केवल और केवल रिंग फिंगर और कफ के भेद हैं, आप देख सकते हैं। अब नाड़ी के बल की जब बात करते हैं, तो जो नाड़ी का बल है वो हम कैसे महसूस करते हैं? बल सिंपल, नाड़ी में कितनी क्लैरिटी है, यानी कि उलझाव नहीं है, आपको स्पष्टता के साथ वो बिना किसी उलझाव के वो आपको क्लैरिटी के साथ बताती है और बहुत आसानी से मिल जाती है। उसको हम बोलते हैं नाड़ी का बल अच्छा है। इजी फाइंडिंग एंड क्लैरिटी, ये बेटर होगी, उसको हम बोलेंगे उत्तम बल। मध्यम होगी, मध्यम बल। और अगर ये बहुत कम मिलेगी तो उसको हम हीन बल बोलेंगे। अच्छा, इसका फायदा क्या है? जो मैंने अनुभव किया कि जब नाड़ी का बल उत्तम होता है तो वो रोग भी अधिक लक्षणों के साथ में शरीर के अंदर उपस्थित होता है। इसी प्रकार मध्यम बल है तो रोग का बल भी मध्यम रहता है, हीन बल है तो रोग का बल भी हीन रहता है। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली है, वो ये है कि हम देखते हैं कि हर व्यक्ति की नाड़ी स्वस्थ अवस्था में भी एक जैसा बल नहीं लगाती। किसी की नाड़ी का बल कम रहता है, किसी की नाड़ी का बल ज्यादा रहता है। तो इंडिविजुअल आपने किसी एक व्यक्ति की नाड़ी बार बार देखी है तो आपको उस व्यक्ति की नाड़ी के बल का अनुमान हो जाता है। फिर आपको जब उस व्यक्ति को कोई रोग होता है तब आप उसकी बल का रोग के बल का अनुमान नाड़ी देख करके लगा पाते हैं। ये चीज थोड़ा अभ्यास मांगेगी, लेकिन अभ्यास से सब कुछ संभव है। अगर मैं कर सकता हूं तो आप सब कर सकते हो। ये एक मेरे जिन्होंने गूगल पर मुझे अपना वो लिखा हुआ है, इनकी नाड़ी में देख करके मैंने कहा था कि भाई आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, 6.7 तक के आसपास बढ़ा होगा। उन्होंने जांच करे तो उतना ही निकला। तो आप लग जाते हैं कि जो लेबोरेटरी फाइंडिंग्स हैं वो लगभग लगभग कहाँ तक होंगे, आपको इसका अनुमान भी लगने लग जाता है। ऐसा नहीं, और हाँ, लेकिन ये मैंने अभी भी आपको बताया कि चूंकि ये वो पेशेंट है जिनकी नाड़ी में देखता रहता हूँ, तो इनकी नाड़ी के बल का मुझे अनुमान है। ठीक, तो इनके नाड़ी के स्वाभाविक बल का मुझे अनुमान था। अब रोग के हिसाब से फिर मैंने देखा तो नाड़ी का बल काफी ज्यादा बढ़ गया था। उस हिसाब से मैंने एक अनुमान लगाया कि लगभग लगभग इतना बढ़ा हुआ होगा। यानी कि अगर ये मेरे पास फर्स्ट टाइम आते तो मैं इनको नहीं बता पाता कि आपका यूरिक एसिड लगभग लगभग कितना होगा, क्योंकि इनकी नाड़ी के स्वाभाविक बल का मुझे अनुमान ही नहीं होता। तो ये बात यहाँ ध्यान देने की है। एक अनुभव लिखा हुआ देखिएगा। अब पल्सेशन पॉइंट्स ऑफ त्रिदोषास एंड देयर भेदास, ये अब आप देखेंगे सिंपल उंगलियां हैं, मिडल फिंगर। ये जो आप चित्र देख रहे होंगे, ये जो मेरा रिसर्च आर्टिकल है उसका ये फाइनल रिजल्ट है। आप देख रहे होंगे कि वात पित्त और कफ के जो 5-5 भेद हैं वो किस क्रम से मिलते हैं। यानी कि वात में आप देखेंगे तो सबसे ऊपर प्राण मिलता है। सबसे ऊपर का मतलब, जब ये उंगलियों को हम कलाई पर रखते हैं तो जो इंडेक्स फिंगर का जो हिस्सा रोगी के थंब की तरफ रहता है, उस तरफ सबसे पहले आपको प्राण मिलता है। फिर उसी क्रम से नीचे तक बाकी आपको भेद मिलते हैं। अब ये मैंने कैसे इनका स्थान तय किया, क्योंकि मुझे कोई गुरु नहीं मिला है। अच्छा, तो मुझे इसमें बड़ी दिक्कत हुई, मुझे इसमें 1.5 साल का समय लगा लगभग।
और मैंने इसमें क्या किया कि सबसे पहले, चूंकि आप सामने देख सकते हैं कि तीनों दोषों के 5-5 भेद होते हैं, तो मैंने बाई चांस ऐसा हुआ कि मेरे पास हृदय रोग के कई रोगी ऐसे आए जिनको, जहाँ पे आप बाद में प्राण का लेवल देख रहे होंगे, बिंदु देख रहे होंगे, टॉप लेवल, टॉप पे, उसमें जो है उस जगह पर मुझे स्पंदन मिलता था। तो मैंने सोचा कि ऐसे बार बार मेरे पास हृदय रोगी आए हैं और उनमें इसी जगह पे स्पंदन मिलता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये प्राण का बिंदु होगा। फिर मैंने एक बार फिर से स्टडी किया और देखा कि प्राण कहाँ कहाँ होता है। ऐसे ही जो वात पित्त कफ के 15 भेद हैं, इनके स्थानों को ध्यान से देखा। तो प्राण के लिए अभी एग्जाम्पल के रूप में कहें तो प्राण के भेद, जो प्राण है ये मस्तिष्क में है, फुफ्फुस में है और आपके हृदय में रहता है। तो मैंने देखा कि जब इन अंगों से जुड़े हुए रोगों से पीड़ित कोई रोगी मेरे पास आते हैं तो मुझे वहां पर प्राण पे स्पंदन मिलता है। तो फिर मैंने तय किया कि ऐसे कैसे मान लें कि यहीं पे प्राण है। तो फिर मैंने 5-5 के खाके बनाए खाली खाली, और मैंने कहा कि अब देखते हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन मिलता है। फिर मैंने देखा कि जो कंठ रोग है, कंठगत रोग है, वो जहां पर उदान वायु का स्पंदन मिल रहा है, यहाँ उनका स्पंदन मिलता है मुझे, तो मैंने यहाँ पर उसको मान लिया। ऐसे ही जो जितने सारे भेद हैं, इन सबको मैंने डिसाइड किया कि इनके बिंदु यहाँ पर जो मैंने फील किया उनको मैंने लिखा। अच्छा, एक एक बिंदु के लिए मैंने तय किया था कि लगभग 20 पेशेंट मेरे पास आ जाएंगे जिनको सेम जगह पे सेम प्रॉब्लम्स में मिलेगा, तभी मैं इसको कंफर्म करूंगा कि हाँ भाई ये प्राण का है, ये उदान का बिंदु होगा, ये समान का बिंदु होगा, ऐसे करके। इसलिए इस पर आप पूरा भरोसा कर सकते हैं, यानी कि हर बिंदु के लिए मैंने 20 पेशेंट को जब तक कंफर्म नहीं कर लिया तब तक मैंने इसको फाइनल नहीं किया है। ठीक है, तो इसको आप बिल्कुल आप भरोसा कर सकते हैं, मेरा रिसर्च आर्टिकल है, पब्लिश हो चुका है। अच्छा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये इंडेक्स फिंगर है। इंडेक्स फिंगर में सबसे ऊपर का जो बिंदु होता है इसे हम प्राण कहते हैं। तो प्राण, जैसे मैंने आपको बताया कि जो हृदय रोग से पीड़ित रोगी मेरे पास आए, फेफड़ों के रोगों से या मस्तिष्क रोगों से, वो उनमें स्पंदन यहाँ पर मिला। अच्छा, अब एक सवाल आता है, किसी ने पूछा कि भाई ये जब हमारे पास वो रोगी आएंगे तभी हम उनका स्पंदन देख पाएंगे क्या, कि भाई P1 कहाँ, V1 कहाँ मिलता है, प्राण कहाँ मिलता है? नहीं, ऐसा नहीं है। आप दौड़ करके आइए, दौड़ लगा करके, उस समय आपकी प्राणवायु बढ़ी हुई होती है। आप उस समय अगर आप स्पंदन चेक करेंगे तो आपको इसी बिंदु पे स्पंदन मिलेगा। इसलिए आपको इसके लिए रोगी की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, इसका अनुभव आप वैसे भी कर सकते हैं। उसके बाद ये नंबर 2 पर आता है उदान वायु। जो थायराइड के रोग होते हैं उनमें यहाँ पर स्पंदन मिल जाता है। फिर बिल्कुल बीचों बीच में जो जगह है वो समान वायु की है। आप खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद में समान वायु एक्टिव हो जाता है, तो भोजन के बाद में आप 3-4 चुस्की चाय की ले लीजिए, आपको यहाँ स्पंदन मिलना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि हम रोगियों की प्रतीक्षा करेंगे। अगर आपको अनुभव करने का मन है तो आप आहार से या अपने दैनिक दिनचर्या से भी इसको इन चीजों को देख सकते हैं। फिर ये जो चौथे नंबर पर है ये व्यान वायु है। व्यान सर्व शरीर चरण। तो जो पंचधा चेष्टा बताई गई हैं, उन्मन विनमन आकुंचन प्रसारण तयक गमनानि च, तो ये 5 जो गतियां हैं ये हमारे शरीर में लगभग चलती रहती है। जैसे हृदय है, हृदय व्यान वायु से है, तो हृदय लगातार अपना काम करता रहता है। तो जो स्वस्थ शरीर है और पेट में भोजन या मल नहीं है तो आपको व्यान वायु स्पष्ट रूप से यहाँ पर मिलने लग जाएगी। आप सुबह उठ करके और शौच के बाद में जब आप देखेंगे तब आपको ये V4 ये यहाँ पर आपको स्पंदन मिलेगा। सबसे जो सबसे निचला हिस्सा है वहां पर आपको अपान वायु मिलती है। इसको देखना भी बहुत आसान है। आप प्रातः काल उठें और आप शौच जाने से पहले ही अगर आप अपनी नाड़ी देखते हैं तो आपको अपान यानी कि जो बिंदु मैंने बताया है इस तरफ आपको स्पंदन मिलेगा।
अच्छा, कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि अपान और व्यान इतने पास पास बिंदु हैं, क्या हम इन दोनों में अंतर कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, बहुत आसान है। आप सवेरे उठिए, आपको V5 मिलेगा, और आप फ्रेश होकर के आइए, आपको V4 मिलेगा। आप रोज चाहे तो रोज एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और आपको अनुभव, देखो अनुभव तो करने से होता है, ये मैं तो बता रहा हूं, पर अनुभव आपको करने से ही मिलेगा। तो इस प्रकार से मैं सफर में बहुत टीम कर रहा हूँ, लेकिन हर एक बिंदु के लिए मैंने 20 पेशेंट दिए हैं, तभी मैं को मिलेगा। आप मिड की बात करते हैं तो इसी तरीके से जो टॉप लेवल है आपका, वो टॉप लेवल, सॉरी लेवल में शब्द ठीक नहीं कह रहा हूँ, सबसे ऊपर का बिंदु का है, बाद पित्त, फिर बीच में आपका पाचक पित्त, क्रम आपका आलोचक। बिंदु के लिए 20 पेशेंट कम से कम देखे गए हैं, और ये तो शुरुआत के 1.5 साल में रहा है, उसके बाद तो बहुत पेशेंट है। अब रिंग फिंगर की करेंगे तो सबसे ऊपर आपको लंबक कफ। अब आप इनके जो ये भेद हैं, इनके स्थानों को अगर आप ठीक से जानते होंगे, पढ़ेंगे, तो आपको बिल्कुल ठीक पता लग जाएगा कि आपको कहाँ कहाँ मिलने वाले हैं, और वहीं वहीं मिलते भी हैं। बिल्कुल लेदर कफ मिलता है, और चौथे नंबर पर श्लेष्म, और लास्ट में आकर मिलता है तर्क कफ। अब मैं, ये तो इन नटशेल रहा। अब जब यहाँ तक मैं पहुंच गया कि भाई वात पित्त कफ के ये जो भेद होते हैं वो मुझे इस प्रकार से मिलते हैं, तो अब जिज्ञासा यहाँ शांत नहीं हुई। हमने कहा यार ये तो चलो भेद तो मिल गए, लेकिन हमारा लक्ष्य था रोगों को पकड़ना, रोग तक हम कैसे पहुंचेंगे? तो फिर आगे बढ़े, मैंने कहा चलो ये काम तो हो गया, अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे बढ़ करके मैंने जो अलग अलग बीमारियों के रोगी मेरे पास आते थे, उनमें इन तीनों में क्या पैटर्न मिलता था। यानी कि मान लीजिए मेरे पास मधुमेह का रोगी आ गया, तो उसमें वात का कौन सा भेद चलेगा, पित्त का कौन सा भेद चलेगा, कफ का कौन सा भेद चलेगा। ऐसे करके मैंने एक लिस्ट बनाना शुरू किया, क्योंकि हर पेशेंट की नाड़ी देखनी थी। तो इसलिए जब मैंने देखा, तो ये मैंने पाया कि हर बीमारी का अपना एक अलग पैटर्न है, हर बीमारी का। जैसे एक सिंपल सी हम बात करते हैं अवॉटो विकार की, हाइपोथायराइडिज्म। जब आप तीनों उंगलियों को एक साथ टच कराएंगे कलाई पर, यानी कि तब तक उसको दबाएंगे जब तक आपको टॉप लेवल मिलना ना शुरू हो जाए, तो आपको उसमें आपको कफ दोष मिल सकता है, कभी कभी वायु दोष भी मिल सकता है। लेकिन जो दोष के भेद जब आप एक एक उंगली अलग अलग रख करके चेक करेंगे, तो V2 P0 K0 मिलेगा। V2 माने प्राण के बाद उदान वायु। नंबर 2 पर आपको जहां पे पॉइंट है वहां पर स्पंदन मिलेगा वात की उंगली में, और जब अब आप केवल आप पित्त की उंगली रखेंगे तो आपको इसमें स्पंदन नहीं मिलेगा, कफ की उंगली में स्पंदन नहीं मिलेगा। तो ये पेशेंट बहुत आते हैं इस तरीके के, तो ये नाड़ी भी अपने आप में सिद्ध हो जाती है। कुछ इस तरीके का मिलेगा। देखिए यहाँ तीनों उंगलियां एक साथ हैं, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, एक एक उंगली को एक एक बार में ही रखा गया है, ठीक है। जब हमने केवल इंडेक्स रखी तो V2 मिला, और P और K में मुझे कुछ भी नहीं मिलता उसमें। अब संधिवात, जो सबसे ज्यादा रोगी हमारे पास आजकल आते हैं, वो संधिवात के बहुत रोगी आते हैं। इसमें जब प्रधान दोष आप देखेंगे, ये प्रधान दोष, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, इसे संभवतः अब तक पहले के जो वक्ता रहे होंगे उन्होंने इसको विकृति का लेवल या ऐसा कहा होगा, तो बिल्कुल ठीक वही चीज है, कोई इसमें अंतर नहीं है। प्रधान दोष माने सबसे टॉप लेवल जो है, तो टॉप लेवल में आपको वायु मिलती है। फिर जब एक एक उंगली को पृथक पृथक रखते हैं तो आपको V4 P4 K4 ये मिलता है। देखिए मैंने आपको पहले बताया जो वात के 5 भेद, उनको मैंने ऊपर से नीचे तक V1 V2 P3 इस तरीके से, ऐसे K और V, तो क्रम से V1 to V5 सब इस तरीके से नाम रख दिए उनके, क्योंकि बार बार मैं प्राण उदान समान बोलूंगा तो कंफ्यूजन हो जाता है स्थान। इससे V1 V2 P3 इस तरीके से बोलने से क्या होता है कि हमें लोकेशन एकदम दिमाग में ध्यान आती है कि भाई अच्छा स्पंदन वहां पर मिलेगा, इसलिए यहाँ पर भेदों का नाम ना लिख करके उनका लोकेशन जो पॉइंट है उस तरीके से सिंबॉलिक रूप उसको मैंने लिखा है, तो ये मिलता है। अच्छा, अब इसमें बड़े मजे की बात ये है
कि जो ये दोषों का भेद है, यानी कि एक एक, मैं बार बार इसको दोहरा इसलिए रहा हूँ क्योंकि कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि तीनों उंगलियों को एक साथ रख देते हैं। नहीं, एक एक उंगली को पृथक पृथक रख करके ही आप वात पित्त कफ के जो 15 भेद हैं उनको आप देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज और स्पष्ट कर दूं, कई बार हम लोग घबरा जाते हैं कि यार मैं आपको छोटी सी अपनी कहानी सुना देता हूँ। जब ये बात है, जब मैं गुरुकुल में पढ़ रहा था हरिद्वार में, तब जामनगर से कोई मैम आई थी, मैं उनको जानता नहीं था, और वो हमारे जो प्रिंसिपल मैडम थी उनके साथ गाड़ी में बैठने जा रही थी, पर हम लोगों की थोड़ा सा सवाल पूछने की आदत थी, जो भी मिलता था सवाल कुछ ना कुछ पूछ ही लेते थे। तो उनके बैठते बैठते मैंने पूछ लिया कि मैडम नाड़ी कैसे देखते हैं। हालांकि उस समय उस प्रश्न का कोई मतलब नहीं था, वो बैठ रही थी, पर फिर भी उन्होंने ये कहा कि वात पित्त कफ 3 उंगलियां होती हैं, सब में 5-5 भेद जो उनके होते हैं उनको भी देखे जाते हैं। ऐसे करके वो बैठ के चली गई। उस टाइम मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं भाई, ये तो बड़ा कठिन काम है, ये मैं नहीं कर सकता। ये एक उंगली में मैं एक भेद, मतलब वात पित्त कफ देखना मुश्किल हो रहा है, 5-5 भेद कैसे देखेंगे। तो मैंने वहीं पर आइडिया को ड्रॉप कर दिया। उसके बाद जब मैं बाहर निकला कॉलेज से पढ़ करके, जब मुझे दिक्कत हुई कि भाई मैं अच्छी तरीके से लोगों का इलाज नहीं कर पा रहा हूँ, तब मैंने इस काम को शुरू किया और आखिरकार मैं यहाँ तक पहुंचा। अब इसमें मुझे उस समय डर क्यों गया था, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। मुझे ये लगा था कि एक उंगली में एक बार रखेंगे तो शायद 5 भेद दिखाई पड़ते होंगे, पर ऐसा नहीं है बिल्कुल। आप एक उंगली को एक बार रखेंगे तो 5 भेदों में से कोई ना कोई सिर्फ और सिर्फ एक भेद ही आपको मिलेगा। कोई कंफ्यूजन वाली स्थिति है ही नहीं। बहुत आसान है, बहुत आसान है। बस मन से इस भय को निकाल, मैं अगर मन से उस भय को मैंने पहले निकाल दिया होता तो ये काम मैं काफी पहले कर लेता। होता क्या है कि नाड़ी की बात आती है तो बड़ा रहस्यपूर्ण है, ये तो हमारे बस का नहीं है, हम तो खाली ठीक है, हम जो कर रहे हैं वही ठीक है, हम इन्वेस्टिगेशन करवा लेंगे, दवाई दे देंगे, हमको तो आता है ये, हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, डर जाते हैं। जबकि ये बहुत आसान है, सिर्फ इस डर को मन से निकालना है। और अगर मेरे जैसा व्यक्ति कर सकता है जिसके पास कोई गुरु नहीं हमको मिला, तो आपको बताने के लिए तो इतने सारे गुरु आज यहाँ पर मौजूद हैं। इसलिए आप बिल्कुल इस तरीके से निश्चिंत रहिएगा। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो ये संधिवात में हमको ये पैटर्न तीनों उंगलियों में अलग अलग मिलता है। मैं एक बार फिर से कहूंगा कि ये तीनों उंगलियों का चित्र एक साथ जरूर है, लेकिन इन तीनों उंगलियों को पृथक पृथक रखा गया है, तब ये भेद मिले हैं हमको। अब मजे की बात आप देखिएगा, ये है वात रक्त। वात रक्त में जब आप टॉप लेवल देखेंगे, यानी विकृत दोष देखेंगे, तो आपको पित्त मिलेगा। जब दोषों के भेदों पर जाएंगे तो वही P4, P4, K4 यही तीनों मिलते हैं आपको। पैटर्न जो आपको संधिवात में मिलता है, बस जो दोष की प्रधानता है, यानी कि विकृत दोष है, वहां पर वात है, यहाँ पर रक्त है, यहाँ पर पित्त दोष है। ऐसे ही आम वात की बात करते हैं। आम वात में, हालांकि आम वात की नाड़ी हर बार एक आइडियली नहीं चलती है, कभी कैसे चलती है कभी कैसे चलती है, उसको एकदम निश्चित करना मुश्किल होता है, उसको काफी अनुभव की जरूरत पड़ती है। मुख्य रूप से वो बहुत मंद चलती है नाड़ी, इसलिए उसकी मंदता को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। तो प्रधान दोष उसमें इसमें कफ लिख रखा, पर कई बार आपको वात भी मिल जाता है, लेकिन वो मंद बहुत मिलेगा। लेकिन भेद की बात करेंगे तो V4, P4, K4 तीनों में एक जैसे रहेंगे। तो ये बहुत कॉमन बीमारियां जो हमारे क्लास आती हैं चिकित्सालय में, यानी कि आप देख रहे हैं कि जो भेद है वो तीनों में एक जैसा ही मिल रहा है। अब मधुमेह की बात करते हैं। मधुमेह के रोगी बहुत आते हैं, और आप देखेंगे तो जो मधुमेह में आमतौर पर जो प्रधान दोष या विकृत दोष मिलता है, वात दोष मिलता है, ये बहुत कॉमन है। लेकिन जब आप दोषों के भेद को आप नाड़ी देखने के लिए उंगलियों को रखेंगे, और जब आप केवल वात की नाड़ी रखेंगे, तब आप ये महसूस करेंगे कि जो प्राण वायु है वो उदान वायु की दिशा में आगे बढ़ रही है, बार बार आगे बढ़ रही है, बिजली की तरह एकदम आगे बढ़ती है बार बार। ये एक खास चीज मिलती है। बाकी P3, K4 ये एक कॉमन पैटर्न मिलता है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें बात है, वो वात उनकी उंगली में प्राण वायु का उदान वायु की तरफ बढ़ना। ठीक है, इसे आप उदान वायु की तरफ कह सकते हैं, या प्राण वायु से आगे की तरफ बढ़ना भी ऐसे बोल सकते हैं। अब ये चीज मैंने इसमें तीर बना करके बना रखी है, लेकिन ये तो नाड़ी तो जो है ना, ये अनुभव करने की चीज है। आप पेशेंट
वो देखिए, आपके पास मधुमेह के रोगी आते हैं, उनको देखिए और ये पैटर्न आपको फील हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ी मजेदार बात मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले इसका आप चित्र देख लीजिए। कुछ इस तरीके से पैटर्न मिलता है बात की उंगली में और पित्त और कफ में। यहाँ पर मैं आपको एक बड़ी ही मजेदार बात बता रहा हूँ। अच्छा, जैसे कोई पेशेंट है, वो आपके पास आया है और वो कहता है कि उसको डायबिटीज है, मधुमेह है। आपने नाड़ी चेक की, आपने ये पैटर्न आपको नहीं मिला। शुरुआत में मेरे साथ ऐसा हुआ, तो बाद में पता चला कि अगर किसी का शुगर है पर उसको कंट्रोल रहता है, दवाई एलोपैथी की जो भी खाता है उससे नियंत्रित रहता है, तो उसको ये पैटर्न नहीं मिलेगा, उसको नॉर्मल पैटर्न मिलेगा, है ना। ऐसे ही अगर किसी का थायराइड नॉर्मल रहता है दवाई खा करके, तो आपको थायराइड का पैटर्न नहीं मिलेगा। ओके, तो जो भी व्याधि है, यदि वो व्याधि शरीर की फिजियोलॉजी में कुछ परिवर्तन कर पा रही है, व्यक्ति को कुछ परेशान कर पा रही है, तो उसकी नाड़ी मिलेगी। अगर वो नियंत्रित हो गई है तो उसकी नाड़ी नहीं मिलेगी। ये एक बहुत अच्छी बात है कि नहीं मिलती। मतलब क्या हुआ, आपके पास कोई पेशेंट आया, आपने डायग्नोस किया कि हाँ भाई मधुमेह है तुम्हें, आपने उसका चिकित्सा शुरू की, तो जैसे आपको ये पैटर्न गायब मिलेगा तब आपको समझना होगा कि हाँ, अब मेरी दवाई ने अपना प्रॉपर काम शुरू कर दिया है और ये रोगी अब इसका शुगर जो है नियंत्रित है। तो इस तरीके से ये देखने के लिए कि हमारी दवाई का कितना असर हुआ है, ये पैटर्न गायब होता है या हल्का मिलने लग जाता है, तो आप समझ लेते हैं कि रोग में कितना आराम आ रहा है। ओके, अब ये हाई ब्लड प्रेशर यानी कि जिसको हम रक्तगतवात बोलते हैं, सो उसकी नाड़ी है, प्रधान दोष वात मिलता है, दोष भेद 2, 4, 5 इस तरीके से मिलता है। अब अष्ठीला की बात करते हैं, बीपीएच। तो प्रधान दोष आप देखेंगे तो इसमें आपको पित्त और कफ दोनों मिलेंगे, और दोष भेदों पर जाएंगे तो V5, P4, K4 ये पैटर्न आपको मिलता है। और एक अभी मेरे अनुभव में आया है, देखिए वैसे तो मैं इसमें आपको सिर्फ वही जानकारियां दे रहा हूं जो लगभग कम से कम मिनिमम 20 लोगों पर मैंने इसको सही सही पाया है, ठीक है। फिर भी यहाँ पर मैं एक चीज आपको बता दूं, महिलाओं में जो पीसीओडी की प्रॉब्लम लोग के पेशेंट आते हैं, उनमें भी जो नाड़ी अभी तक मुझे मिली है 3 लोगों में सिर्फ मिली, इसलिए मैं अभी इसको एक सिद्धांत मान करके नहीं चल रहा हूँ। परंतु यहाँ सुनने वाले बहुत से महिला चिकित्सक भी होंगे, डॉक्टर साहब भी हैं, तो प्लीज आप भी इसको देखिएगा कि ये पैटर्न क्या पीसीओडी में भी मिलता है, क्योंकि अभी तक मेरे पास 3 से 4 रोगी ऐसे हैं मिला हुआ है रोग, ये पैटर्न आप इसको देख सकते हैं। ये पैटर्न मिलता है 5 जिसको हम लोग और शॉर्ट करके 544 बोल देते हैं। तो प्रधान दोष पित्त कफ, और जब भेद की बात आती है तो V5, जब पित्त की उंगली रखेंगे बीच वाले तो P4, जब केवल कफ की उंगली रखेंगे तो K4, ये पैटर्न मिलता है उसमें। अब ये गृदृषि की बात करते हैं। ये गृदृषि का पैटर्न है जो टॉप लेवल में आपको आम तौर पर बात मिलता है, समटाइम्स कभी कभी पित्त मिल जाता है। और जो दोष भेद मिलेगा 1, 3, 3 आप देख सकते हैं, ये पैटर्न मिलता है उसमें। श्वास में, श्वास है इस तरीके से जो अलग अलग परिस्थितियां हमारे क्लिनिक में आती हैं, तो उनको हम देख सकते हैं, तो ये पैटर्न मिलते हैं। ऐसे ही कास में है, तो कास में जो ये आप ध्यान से देखा होगा आपने, तो मैं वापस करता हूँ। श्वास में देखिएगा तो V मिल रहा है, जो कि संबंधित है फुफ्फुस से संबंधित है, तो प्राणवायु। और जब हम कास में आते हैं तो V2 मिलता है, यानी कि उदान वायु। तो इस तरीके से बहुत स्पेसिफिक है, बहुत ही सटीक है, आप इसको करिए, इसका आनंद लीजिए। ऐसे ही अम्ल पित्त, अगर किसी को बहुत जबरदस्त पित्त बन रहा है, अम्ल पित्त है, तो प्रधान दोष आपको पित्त मिल जाएगा, यानी कि टॉप लेवल जिसे आप विकृति का लेवल कहते हैं, वहां पित्त मिल जाएगा। और दोष के भेदों पे जाएंगे तो V3, P3, K3 ये आपको मिल जाएगा। अच्छा, ये V3, P3, K3 क्या है? V3 माने समान वायु, P3 माने पाचक पित्त, K3 माने क्लेदक कफ। यानी कि लगभग आमाशय में जो ये तीनों मिलते हैं, चाय पीते ही ये तीनों के तीनों एक्टिवेट हो जाते हैं। प्रवाहिका,
प्रवाहिका में आपको ये पैटर्न मिलता है। प्रधान दोष वात या पित्त और दोष भेद की बात करेंगे तो 222 ये पैटर्न आपको मिलता है। अच्छा, कृमि रोग की बात करेंगे। कृमि रोग में बिल्कुल जो ये पैटर्न आपको दिख रहा है, बेबी पैटर्न दिख रहा है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि कोई रस्सी किसी ने बांध रखी है एक तरफ से और खूब जोर जोर से ऊपर नीचे कर रहा है। तो ऐसे ही आपको लहरें सी आपको अपनी फिंगर में, मिडिल फिंगर में या कई बार तीनों फिंगर में एक साथ भी मिलने लग जाती है। ये कृमि रोग एकदम अपना अलग ही पैटर्न दिखाता है। मैं आपको यहाँ बताऊंगा, एक मेरे पास पेशेंट आई थी, वो एक लक्षण बताती थी कि डॉक्टर साहब मेरे जो है सीने में लगता है कि बिजली चमक रही है। अब मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था कि मैं अनुमान कर सकूं कि इसको क्या दिक्कत हो रही है। उसका उसने अपना ईसीजी करा रखा था, डीएमटी को सब करा रखा था। अब मैं समझ नहीं पा रहा था कि इसे क्या है। नाड़ी पे हाथ रखा तो ये कृमि का पैटर्न मिला, तो मैंने उसको कृमि का ही उपचार दे दिया। आई थी बोल करके कि भाई मेरे सीने में बिजली चमकती है, और उसको मैंने कृमि का उपचार दे दिया और वो एकदम ठीक हो गई। बड़े बड़े अस्पतालों में दुनिया भर में दिखा दिखा के मेरे पास फाइनली लोग आते हैं आयुर्वेद में हमारे यहाँ। तो उत्तर भारत में तो ऐसी ही स्थिति है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको अब बहुत ध्यान रखने की बात है। अच्छा, नाड़ी पर अभी क्या हुआ कि जब लॉकडाउन लगा तो मेरी तो नाड़ी देखने की आदत पड़ गई थी। लॉकडाउन में 1 महीना तो घर पे रहे, क्या करें क्या करें। 1 महीने के बाद तो मैंने प्रैक्टिस शुरू कर दी दोबारा से, और हालांकि कोविड था पर नाड़ी में देखता ही गया, फर्स्ट वेव सेकेंड वेव दोनों में। बस शुरू में 1 महीना मैं नाड़ी पे घर पे ही रहा जब लॉकडाउन लगा था। तो जब घर पर रहे तो लगा कि यार अब तो नाड़ी देख रहे हैं, ऐसा ना हो कि भूल भाल जाए, कोई प्रैक्टिस तो हो नहीं पा रही है। तो किसकी नाड़ी देखें, को खुद की नाड़ी देखी, पत्नी की नाड़ी देखी, बालक की नाड़ी देखी। तो ये एहसास हुआ कि यार ये काम तो हमको सबसे पहले करना चाहिए था, ये काम तो हमको सबसे पहले करना चाहिए था। तो खैर, इसके बाद जो मुझे पता लगा वो बड़ा ही आश्चर्यजनक था। उसको मैं अभी बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, एक साथ बहुत बताना थोड़ा सा भी मुश्किल होगा। लेकिन कुछ फूड आइटम्स की नाड़ी मैंने ये सिंपल एक पेज में इसको डाल के रखी है। पानी की, चाय की, दूध की, इन दालों की नाड़ी आपको कैसे मिलेगी। अच्छा, जो ये दालों की नाड़ी है, अलग अलग दाल, उड़द की दाल, मूंग की दाल, तुअर की दाल, मसूर की दाल, ये नाड़ियां आपको 45 मिनट्स के अराउंड, माने 1 मुहूर्त तक आपको ये मिलती है नाड़ियां। जैसे किसी ने आहार लिया है तो आहार की नाड़ी आमतौर पर 1 मुहूर्त तक उसकी कि क्या खाया है मिल जाती है। पर हर आहार की नाड़ी है ऐसा भी नहीं है। जैसे कि दूध है, कोई दूध पीता है तो शरीर उसको ऐसे एक्सेप्ट कर लेता है जैसे कि कुछ उस व्यक्ति ने खाया ही नहीं है, कोई चेंज बॉडी में नहीं आता, जैसे कि शरीर की कोई अपनी ही चीज ले ली हो व्यक्ति ने। इसलिए ना दूध में कोई चेंज नहीं मिलता है। तो ये कुछ फूड आइटम्स की नाड़ी है। मैं आपको बताऊं, एक बार मैं एक जगह मेरा व्याख्यान था, तो मंच पर मैंने 2 लोगों को बुलाया, तो डॉक्टर्स को, और उनको मंच पे पीछे की तरफ डाल दिया और बोला कि भाई एक आदमी चाय पी लो, एक आदमी पानी पी लो, फिर आगे मेरे पास आ जाना। वहां पर मैंने नाड़ी देखी और किसने चाय पिया है, किसने दूध पिया है, वो मैंने वहां बताया। बताने का उद्देश्य ये नहीं था कि मुझे कोई विद्या का प्रदर्शन करना था, लेकिन हाँ, नाड़ी परीक्षण की हाइट कहाँ तक जा सकती है इसको हमको अंदाजा जरूर होना चाहिए, हमें इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए मैंने खाली वो प्रदर्शन किया था। खैर, तो लेकिन ये बहुत अच्छा लगता है कि भाई आहार की नाड़ी हमें जान ली है, लेकिन लक्ष्य आहार की नाड़ी जानना नहीं होना चाहिए, लक्ष्य हमें रोग की तरफ जानना ही होना चाहिए। सो ओम श्री धर्मंतरे नमः, इदम न मम, सब उन्हीं का है। तो आपका धन्यवाद। अब मैं शेयरिंग बंद करता हूँ। ओके, तो ये एक विषय जो मैंने आप सबके समक्ष रखा हुआ है, मैं आशा करता हूँ कि इसमें कुछ न कुछ आपको महत्वपूर्ण अपने लायक अवश्य मिला होगा। और अब मैं अपेक्षा करता हूँ कि जो भी आपके मन में प्रश्न होंगे उन्हें आप जरूर पूछिएगा। तो प्लीज शिल्पा जी, अब आप
संभालिए स्टेज को। शिल्पा जी। धन्यवाद अर्चना जी। Yes, sir. Thank you very much. Thank you. यस Yeah. जी। Any questions, doctors? Please. धन्यवाद रामनाथ जी। नरेश कुमार जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ सर, कुछ क्वेश्चन चाहते हैं तो पूछना, डायरेक्ट अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं, लिखने की आवश्यकता नहीं, लिखने में बहुत समय लग जाता है। यस यस सर, उनको ऑप्शन दे दीजिएगा जोशी सर। जी 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 जी। प्रणाम बॉस। देखिए अनम्यूट करिए मित्तल साहब। जी जी हाँ, प्रणाम प्रणाम प्रधान जी। सर जैसे अपने शब्दों में बताया गया प्राण, उदान, व्यान, समान, अपान, तो सर थोड़ी सी इसकी क्षमता में जैसे आपने बताया, मतलब व्यान वो 4 नंबर पे लिया, तो सर जो हमने सीखा है ना, जो PUVS, PRBS, KASBT, तो सर क्या वो क्रम सही है या सर इसको भी लेके साथ चले? हाँ देखिए, बहुत अच्छा ये आपने जो प्रश्न किया मित्तल जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें होता क्या है कि हम जो अलग अलग परंपराएं हैं उनमें हम जो प्रेशर कितने लेवल का दे रहे हैं उसके हिसाब से थोड़ा चेंज आ जाता है। तो आपने जो अभ्यास किया है उसको ही आप आगे बढ़ाइए। जो देखो, जिस अभ्यास में हाथ सिद्ध हो जाए उसमें आप चेंज बिल्कुल मत करिए। कुछ आपको ऐड करना हो, कुछ आपको अच्छा लगा हो तो वो आप जरूर इस्तेमाल करिए उसको, लेकिन जो सिद्ध हो गया उसको। मैं आपको बताऊं कि मैं जब सीख रहा था, अपने से सीख रहा था, तो किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि डॉक्टर बसंत लाड सर की पुस्तक है, उसको आप मंगवाइए। मैंने उसको मंगवाया, लेकिन जब भेदों की बात आई तो मुझे समझ में आया कि जो वाक्य के भेद है वो सर का पैटर्न तो मेरे पैटर्न से एकदम अलग है। मैंने सर की पुस्तक को वहीं पर बंद कर दिया। मैंने कहा पहले जो मैं खुद कर रहा हूँ, क्योंकि डॉक्टर बसंत लाड जी मेरे सामने है नहीं, उनके पास जाना मेरे बस की बात नहीं है, तो मैं उनसे पूछ भी नहीं सकता, तो कम से कम जो मैं खुद परसेप्शन कर रहा हूँ मुझे उस पर आगे बढ़ना चाहिए। तो पहले मैंने उसको पक्का किया, फिर मैंने डॉक्टर बसंत लाड की पुस्तक भी खोली, बहुत उच्च कोटि की पुस्तक है वो, तो उससे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो आपने जो हाथ सिद्ध कर रखा ना उसको मत बदलिए, उनमें से जो चीजें आपको बताई गई कुछ ना कुछ नया आपको मिला होगा, उसको आप ऐड करने की कोशिश कीजिए। यस अच्छा लगा सर, जैसे आपने अपान वायु को बताया, मैंने अक्सर देखा है जब हम फ्रेश हो जाते हैं ना, अपान वायु गायब हो जाती है। जब हमारा प्रेशर बना होता है यूरिन का, तब अपान वायु डोमिनेट होती है। कभी भी दिन का कोई सा भी पहर हो, ये प्रॉपर है सर, ये बिल्कुल एक्यूरेसी है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू थैंक यू। यस डॉक्टर तृप्ति प्लीज। तृप्ति जी। अनम्यूट कर लीजिए तृप्ति जी। जी सर, जैसे कि आपने बताया कि नाड़ी का बल हम देख सकते हैं, तो रुग्ण का बल अगर हमने रुग्ण पहली बार ही देखा है तो व्याधि बल कैसे निश्चित करें सर? हाँ, ये प्रश्न मेरे सामने आज भी प्रश्न है। इसमें अभ्यास करते रहिए, कुछ ना कुछ रास्ता हाथ में लग जाएगा। सही बात है, जब फर्स्ट टाइम कोई रोगी आता है उसकी नाड़ी का स्वाभाविक बल हमें नहीं पता होता, तो रोग का बल का अनुमान धीरे धीरे आप अभ्यास करते रहोगे तो वो भी आपको मिल जाएगा। इनको इस चीज को शब्दों में नहीं बता सकते आप, इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा, है ना। तृप्ति जी। तृप्ति आर यू गेटिंग? तृप्ति जी, आपको मेरी बात समझ में आती है या अभी भी कुछ कन्फ्यूजन तो दोबारा पूछ लीजिए आप। देखिए, मैं इसको दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं अगर आपको मेरी बात सुन ना पाई हो। देखिए, हर व्यक्ति की नाड़ी का स्वाभाविक बल एकदम अलग अलग होता है। तो कोई व्यक्ति हमारे पास पहली बार रोगी आया है और उसकी नाड़ी का स्वाभाविक बल हमें नहीं पता है, तो हम नाड़ी में जो रोग का बल हमको मिल रहा है वो बहुत ज्यादा है या बहुत कम है, तत्काल बताना उतना सटीकता से संभव नहीं होता है। आप बता सकते हो कि बढ़ा है घटा है, लेकिन कितना बड़ा है उसके लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपको करना पड़ेगा। यस प्लीज। सर एक सवाल मुझे भी पूछना है। यस प्लीज। बच्चों में, बालकों में नाड़ी परीक्षा को लेकर आपके कुछ अनुभव हो तो प्लीज शेयर करिए।
कुछ परिवर्तन या कैसे देखे, कभी आपने कुछ इमरजेंसी में बच्चा आया है और आपने उसकी नाड़ी देखी है तो कुछ अनुभव हुआ, इसे थोड़ा सा। देखिए, मैं अभी ये कहने की इसमें नहीं हूँ कि बच्चों में कुछ अलग मिलता है, क्योंकि मैंने जिन बच्चों की नाड़ी आसानी से मिल जाती है उन्हीं की नाड़ी देखी जाती है। हम किसी की नाड़ी पे उंगली रख रहे हैं, उसकी बहुत पतली है, नहीं समझ में आता तो छोड़ देता हूँ। तो कोई विशेष अंतर मैंने ऐसा नहीं देखा है। लेकिन हाँ, यहाँ पर आपने एक बात पूछी है कि इसका मैं एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जो मैंने देखा कि जो पुरुषों के रोग होते हैं, पुरुषों के रोगों में विशेष रूप से उनके बाएं हाथ पे नाड़ी बिल्कुल सटीक मिलती है, दाएं हाथ पे नाड़ी सटीक नहीं मिलती। ये चीज मैंने ये महसूस करी। बाकी बच्चों में बहुत विशेष ऐसा नहीं समझ पाया मैं। या ओके सर, ओके, यस, थैंक यू वेरी मच। सो या मूविंग फिर कभी एक बार और सेशन रखेंगे सर आपसे। आपका सेशन अच्छा लगा, सिंपल वे में आपने बताया, बहुत ज्यादा उसमें कुछ ये नहीं था, संदिग्धता नहीं थी, वेरी सिंपल एंड वेरी क्लियर। So thank you. I would like to invite you once again for the same. बिल्कुल कभी. Yeah, moving forward with this our international web conference Nadi Prabodhini. I welcome Dr. रामनाथन पद्मनाभन, जो कि आजकल जिसके चर्चे है, एक बड़ा शो जो शार्क टैंक करके चल रहा है, इस शो में हमने देखा आयुर्वेदम, और इस आयुर्वेदम को देखे उस दिन हमें बहुत ही बड़ा एक गर्व महसूस हुआ कि आयुर्वेद का या एक ऐसे ऐप यहाँ पर आ गया, सोनी टीवी पर आ गया, और फिर जो हमारे छाजेड सर भी थे और आप सभी की टीम को हमने देखा तो बड़ा अच्छा लगा कि नाड़ी परीक्षा जो बहुत ही एक दैवी विद्या है उसको लेकर इतना बड़ा काम होने जा रहा है। और निश्चित रूप से मैंने आपको संपर्क किया और आपने तुरंत आप राजी हो गए यहाँ पर हमारे साथ। आपका जो भी चल रहा है प्रोसेसिंग, व्हाटएवर you are doing with this application, so I invite you sir सबसे पहले, और फिर डॉक्टर जोशी सर आप से अनुरोध है कि आप इनका स्वागत करें। जी, रामनाथन पद्मनाभन सर का बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। आपका जैसा कि सोनी टीवी के कार्यक्रम में आपको जो नए इनोवेटर्स को प्रमोट करता है कार्यक्रम शार्क टैंक, उसमें आपका एक प्रोग्राम हमने देखा। बहुत बहुत बधाई आपको, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कुछ नई इसमें बातें बताएंगे हमारे यहाँ पे जितने भी चिकित्सक बंधु हैं उनको। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मेरा हिंदी इज नॉट दैट गुड, मेरा हिंदी उतना खास नहीं है, सो आई विल यूज इंग्लिश एंड हिंदी wherever possible. Yes sir, yes. Yeah, definitely, no issue sir, you can. So ma'am, you wanted me to talk about little bit of technical thing. I am not a medical doctor, I am a engineer, and my co-founders are also engineers, but we have been blessed by the Ayurvedic community, including Dr. Sanjay Chajat, Dr. Nagendra from SVS. A lot of people supported us during the early stage of the journey. That's how we could make this little progress. Nadi is an ocean, and I think we'll be working on it for another 20-30 years. We'll still be scratching the surface. So we are trying our best. First thing is, I want to ask for help from the entire community to help us to build this technology and bring this technology in front of the world. People need to understand how strong Indian Ayurveda is, and how effective it is. So that's the sort of our vision and mission. So that's the reason we are doing this. So I'll give what I will do is I'll give a short presentation and also give a demo of our app, and I'll talk about little bit. I want to talk about the technical trends. First, about myself. I am a biomedical engineer by training from IIT Mumbai. I have an MBA from IIM Bangalore. I work for companies like General Electric for MRI imaging. Then I work for companies like Intel. I spent a decade in Singapore in working on medical technologies on surgery planning tools for brain surgeons. I have done several startups. I got exits. So this is my start of my third startup. The first one I did in Singapore, where I got an exit. Second, I ran a startup in India called HD Medicals, where we could use a simple stethoscope to do a lot of things an echocardiogram can do using algorithm and AI. It was called HD Medical System, and this is my third one. So very early stage and humble beginnings. So I'll just talk about our journey a little bit. My other two co-founders are also engineers. Abhilesh is an aeronautical engineer. He has decades of experience in
consumer branding and marketing in apparel industry. Sandeep Acharya is an analytics engineer and an MBA, computer engineer, and his work is on medical device analytics. So just, you know, a quick background of what Ayurvedam is. This came from, you know, our experience. You know, we are engineers, so we look everything in the object of, you know, from the point of view of, can we measure and can we create rules and give feedback to the user? That's how we think, unlike doctors, right? So what we saw was, you know, there are a lot of these wearable gadgets people use, consumer gadgets, where, you know, people take a measurement of your how much steps you have walked, how many calories you burned, what is your blood sugar, and based on that, you know, the software tells you what to do and what not to do. But so what is the equivalent, you know, in the wellness space, you know, especially Ayurvedic wellness? So we wanted to create an index, which is something the user can look at, you know, in using his phone or a watch, and it tells him what he can do and cannot do from a wellness point of view. We are not getting into the illness where, you know, there is a real need for treatment. This is primarily for prevention and, you know, prevention and wellness. Basically, we don't want people to find, we want people to find their minute imbalances day to day, correct it before they get into the disease state. That's one. The second thing is, you know, can we tell people to personalize their lifestyle based on what they measure? So that's something which you try to build. And third is, people want to track. Suppose, you know, you go to a doctor, he says, okay, blood sugar is high, do this. So when you go back home, you do certain things. So the sugar may go up or the sugar may come down. So what do you do, right? If you can actually track and send it back to the your physician, they can take corrective action, because most of these today's diseases are lifestyle diseases, which has to be managed at home, in your office settings, you know, on your regular workplace. So how do we do this? So we looked extensively and we found nothing in the space of Ayurveda which gives the complete solution. So we decided to create one of our own, and that is how the Ayurvedam was born. This I won't cover, like, you know, this is, you know, like preaching to the choir. Basically, if you know your Prakriti and, you know, your deviation from Prakriti and your Kapha Pitta Vata balance, I can tell you things you can do or cannot do. So this is something which you automated. I'll show you a demo of the app, and after that I'll talk about what are the things we are working on. You know, it was a fascinating presentation from Dr. Vaidya Sushant Mishra. Some of the things he's doing with his finger, we are trying to use, you know, technology to try to get to that point. Not everything, at least we are trying to make early beginnings there. So it'll be a fascinating conversation. So what is that we do? So this is what we know. This is our app. I'm going to just show, after this I'll just show you a demo. It's very simple. The app is very simple. This is for primarily a consumer, especially the younger kids who are used to digital technologies. We want to give them a first experience on what Ayurveda is, and make them aware of the Ayurveda. So what the users will do when they download the app, they take 30 questions, which establishes the Prakriti. So these 30 questions, you know, what we did was we took questions, you know, which was given by Ministry of Ayush. There was 230 questions. So we worked with Healthcare Global, who in turn, you know, pulled SVASA. Together, you know, we did something called factor analysis. Basically, we took Prakriti test for about 600 subjects and using, you know, electronic means. And then we did the statistical analysis, and then we found 30 questions which gives a good approximation of your Prakriti, of your Kapha Pitta Vata, but it is not very complex for a consumer to answer, because many of these questions are good for a Vaidya. They can look at the person and, you know, they can make the judgment. But we wanted to give these questions to a consumer who can self-answer. So it has to be very simple, very easy to decide. So this is how we chose these 30 questions. Second thing is we have tried to do the first level of Nadi, which gives you your Kapha Pitta Vata, your current Kapha Pitta Vata balance, and hence the imbalance, using the 30-second test, where, you know, you place your finger on your mobile phone camera for 30 seconds. And from that, you know, we get your Vikriti. So this has been, you know, this was again been validated and certified by HCG, Niramaya Resort, and Dr. Vaidyas. In addition, you know, the Dr. Sanjay Chajad, you know, is a great fan. He's actually, during the COVID, has been using it to do online Nadi consult, you know, to find the imbalances. So I'll just, you know, I'll just show the brief of this app. I want to give you a demo, you know, how it works.
I'll log on from my phone. Give me a second. Madam, can I request for share? I should be able to share with my mobile phone. Take 1 minute, sir. 1 minute. I'm your co-host. So you can share, sir. You can share. आप share कर सकते हैं, sir. Okay. I'm going to share the screen. This is the, I hope you can see the screen. Okay. So this you can see the screen. So what you see here on the left side is your Prakriti. And what you see on the right side, that ring, is your Vikriti. So you can actually go to this Prakriti. You can, how the Prakriti is, established, is like through a prashna. So you can actually see this. Simple set of questions. I'm not going to go through the questions. So there are about 30 of them. So suppose if I answer like this, so it moves to the next question. It is very easy to take. You take it one time, and we have added gamification. Like each time somebody answers the question, the consumers today they need to be motivated. You will gain some points, and the points you can exchange for many things. So simple things we do. So I'll just cancel this. So once you have done this, you will get your Prakriti, which you can see on the screen. Okay. And for Vikriti, what you do is, there are many ways. You have also a questionnaire, but in addition, you can do the digital Nadi Pariksha. So what happens is, you press this, you can see in the square, there's a test now. You click that button. Let me see whether I can turn on my video and show you. So here, you just place the finger on the camera. I hope you can see. I think that virtual background is not allowing the phone to be seen. Sorry about that. But you can see in the screen. So once you place your finger on the selfie camera, it sort of, it takes a 30-second test. So test is complete, it is showing, it is saving in the backend. So it is taking a little bit of time. So here, it is comparing here, you can see Vega and Gati. Basically, based on my Prakriti, it looks like currently my Vata is high. Because obviously, I'm focusing, I'm talking, walking, right? My heart rate is high. My Gati is, Sarpa Gati at this point of time. So based on this, it is telling these are the two parameters which is contributing to high Vata at this point of time. So, but I can see the detailed result. I can see the 7 parameters. I'll come to that. You have, this is based on the method, mentioned by Dr. Lard. You take 7 parameters, which is your Vega, your Akriti Matra, your Akriti Tana, your Bala, your Kartinya, your Gati, and your Tala. Tala is, so each of them, there is an equivalent Western marker. Vega is nothing but your heart rate. So my heart rate is, high. This is my Akriti Matra is my diastolic blood pressure. So it tells you, my systolic blood pressure. Systolic is normal, and I'm slightly, hypertensive. I'm also under medication for full disclosure. So my diastolic is always close to 90 or sometimes even 90 plus. So it's actually showing that. This is my strength of the nadi. This is my stiffness, and this is my gati.
we have in the Gati, we can only do 3 things now. I'll talk about what we are going to do in future. So today we can only do Hamsa, Manduga, and Sarpagati. And Tala is my heart, how regular is my heartbeat. So it is based on the heart rate variability. So based on this, I get your. I am going back to the main screen. So it tells me what is there, like what is my current. So you can see my Vata is compared to my Prakriti, my Vata is high. So based on that, I am giving you. You can get Prakriti based recommendation also. It tells you what food to eat. For example, I can go to diary. So these are the things I can eat. I can eat buttermilk, but I should be avoid frozen yogurt or powdered milk. So all these content we have created with the help of Ayurvedic doctors. We have created a database of content and marked which one is good, which one is not good for you. So soon we will be adding Indian food recipes also into this. This is just the food and grains and things like that. Similarly, we have herbs. So these are the yogas for to de-stress me. These are the yogas which I can do. I can play this yoga. If you want to do this yoga, we have also. If you already know how to do it, this is a sort of video which you can look at and correct yourself. So this is primarily for wellness. So we have meditation and things like that. So we can also then customize. For example, I can some of the plans we have, like my goal is weight loss. So it also takes my balance, imbalance into account, also my goal into account before it suggests the yogas, meditation, and everything. Every remedies it gives me is based on that. So sometimes this is for wellness, but if people really need to they have they are interested in weight loss, but for example they may be hypertensive or they may have a condition. So for those people you cannot simply use this app. So we have these what we call trainers or doctors. This is something which we are experimenting. We have not gone full-fledged. We are trying to list more and more Ayurvedic experts onto our platform. So we have today about 700,000 users. That is 7 lakh users we have in our platform. But with these services, we think it will be it will be beneficial for the Ayurvedic community as well as Ayurveda. So this is the short what is this platform. I'll just jump into the technology part. 1 second. Let me unshare and share my. Let me unshare and share my slides. I don't know where I lost it. Okay. So this sort of tells you I have gone through this entire thing. So how it works. I talked in the previous slide. I talked about the user experience. That 30 questions and 30-second test. And some of the validation we have done, with and we have done with a lot of individual Ayurvedic practitioners also who have tested it and give us certificates. So how does it work? I touched upon it a little bit. So what we do here is when you place your finger on the camera, we take a series of pictures. For 30 seconds, we take as many pictures as we can as the phone will allow. Many phones have 15 frames per second, 30. There are phones with even 60. iPhones give 120 frames per second. So we take a set of pictures, and as you know, the red blood cells, which flow on the body, they reflect red light and green light. So basically, we take the reflection of red light, and then we do our processing. We as engineers, we run these algorithms and process, and based on the processing, we derive these 7 parameters. The 7 parameters are nothing but your Vega. So based on the signal processing and noise cancellation, we get something like this. It is nothing but your pulse plethysmograph, which is what you see in a BP machine or even oxygen saturation. During the COVID, people use a lot of oxygen saturation machine. So this is what we use to get this kind of waveform, which you see here. And then we run our algorithms, and then we get your heart rate, your systolic diastolic blood pressure. The difference in systolic and diastolic is your pulse pressure, which is your bala. Then we measure how much the heart rate varies, and then from there we get the tala, whether it is regular or irregular, and Kaঠিnya, we get the stiffness of the artery, and the analysis we do this 3 gatis. So next slide I'll talk about little bit, go deeper into the algorithm.
because that's what the time would permit. So I have already shown you this. You get your, thus you get from the questionnaire, you get the Prakriti, you have Vikriti. You can then from there you can get your, based on your balance and imbalance, you can get recommendations. And then you can also choose some of the gain, your goals, and based on that it will give further customization. And if you're an expert user, then you have Ayurvedic experts listed here, yoga experts, meditation experts, which is a need of our today, because many people suffer from disease and imbalance because of the lifestyle we lead. That includes myself. So these trainers can actually help you to further customize. And we also have the database, there are lists which you can create based on your expertise level, whether you're beginner, intermediate, or advanced user. You can create your Monday yoga list, Tuesday food list, Wednesday meditation list. So soon we will be throwing this open to the Ayurvedic expert also. Basically, they can look at the consumer and create the own list, and the consumer can practice and then give feedback to the Ayurvedic experts. So this is the direction which we are heading. So going into the next part is, I will talk about how the technology works today and what we are planning to do, where we need this community's help. The heart rate, what we do is once you have the pulse plethysmograph, it is simple, like you can analyze the frequency or you can count the number of peaks in the signal to find your heart rate. And as I said, what we do is once we know the peaks, then we can find how the heart rate varies one beat to another. So it's called beat to beat in interval. And from the beat to beat interval, we look at two statistical parameters, something called minimum entropy and root mean square of successive difference. Basically, take the difference of heart rate each beat, find the difference, and apply the statistical formula to find, whether your thala is stable or not. The Akriti, Matra, and Tana, we have used, the machine learning. So for this model to actually work, you really need to input, your height, weight, age, and gender. And from there, it calculates several things, including your body mass index, your estimated body surface area. Then it uses your heart rate, and then it uses the various, other features like first, second, third derivative of your pulse plethysmograph, pulse transit time, which is the time difference between the opening and the closing of the valve. And based on these model, we have, estimating the systolic and diastolic pressure. Today, we don't show the number, we just estimate as high, medium, and low. And that's how, because even, when Ayurvedic physician, when they look at it, they will just estimate at high, medium, and low. So we don't give a number to the subject, for medical legal reasons. And also, we just want to follow the Ayurvedic method. Then the difference again we find the difference in systolic and diastolic and convert it into high, medium, low for Bala. In terms of Kaঠিnya, what we do is, it is based again, on what we call pulse wave velocity. So if your arteries or, your blood vessels are stiff, the blood flow will be faster. And if it is soft, then, with the pulsation of the blood, the arteries can expand and contract, which actually takes out the velocity. It slows down the blood speed. So we find the blood speed indirectly using the PPG. And based on the PPG, the blood speed, we classify again into high, medium, low. Gati, is a pattern which we look at using the frequency response on the power band. So the higher the frequency, the more energy you're spending, the more stressed you are. If you're, if you are on the lower and ultra low frequency, it is more of a kapha or a pitta. Whereas, if you go to high frequency, it is vata. So we look at various fields. We estimate the relative strengths of each of these bands, and then classify into Sarpa, Manduka, or Hamsagati. So this is kind of very, very, very high level overview. And after this, maybe on one-on-one session, I'd love to have a deeper conversation with this community. So I will skip this, so here, just a very high level, using all these features, we are also trying to get into, take, goals, so this is for users who are at the back at their home after visiting Vaidya. It is primarily for them to
do the, this is what we call advanced yoga plan, where we measure the imbalance. The user sets a goal, like, for example, weight loss or immunity. They can set the preferences, for example, basic, advanced, or, intermediate users. And then, there are, it looks at the changed imbalances. It looks at the change preferences. For example, for 1 month, you have been doing basic yoga, you want to get into the intermediate yoga, you can change this. So based on these parameters, we can keep the users engaged, suggesting them some yoga and meditation and other things. Similarly, we are creating one for a diet plan. Again, it follows the same pattern, looks at the imbalance, but it also asks you a question about your sleep. How did you sleep, in the past day or past week? How is your digestion pattern? How is your bowel movement? So the trick, in terms of consumers is that if you ask them too many questions every day, they may not answer. But if you can ask the question, appropriate time, once in a week or twice a week, at different points of time, they may be willing to answer. And this whole feedback loop can go back to the counselor and they can change the plan. We can further personalize. So this is, the advanced plan which we are doing now. But more interesting thing, is we are looking at wearables. So today, we are using the camera to measure the Kapha Pitta Vata using the pulse plethysmograph. But future, we want to integrate with the wearable devices, because today, if you take the wearable device, it has a laser sensor there. You can put multiple sensors there, which can actually measure your pulse plethysmograph. And in addition, the wearable is much more innate to the user. So it can give you the location people travel. It can give the sleep patterns. How did you sleep yesterday? Good sleep or bad sleep, it can automatically measure. It can measure your exercise. It can measure your heart rate variability throughout, and can thus measure your stress levels. So, and many of these wearables are integrated into a calendar. So I can tell you how busy you are, how long you are working, different times of the day. So these data, think about it, from a Vaidya point of view. If you can get this data from the consumer, right, you can probably give them much more stronger recommendation, right? Because if they come to you to do the Pariksha, it's very, very valuable. You can find the baseline, you can give them diagnosis. But what happens when they go back? Like, are they doing things, what's the kind of lifestyle they're leading? If you can get all this information in your fingertips, then you will obviously be able to help the user much better. So this is the second level, which we are trying to do. We are starting this process at this point of time. So we will be able to show some prototype, in 3 months time, where we want to test it. So we think, this, the Ayurvedic knowledge and awareness, getting into this everyday gadgets, consumer gadget, like, mobile phones and wearables, and even, your oximeters, many of these devices, is the direction we are heading, because I think that's the need of the day. And second thing is a very great way to improve the awareness. And third is, many of these conditions people measure themselves, but if the only answer they have is go to allopathic doctor and get allopathic treatment, because it is not integrated in the Ayurvedic way. So I want to fill that gap, integrate these things in an Ayurvedic way, connect to the Ayurvedic doctors and counselors, so that they can get Ayurvedic advice to manage these diseases, because it is a much better method. And last but not the least, I think I liked the previous presentation, where just by using the finger, you can, looking at the 5 points in these 3 fingers, you can estimate what disease it is. But being engineers, we love data. So this is what we are doing now. We're doing a data collection. So whereas the user actually goes through a blood test, various blood tests, to estimate whether they have, and also test on BP. To understand whether they have blood pressure, hypo or hypertension or hypotension, diabetes, and cholesterol. This is a starting point. And then for the same users, we are also collecting data for about 800 users. We are trying to collect this, where we are collecting the pulse plethysmograph using our algorithm. And we are also getting some of the information, like generic information like height, weight, age, gender, waist to hip ratio, standard parameters we are taking. And we're going to create a machine learning model. The idea is not to replace any physician or a medical device. It is primarily, what we found is, in India, these diseases are coming to younger generation. So in my father's generation, people never used to get these diseases before 60.
In my generation, it is probably in 40s. The younger generation is probably 30 or even less. So many people don't think they have this disease. So if you're integrating this into normal consumer gadget, they can actually screen themselves. Like, they can tell whether they can suspect that there is a chance they have this condition, and they can come back to people like you, where they can sort of come to you and, prevent it or reverse it very early on till it becomes very late. So that's a bigger goal in this, not to replace anything, but to augment and enhance, from a public health point of view. So this is the same case I'm making, like, for undetected hypertension is 67%. Similarly, in diabetes, I think it is about 50% is undetected. So each of we are starting with these three metabolic syndrome diseases, but we will soon expand to other things like what the previous doctor talked about, like arthritis and many other condition, PCOD. These are the things which you want to get into this mobile phone and wearable which consumers normally use. So this already was covered. I don't want to get into these sort of detail. This is the method we're going to use to screen this. So this is a sort of high level picture of Ayurvedam. I don't know. I hope I have not taken too much of the time. I thought I'll leave some time for questions and answers. Yes, sir. Definitely. Yes. Was it going too fast, or? No, sir, it's okay. It's nice. Your speed is quite good. No issue. You can continue. So that's pretty much, directionally, what I want to tell is we are creating these advanced plans, that's where we want the help of the community. Second thing is we are creating the disease screening. The third thing I forgot to mention also is that today we have only the basic nadi, like, the Kapha, Pitta, Vata, the three gatis, we have. We are also starting data collection with Dr. Sanjay is under discussion, where we want to collect data and try to identify deeper nadis using consumer gadgets. This is also something which I would love to collaborate with this larger community. Really innovative, sir. Great. You are doing so all much. the team. Congratulations. And I think you should come for us also as a Ayurveda right. people, and something like that. We should do such a type of work, but engineers are doing. No, I think we are anxious to get your mind share from the community. It is harder for us to connect to the community, and we are learning slowly. We are learning. It has taken 2-3 years before somebody is taking us even seriously from the Ayurvedic community, taking seriously, because for a variety of reasons, maybe previous bad experience and all. I mean, so we are serious about this. That's one thing. Second thing is, even Shark Tank, I feel it is the honor to Ayurveda. I mean, we are barely scratching the surface. The reason it got there is because of the ancient Indian knowledge. I think it is because of Ayurveda. That's how we see it, right? It is not something we did something very fantastic. If you ask me, the whole Shark Tank, people were doing dressing, song and dance, extensive set. Here we are 3 engineers, we put a 300 rupee t-shirt printed Ayurvedam and a normal jeans. We walked there and we got a deal. And it is not because of we did something great. It is because of Ayurveda. That's how we see it. Yeah. Sir, how came that idea to go with this Shark Tank and all such things? How came this idea of making such a app? So the background is, see, my background, I was working at Intel. I was responsible for strategy and product planning for 3 areas: medicals, where healthcare, wearables, and Internet of Things. So mostly product planning for India or India type of market, low cost market. So during that time, Intel had a Band-Aid kind of thing, which you can put on your chest and measure blood pressure continuously. So I was trying to license this technology out, trying to commercialize this. I ran into my neighbors, and they were, health, Abhilash is actually a health freak. He does long distance cycling, and also we were thinking of doing something with this patch, with BP, can we do something? And what happened was, at that time,
Sri Sri Ravi Shankar, no, they have these Nadi camps. So they came to our apartment. So we got ourselves tested. And Mr. Raturi, who runs the Nadi camp, you know, for Sri Sri, we had a conversation also. It was a fascinating conversation, right? He could touch our Nadi and, you know, estimate so many things. You know, he will ask us to think about a sweet and he could actually find it. It's kind of, so we thought, you know, maybe, we thought, you know, if somebody is putting the finger and telling, okay, you are diabetic or something, there is some training and, you know, processing which is happening in your head. It's intuition, but there is some data behind this intuition. And the intuition, we feel it doesn't happen in isolation. It comes with the training, right? And training means data. You're training yourself. So there is some data which people are not able to explain. So we thought, you know, maybe, you know, if you put technology inside and start building it, maybe we will also find some pattern. So we actually build a prototype. We went to the Sanskrit text and, you know, tried to learn something on our own. We created a small prototype on an Android device. And the first person to visit was, you know, Padma Shri Dr. Darshan Shankar. And he was a chancellor for this transdisciplinary university. So we spoke to him through our common friend. He's also from IIT Mumbai. He's alumni of IIT Mumbai. So we connected through a common friend. So he invited us to his house. The first thing he said is, no, it is not possible. You know, I don't think you can do a Nadi with a camera, you know, on a 30-second test. It's not possible. But, you know, because it came through his common friend, you know, he said, okay, I will give this guy as a chance. So he come to my home. So we went to the home. We explained the whole thing. So it so happened that his son and daughter-in-law both were Ayurvedic doctors and Nadi expert. So they said, okay, let us try it. So we gave the, you know, the mobile phone to them. They tried it on themselves. Then tried it on their cook. They tried it on the driver, their nephew, niece, whoever was there, tried on 5-7 people. And it was coming out, you know, surprisingly that day it was coming out very well. So they were surprised. Actually, they said, okay, this looks good. And then, you know, they took it to their clinic and they did some more validation. 30-60 people they tried. And, you know, they said it has good results, you know, you need to work more. So they asked, connected it to the Ministry of Ayush. So Ministry of Ayush, we went and talked to Director General, Mr. Deeman, and he was very kind enough. He spent almost like 2 hours in the afternoon looking at our app and all. He said, you know, this is great, but it requires a lot of validation. So he sent us back to the CCRYN in Bangalore, Dr. Kishore, who runs, you know, the metabolic disease research. So we went to Kishore. We didn't know much about Ayurveda. So he sat and explained to us how the Ayurveda works, Prakriti, Dosha, how you should do. So we learned a lot from him. With his help, you know, we built the prototype. And then there were several others who helped us on the way. Several doctors who helped us on the way to get it to this point. So after that, you know, this Shark Tank and all was a incidental. So since we were there in the market, you know, people knew us, we used to get invited. People are very curious, you know, this Ayurveda and technology, and especially with the mobile gadget, is something curious, you know, for a lot of people. And most of them wanted to try it. So they used to invite us. That is how, you know, we ended up where we ended up. So Yes, still, sir. you know, it's the early stage in the How long was journey. the journey, sir? How long was the journey? It's almost Total like years? 3.5 years, you know, we have been at it. Sir, is it possible to download just now this app and we can work with this just now? Yes, you know, it's free actually. Like, you know, both in Android and iOS, it is free. It's only, you know, when somebody books a service or buys a product, we have not listed product yet. If somebody wants to buy an Ayurvedic product or take a service of a doctor, then, you know, you will charge them, and, you know, that's how it's a model. The basic No, it is totally free and we can easily access it. Yeah, I can send you the one if you give me a second. Yes, I can. I have also my one app is there on the Google Play Store, Prakriti Calculator. Yeah, since last 4 years, I made this app. There are so many apps of mine. Like we should work together, ma'am. Let me see. I will put my this app, you know, on the link on the chat. One second. Give me a second. Our doctors also they can also download this one. Doctor. Yes, absolutely, Shraji. absolutely. I'm putting it on the chat. It is free. Sushant sir, आप download कीजिए तब तक we will see, sir. What is the next step? What is the next step? So next step we are doing, as I said, no, we are going to work with one of the largest medical device manufacturer in India.
we are going to integrate with consumer medical device, oximeters, BP meters, and weighing machines. So the idea is like people should be able to manage, the lifestyle risk in a measured way using Ayurveda. So if somebody buys this device, obviously they have a problem, right? But they cannot connect to the larger Ayurvedic community, and share the data. So this is one thing which we are doing right now. Second thing is, as I said, we are also integrating with wearable gadgets. That is also which is happening. So we can get more of these lifestyle data and bring it to the larger ecosystem. So this is the second thing which you're doing. Third is the disease risk factors I talked about. We are starting with metabolic diseases, which we are starting the data collection for diabetes, hypertension. This is, from a technology standpoint, this is what we are doing. From a business standpoint, we want to list more and more Ayurvedic community who can offer paid services through our platform. We are already at 7 lakh users we have, and it is also growing. So since there are so many people interested in Ayurveda and Nadi Pariksha or downloaded, it will be also beneficial to the larger community. The listing is free. So if somebody orders something, then we will take a share in their revenue. That's the model. It's very easy. There's no need for any upfront investment or anything. You don't have to buy any devices. You don't have to buy any gadgets or anything. It is a very simple way to do it. The second thing is we are also trying to list products, different kind of Ayurvedic products. So if somebody finds the balance, imbalance, we have to give a complete solution, right? They want to, for immunity, they want to buy amla juice. I'm just, it may not be even a correct example. Or Chyawanprash they want to buy, they should be able to buy from the platform. This is so it provides the manufacturer to list these products into our platform. So these are the two ways we see moving forward. Yeah, definitely. Okay, sir. So right now we can go with the Nadi and Prakriti and diet pattern. Yeah, and this is why, sir, is there any diet pattern? We have just the food, but we are interested in the recipes. So when I say that, let me give you an example. You say rice is not good, but multigrain is good, or wheat is not good, multigrain is good, right? But what can I cook with multigrain? Well, how do you cook it in an Ayurvedic way, right? That is something that is the knowledge we need to provide the user. So for normal person, right? How to take care of a lot of things are at home, right? Ayurveda also, a lot of things you need to practice at home. It's not enough to visit a doctor, right? So those kind of information which is hidden or which is not easy to find, we want to bring it in a curated way. So that's again, if the community has this kind of content, we can also list it and we can figure out a way for everybody to benefit from that. Yeah, definitely. Any questions, doctors, from your side? सुशांत सर जी, सभी जो भी हमारे डॉक्टर्स है, एनी क्वेश्चंस? डॉक्टर साई राम जी, डॉक्टर अविनाश ढवड़े जी, एनी क्वेश्चन? डॉक्टर तृप्ति, अमित पाल सर? I think it's the best opportunity to discuss. Yeah. Actually, sir's explanation was so clear that there was no scope for any question. Yeah, yes. Yeah, it was really good and clear way he explained it. Thank you, Amit ji. If any questions, you can directly unmute and you can talk with Dr. Sir ji. के साथ आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं. If you have any query regarding this, because it's a really innovative idea to go with this technology and without harming our basic principles. So it's a great deal, I think. I'm also with the question. Sir. This is in beta form of the application or is it totally established form? Sorry? This is this application in beta form. But this is under trial or you are given a established form? So it is freely available, sir. No, sir, he's asking if this app is under trial or has it been verified in all the ways? So we have verified with many people. I've talked about the validation, right? With HCG and HCG then went to SVIASA. We validated with Ayurveda department of HCG. Dr. Sanjay Chajad is using it after validation. We also went to Niramaya Resorts
through their Ayurvedic doctors, we validated it, and also the Niramaya Resort, HCG, and one more place, and there are a lot of individual practitioners actually. Dr. Vaidyas, we also worked with Dr. Vaidyas during the early days to verify this, and they all have given us certificates of suitability of use. Having said that, we are going to the next level. So right now it gives only the basic nadi, right? The second levels you talked about, the sabdosha level, looking at the deeper expression of nadi, superficial expression, dhatu level. Those are the things which you are trying to collect data right now, and we want to see whether it is feasible to do it using a consumer gadget. It's something which we are trying now. So this is the answer to that. Yeah. So sir, it is like just you are doing with this full-time business or full-time working with Nadi? See, we have just to give you a background, we have raised almost 3 rounds of funding. We have gone to the venture capitalists. So first round was funded by Antil Ventures, which is a Hyderabad-based ventures. It's a proper venture capitalist, right? And second round, we did with Succeed Innovation Fund, which is again Hyderabad-based. Recently, we are closing with Angel, which we cannot talk about. It will be announced soon. So once you do that, right? Once you take other people's money, you have to return the money, right? So we are all full time, 150% into it. We are Saturday, Sunday, doesn't matter. We are on it. Yeah, definitely. That's the world of startups, actually. It's not easy job to do such a things. Yeah, definitely. So I think for us, we need the engagement from this community for 2 things. One is to guide us, help us improve, because there are a lot of this knowledge which is in people's head, right? It's not easy to find. That's one thing. Second thing is it brings credibility, and third is also I think it will be beneficial. Like if the app like this gets popular, the Ayurveda gets popular, and in turn it benefits everyone, the larger community, because that is how the business is going to be done moving forward, right? The community, the people who are born after 2000, they are born with a mobile phone in their hand. So probably that's the way to go also. Definitely, sir. Interesting, really interesting. I think there are no such questions because it's really clear demonstration from your side. So thank you very much, sir, for giving your time with this routine and busy schedule. I'm just looking forward with any more interesting applications from your side, sir. Absolutely, absolutely. We should connect, ma'am. And I'm interested in Prakriti, that questionnaire and all. Wherever we can find. I'm also doing with Prakriti from many years because I belong to that subject. Kriya Sharif, physiology is my own subject. So I'm very much interested in Prakriti. My small app is there, Prakriti Calculator, just with questionnaire, Marathi, Hindi, and English questionnaire is there, and just a diet advice is there. Some applications are there which are related with the academics, like Shlokavali, something like questions, and some books are there in the form of ebook and applications also. So it's really nice, sir, to thank you look forward. Yeah, thank you so much. So Namaste. Looking forward with our webinar and moving forward. Now we have Dr. Amit Pal, sir, who is MD in Sanhita Siddhant, and he's practicing very nicely in the Nadi Pariksha. Just he sent the biodata, and I noticed that he's dealing with the various types of diseases. He can talk on any disease with Nadi Pariksha. So it's really a great pleasure to have this expert Nadi Vaidya from Mumbai, Maharashtra. I welcome Dr. Amit Palji in this international web conference, Nadi Prabodhini 2022. I think this is just the second last session. Afterwards, one session is there, Dr. Madan from the UK. So, sir, welcome. Please continue. मामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोकैर्जरारुग्भयमृत्युनाशं धातारमीशं विविधौषधीनाम्. So thank you very much everyone for having me here. It's really an honor to be speaking in front of all these Vaidyas. I hope I can share my screen. Yes, sir, please.
I think it has got hung up. Yeah, okay. Yes, yes. Gurubhyo Namah. I'm dedicating this to our beloved Guru, Guruvarya Vaidya Anil Panse sir. So the topic that I'm going to speak about today is Nadi Pariksha in acute conditions. So Nadi Pariksha itself is something which is a kind of vague considered field. Like people don't accept it, especially Vaidyas don't accept it, though patients do. As patients, when come to us, they put their hand in front of us and they expect us to check Nadi. But in Vaidya fraternity, it's not that commonly practiced, or it's not considered as the authentic way to examine a patient. And the second part is acute condition, which also is not practiced much in Ayurveda faculty by Ayurveda physicians. There could be various reasons, because for acute conditions, there are other methods available, other pathies available, actually only one pathy. Previously, there used to be time when for acute conditions, there was only one thing that was available, and that was Ayurveda. They called it which is considered as a traditional medicine. At that time, they considered it as traditional medicine. And now, after so many years of struggle, somehow modern medicine has taken over the field of emergency medicine. They've worked really hard. But I think even we should work very hard. We do have a lot of scope in treating acute conditions. Actually, I practice in a rural area. It is an Adivasi area, and practicing Ayurveda itself is difficult in this area. And that too, acute conditions is far more difficult. So what do we understand by acute conditions? There is sudden onset, recent onset, the symptoms are severe, it stays for short duration. Stays for short durations means if not treated, you may get cured, the patient may get cured, or patient may die. And that's why there is urgency of patient. Patients are always in urgency, because the symptoms are really serious. And that's why immediate intervention is required. So that's what happens with acute condition. And we know that we have been treating many chronic conditions. If we see, most of the physicians are practicing with chronic conditions or lifestyle disorders. That's not wrong, actually, because when we are seeing around us, there are a lot of patients who are suffering with the chronic conditions. But I think to make Ayurveda a complete therapy, complete package for any patient, for any person in any condition, we have to be full-fledged. We have to be fluent with acute conditions as well. So there is nothing like, means in colleges, it's not taught that how you have to see an acute condition, how you have to understand an acute condition and treat it. I won't blame them, because that has been a tradition. There has been a tradition which has been coming from since ages, or maybe since centuries, so that these acute conditions were not addressed properly. So the treatment and the diagnostics for those are not available. So the first thing which comes, which we encounter, is the diagnosis of acute condition. According to modern, there won't be much difficulty in diagnosing an acute condition, because a symptom, you see the symptom, and there are certain diseases which you can shortlist, and you can start the treatment, because the treatment is also standardized. There is standardized symptom, you get a diagnosis and the treatment. It becomes very simple. Like if somebody has got allergic reaction, there are certain medications readily available. You can identify with the symptom and give the medicine.
With Ayurveda, it doesn't happen so, because in Ayurveda, when we see a patient, we don't just see one symptom. We try to see a complete picture of the patient, because one symptom has got many other facets, many other origins. So we have to go and search for the origin, the root cause, and then try to treat it, because one symptom may be caused by two different things from two different poles, and single treatment may not work in both those conditions. So the diagnosis is important, and that can be done easily in chronic conditions, but in acute conditions it should be done in very short duration. In this short duration, we have to identify the sign, understand the symptom, identify the differentials, and rule out rest of the differentials. The differentials have to be very accurate. Those are to be very close to each other. And if there are 5 differentials, among those we have to rule out 4 and come to the conclusion to one nidana. So what is the role of Nadi in it? So Nadi helps in understanding avastha instantly. I'll be sharing some cases. I'll be presenting about 12 cases of acute conditions, and I'll be going very short. I won't go in very detailed Nadi Pariksha, because that is not possible in acute condition. I'll tell the simplest way and the easiest way, which can be done by anybody in the sense anybody. It's not necessary that you have to be a Vaidya, even a Vaidya, to do what I'm going to tell you now. So, okay, what are the acute conditions? These are the list of acute conditions. We'll just skip that. According to Ayurveda, I've listed these things, not just these: Shwasakasa Pratishaya, Jwara Kandu, Udara Shula, Urashula, Sandhi Shula, Atirajasrava, Atidrava Mala Pravrutti, and whatnot. Many conditions are there. So coming to first thing, I won't be discussing about all of those. I'll be explaining a few selected symptoms which present as conditions. So dyspnea can be because of workout, interstitial lung disease, laryngeal edema, asthma, pneumonia, effusion, COPD, or MI. And if we see the dosha presentation, dosha dominance in all of these, workout or cardio exercises, in this, Vata is dominant. In ILD, Vata is dominant. In laryngeal edema, there is Vata and Kapha dominance. In asthma, pneumonia, effusion, COPD, there is Kapha dominance. And in MI, Tridosha dominant with pradhanya of Vata. So it gives a clearer picture which dosha, means if we know this, it gives clearer picture which dosha is dominant, and we can find out which dosha has to be treated. For that, we have to find out which dosha is there. So if we see dyspnea, it is Shwasa according to us. So Vatadiko bhavet shudraha tamakastu kapodbhava kapha vatadikaschaiva samsrishta chinna samudnika. So Vata causes Kshudra, means in Kshudra Shwasa, there is Vata dominance. In Tamaka Shwasa, Kapha dominance. In Chinna Shwasa, Kapha Vata dominance. And Mahashwasa and Urdhva Shwasa, it is Sannipata with dominance of Vata. All three are present, but among them, Vata is dominant. So going on to cases, moving towards the cases, this is the first case of Shwasa. It will be very easy for you to understand, all of us to understand. Rugana Samvedya Lakshana was Shwasa. There was only one Lakshana. Patient was not in position to explain any other symptom. He was very much in trouble, and only symptom was Shwasa. All the cases I'll be explaining today are single symptom cases. There was only one symptom and one sign. So on this only, we can diagnose immediately in emergency. So what could be the Vyavacheda, that is differential? It could either be Kshudra Shwasa, Tamaka Shwasa, Chinna Shwasa, Mahashwasa, or Urdhva Shwasa. As we discussed previously, the types of Shwasa. Now, how to come to a conclusion? We can see the pattern, but when a patient, means the way he is breathing, from that we can see, but we definitely don't have time
to wait and see how exactly is he breathing. Is he breathing heavily? Is he breathing? Because this patient was in so much of discomfort. I was not able to understand what pattern of Shwasa he's taking. And definitely I didn't have time. So I did Nadi Pariksha, and saw that the pulsation was palpable on Anamika, the ring finger. By now, all of us know that Vata is expressed on index finger, Pitta is expressed on middle finger, and Kapha is expressed on ring finger. So Anamika showed pulsation. So it was very clear that Kapha was dominant, and because Kapha was dominant, it has to be Tamaka Shwasa. Anybody could raise question that if Kapha is dominant, why are we considering Tamaka Shwasa only? There are many other diseases, many other conditions where Shwasa comes as Upadrava of that disease where Kapha could be dominant. Here I am directly coming to I came directly to the conclusion of Tamaka Shwasa from the Kapha, because it was an emergency. The patient, I had no time. Even if any of us had got this patient, we wouldn't have got any time to see all the conditions, examine the patient and see and diagnose that this disease be caused by this hetu, and because of that this samprapti happened and this upadrava. There's no time for that. So here in emergency cases, in acute conditions, I do see the symptom and try to understand which dosha is causing that symptom. And the understanding of dosha helps a lot, majorly a lot, in selecting the dravya, selecting the treatment, selecting the upakram that we are going to use in the patient. So kapha was the main culprit, and when treated for kapha, medicines were given for the patient, and that treated the condition. Means with this the patient got relief. In a few minutes he was okay. So it was Tamaka Shwasa. Not a big deal. If a person comes to a clinic and he's breathing heavily, it definitely, the first thing that comes to our mind is he must be asthmatic. So Tamaka Shwasa, and we can treat for Tamaka. But that doesn't happen always. If you see the next case, in this patient, Rugana Samvedya Lakshana was Shwasa, and he was known case of asthma. So it is very easy for us to understand that this patient is having asthma. So treatment of asthma, or if we say asthma is correlation of Tamaka Shwasa, we can treat him for Tamaka Shwasa. So same Vyavacheda, the differentials. And do we go for treatment? Before going for treatment, when I checked the nadi of this patient, it showed Tarjani, the index finger. The pulsations were present on index finger, and that rang bell. If this patient had Tamaka Shwasa, if it was Vega of Tamaka Shwasa, it should have shown pulsations on ring finger. But in this patient, it was predominantly on index finger. Rest of the fingers, there were no pulsations. So the diagnosis for that time was Kshudra Shwasa. When I asked the patient for Kshudra Shwasa, I gave medicine and asked him to sit down, turned on the fan, gave him water. And after 5 minutes, he became all right. And when we asked him what exactly had happened, he said he had seen somebody he had known since long, and he was trying to call him. And as he was disappearing, he tried to run behind him. And because of that, he got Shwasa, which is Kshudra Shwasa. Now, in this case, if I had concluded that he is known case of asthma, he was my patient, known case of asthma, and I had to give Kaphahara treatment for him, that Kaphahara treatment would have increased Vata, and his condition would have worsened. So any condition which appears as Tamaka Shwasa may not be Tamaka Shwasa always. So we have to rule out the differentials. Always we have to rule out differential. We cannot
come to conclusion directly from one symptom. Even here, there was one symptom. And with Nadi Pariksha, it becomes very easy. Simple, you just put 3 fingers on the patient's wrist and you see which finger is feeling the pulsations. That's it. In both these cases, there was only one point which has to be felt. And in this case, it helped to understand what type of Shwasa it was. So, Hetu of Shwasa, okay, it is Annava and Udakavaha, it causes Kapha and Ama. So the treatment differs. If it is Pranava Srotodushti, it is because it causes Vata, and the treatment differs. That is why we have to rule out if it is because of Annava Srotodushti or Pranava Srotodushti. Coming to third case, this patient also had Shwasa and Sweda. When this patient came, I was with another patient and they called me urgently. I went and saw the patient. He was breathless and heavily sweating. I asked him, he was like, he could speak barely a few words. He was saying it's very hot, means that too with sign. He was not able to breathe, not able to speak. He was showing like this and fan. So we turned on the fan. He felt a little better. So again, the Vyavachcheda was Kshudra, Tamaka, Chinna, Maha or Urdhva. Vata, Kapha, Kapha, Vata and Sannipata. And how to confirm? We did check the Nadi and saw that all 3 fingers felt the pulsations. All the 3 fingers. Definitely it was Sannipata. And that is why I gave medicine to that patient, called the patient relatives and told them that I've given the medicine, but you have to mobilize him immediately, right now. Just call the vehicle and take him out, take him to a cardiologist or any place you can, any hospital where he can be kept under monitor. They agreed, they understood what I wanted to convey the message, and they called the vehicle. By the time vehicle came, this patient was feeling good. He felt all right. He stood up, he started talking, and the vehicle came. The family members took him, put him in the car, and they went. 2 days later, I got the news that this patient expired of MI. When I inquired, I thought he must have expired in the hospital. But when I inquired, they said no, he was not taken to the hospital because he felt good, and there was no history of any cardiac. There was no cardiac history. So the family members and the patient insisted that no, there's nothing wrong with me. I just had some breathlessness. Now I'm feeling okay, and they took him to home. They didn't come back for any other medicines, further follow-up, nothing. They didn't go to any hospital, and the patient succumbed. So it was MI which had occurred that time when I had checked the Nadi. So it was Maha Shwasa or Urdhva Shwasa. I couldn't conclude which type was it, but I just realized that this, when you see this, you feel the pulsations on all the fingers, it is the condition where the patient is going towards asadhyata. It is very obvious that patient may stop responding to any treatment. And that's why whenever we see such symptoms, whenever we feel pulsation on all 3 fingers, we have to send that patient. If we are not able to, if we are not in position to handle that condition, definitely we have to consider that this patient is not going to live long unless he is treated immediately with aggressive treatment. So this is what happened with this case. Coming to the 4th case of Shwasa, the same patient, another patient who had Shwasa, same symptom, was not able to speak. In all the conditions, in all the patients, there was only one symptom, Shwasa. And Vyavachcheda was again same, Kshudra, Tamaka, Chinna, Mahashwas. Again, to conclude which dosha
is the culprit, checked the nadi and saw that it is Tarjani and Anamika. This patient, same thing happened. I was with another patient and I was called. I went there and I saw that this patient was breathless. I checked his nadi and Tarjani and Anamika. I felt pulsation on Tarjani and Anamika. So it was Vata and Kapha. So Vata and Kapha indicates Chinna Shwasa. I asked them to check his throat. And when we checked his throat, he had edema in his throat, laryngeal edema, and he was choking. And that's why he was not able to even swallow. I couldn't give any medication there. Before I could give any medication, the physician present there gave the steroids and revived the patient. In 15 to 20 minutes, he became okay. Actually, this was a case which I didn't treat, but I'm mentioning it here because it was very serious. I have treated such cases, but this case was his throat was completely choked up. He was not able, means the saliva was coming out from his mouth. But it was not untreatable as I felt, because only Tarjani and Anamika had the pulsations. So this was kind of allergic reaction which caused him to choke, the laryngeal edema, and he was not able to. But I still believe that he was treatable with Ayurvedic medications. Somehow I didn't get the chance to treat him. So this was the case of allergic reaction. These were the cases where there was only one symptom and no other presentation. And with nadi, we could conclude which dosha is the culprit and how to treat it. Next is, this is another case of Kandu. This is first case of Kandu. In this patient, Sarvanga Kandu was there. It was very severe and he was scratching so badly and was in so much agony that he was not telling anything. I asked him a lot of time, anything else you are feeling? He was like, no, only itching. He would say not a single other symptom except for itching. And when checked pulse, it was Anamika, means Kapha. Now, most of the times when a patient comes with itching, Pittagna Dravya are given and that do reduce itching. But in this case, it was not correct if I had given Pittagna Dravya directly. After Nadi Pariksha, it was Kapha which was found to be culprit. So this patient was actually asthma patient and he was on steroids. So because his Kapha was being suppressed with steroid, it became Vimargaga, and because of that it went to Shakha and suddenly it started itching. How Kapha could start itching? Because most of the times we appreciate Pitta to cause itching. But actual culprit of itching is Kapha, because Kapha Kandu. There is no itching without Kapha. So it was Kapha, and when Kapha was treated, he became better. So this is second case of Kandu. This was a distant patient. Actually, Padmanabhan sir should have heard this case. This patient was in train, and from there they made a video call, and the patient had Sarvanga Kandu, severe Sarvanga Kandu, and on video call I could see that there were rashes, full body full of rashes and severe itching. That time I asked that patient to, they had this Ayurvedam app, and I asked the patient to check their pulse, check the pulse on Ayurvedam app, and from that they showed that Pitta was more in percentage. I asked the one who was accompanying that patient to check the pulse. So I just asked them to hold 3 fingers on the wrist and feel the pulse, and just tell me which finger do you feel the pulse more. And the patient said it was the middle finger. The fellow of the patient said it was middle finger. So I confirmed that it was Pitta which was responsible for the rashes and Sarvanga Kandu.
when after that, I told a few medicines which I had previously given, and with those medicines, in 15 minutes, the patient recovered. The itching stopped. The rashes were there. It took about 5 to 6 hours for the rashes to disappear, but the patient got relieved. It was allergic reaction, and whenever there is allergic reaction, whenever there is some allergens that comes in contact with our body, pitta starts to react. It becomes hyperactive, and because of that, it displaces everything. And when it displaces everything, there is accumulation of kapha. It's not actually kapha, but it is the dosha which are being destroyed by heat of pitta, and that being similar to the qualities of kapha, it is kapha, and that causes kandu. Pitta causes shofa in form of rashes, and kapha, that is in form of debris, causes kandu. So in this condition, when pitta was relieved, the patient got relief. This third case also had sarvanga kandu and rashes also. Now this patient had come to me. It was pratyaksha case, not a distant one. And when I checked the pulse, there was tarjani and madhyama, the index finger and middle finger. On index and middle finger, there were pulsations, very prominent pulsations. So it was vata and pitta. Tarjani means vata and madhyama means pitta. In contact dermatitis, we do see that vata and pitta are dominantly present on, vata and pitta do show its presence, and that is felt on tarjani and madhyama. So this patient didn't remember actually initially that if there was any contact, but later after treating, after getting cured, they remembered, yeah, we had been to the bushes and there something happened, and because of that, maybe because of that contact this happened. So this is what happens. So it was contact dermatitis. So if you find any skin condition with tarjani and madhyama, means vata and pitta, you can say that it is contact dermatitis. Okay, how to hide this? Next case of again kandu, and the lakshana were severe kandu, again same lakshana and rash. Now in this patient, when I checked nadi, on tarjani, pulse was palpable. So one thing I have to mention here is that it rarely happens that tarjani is felt alone in case of any skin disorders. Why is it so? It's because vata is present all the time. In skin disease, it is present all the time. Even in the previous cases, I didn't mention because I had to mention it here, that index finger is always palpable. Why is it so? It is because in kandu, kapha, pitta and vata, all of three take part. Kapha because kaphe kandu, pitta because it causes shofa, and out of shofa there is kandu, and vata because sparshanendriya is sthana of vata, and that is why whenever there is something happening on sparshanendriya, there always is kandu, and that is why may there be any condition of kandu, there has to be presence of vata in that patient. So we have to see carefully, is there vata, and if there is vata only, then we have to do, then what to do? It's not possible. It's really difficult for vata only to be present. So what has to be done then? Just a second. So we have to do Yavachcheda again, kapha, pitta and vata. How do they work? How do they present in nadi? So this is a little step ahead of what we saw till now.
till now we had seen that one finger and one diagnosis. You feel pulse on index finger, you got the diagnosis. You feel the pulse on middle finger, you got the diagnosis. You feel pulse on ring finger, you got the diagnosis. But this is a little ahead of the what we have seen previously. So this is what we are talking about: Anamika, Madhyama, and Tarjani. Kapha on Anamika, Pitta on Madhyama, Vata on Tarjani. There is another way to see which dosha is present, and that is by checking Vega. How the gati is, means when we are checking nadi, what is the gati or what is the Vega? Not gati actually, what is the Vega of nadi? If it is manda, it is kapha. And if it is gatimana, it is vata, also pitta. In vata and pitta, in both vata and pitta, nadi is gatiman. Now, it is not the same in both dosha. In pitta, the gati is slightly lesser than pitta than vata. So gatimana of vata is more gatimana than gatimana of pitta. So that has to be understood, but it comes with practice. But this much is enough for diagnosing in the acute conditions. So this is one stage, and next is tapa. If it is anushna, it is kapha and vata. If it is ushna, it is pitta. Ushna is pitta, it is confirmed. Manda is kapha, it is confirmed. Gatiman and anushna represent pitta and vata, and kapha and vata respectively. So here also in tapa, anushnata of vata is little lesser than anushnata of kapha. So that has to be considered in doing a little detailed nadi pariksha, but in acute condition, in emergency, it may not be needed. So how does it work in this case where I saw only vata? How did it work? In this patient, I checked nadi again and saw that it was not just it was on tarjani, but it was gatimana and it was ushna. So on tarjani means definitely vata. It was gatimana means vata is gatimana, pitta is also gatimana. So vata and pitta both, and it was ushna. Sir, audible? You're not audible. Okay, okay. Sir, are you there? Dr. Amit, sir? I think sir left the meeting. Just we will wait for sir. Sanjay sir?
Can you throw some light on this question? Which question? I think Dr. Amit sir has left the meeting due to some internet issue. One question is there that it's in case of kapha predominant, this is due to the kapha prakop, nadi should be manda, dar to guru and manda guna of kapha due to okay. So the nadi under the anamika should be feeble or not felt well in my understanding in spite of kapha prabal nadi. So please clear my doubt. Good evening, sir. Mahendra Due to Kumar. case if kapha predominant disease due to the kapha prakopa, nadi should be manda due to guru and manda guna of kapha to the nadi under the anamika ring finger should be felt or not felt well in understanding in spite of kapha prakopa nadi. So please clear. I don't think this doubt is with a preoccupation that the kapha prakopa which has happened is because of guru and mandaguna. If that would have happened because of guru and mandaguna, the guru and mandaguna can be felt. It depends on which level you are examining the nadi. If you are examining the nadi at the superficial level, probably you may get that kind of hansagati in the kapha finger where the kapha sthana is inflicted with prakopa, kapha prakopa or kapha karya. If it is inflicted by shita guna, you can find shaita. If it has been inflicted by guru guna, you can find guru. If it has been inflicted by snigdha guna, you will find snigdhatva. If it has been manda guna, it can be seen as manda. Nadi always directly proportionate to the guna infliction available in the dosha. It is not reverse. You cannot have a complete dosha prakopa with all the gunas. If you recall the samprapti properly, you will find it out. The dosha prakopa happens by some guna in some cases, by some more guna in some cases, or in all gunas in some cases. Depending on which guna was inflicted, you find the nadi with that guna. Amit's nadi pariksha is little different, but still it has the same interface. And in superficial level, if you have Amit is here probably, he's back and he probably will be able to answer in the style he examines the pulse. Amit, are you there? Amit sir, are you there? I think he is there. He will unmute. Because in a small place, network will be always an issue there in Vada. My suggestion is never go for pulse in the reverse way. You identify the pulse and then go to samprapti. That is the ideal way. Herme madam, is there any more questions? Hello? Yes, sir. Yes. Yeah. Any more questions? I think we are in the last phase of our this Nadi Prabodhini 2022. Dr. Madan sir, I think due to some, he has not joined yet. Any questions? Just expert speaker, Dr. Acharya Nadi Guru is with us. And I think Dr. Amitji, one question is there for you. So just after that, we will have the valedictory function. Please. Yeah, sure. There was some terrible problem from my side and it got abruptly disconnected. Really sorry for that. Yeah. Is there in chat box about the, okay. I think
I think actually I was disconnected Yeah, yeah, yeah. I will completely. read. That's why. I will read it, or doctor, you can ask directly about this Kapha Nadi. डॉक्टर महेंद्र जी अनम्यूट करके डायरेक्ट पूछिए तो इट्स बेटर. ऑप्शन है आपके पास, आप अनम्यूट करिए प्लीज, जस्ट बी फास्ट. In cases of kapha predominant disease due to the kapha prakop, nadi should be manda due to the guru and manda guna of kapha. So the nadi under the anamika should be feeble or not felt well in my understanding in spite of kapha prabalta. It was quite fast. Actually, Okay. See, it's about assessing what exactly is happening in there. Means it is not necessary that kapha is present, and that is why the nadi will be manda, and that's why I mentioned in the Vyavacheda that kapha, pitta, and vata are to be assessed with the place, the location where they can be identified, the vega, either manda or gatimana, and the temperature, anushna or ushna. In all these conditions, with all these criteria, the any dosha expresses itself. Like if madhyama, it is expressed on madhyama, and it is gatimana, and it is ushna, only then we can say only pitta is there. So it's not just one this thing. There are various factors which are to be seen. I think Shilpa ma'am would be the right person to explain that, because in her presentation about Prakriti in Nadi Mahakumbha, she had mentioned that when we see a dosha, when we feel a dosha, when we feel a pulse on finger, it shows two things. One is guna and the other is the location. From both the things, we can identify that this dosha is present. So if it is on index finger, it is vata. If it is on this middle finger with the gati of vata, then also it is vata in the site of pitta. The fingers actually represent the site of dosha. It's not actually dosha only. It is the site of dosha. And in that site, we assess what all dosha are present. Actually, I didn't go in the details of dosha bheda because I didn't have to, as I was considering only the acute conditions where we had to act immediately. Even with sub-dosha level, we can see in acute conditions, but that was very nicely explained by previous speaker, so I didn't go in explaining all those. Sushant sir is very well versed in that, and he explained it very easily. So I explained only the easiest way. Even in the initial phase, we can practice this. The difficult part of this technique, it is one of the techniques I practice. I practice many other techniques, many other ways to assess dosha. This is one of the techniques. In this temperature, the tapa of the nadi, that is one thing which takes a lot of practice. Otherwise, vega and the location is quite easy to understand, because many times we get confused with the temperature of the skin, the temperature of our fingers, and the nadi. Most of the times it becomes difficult to understand whether the temperature is of my own fingers or the skin. So we have to understand the temperature of the nadi. So that's where it becomes a little difficult. Otherwise, it is the easiest way. Yes, definitely, sir. So we are at the end, and I welcome Dr. Madan sir from Cambridge. He is a very renowned scientist and research person. I would like to invite Dr. Madan sir. Future scope in the Nadi Pariksha, just a little bit. Just we are having a shortage of time, and our chief guest of this valedictory function, a great guru, RAV Guru, Dr. Ramdas Awad sir is there with us. So welcome, Dr. Awad sir.
also. And I request Dr. Madan sir to be there with us with this advancement in Nadi Pariksha, or what is the scope for the scope. Yes, sir. Shilpa ji, namaskar. Thank you for having me here. Very happy to see so many Dr. people. Sanjay sir is there. Dr. Sanjay ji. Here. Namaskar ji. I can see. Very happy to be here, first of all, and very happy to be with all of you here on this special day. I'm just going to hold up one book. Ji. Yahan pe, this is one, I don't know if, is it visible, Shilpa ji? Yes, sir. Yes. Achha, this is the medical classic of the Yellow Emperor. Yeah, I will just. This is a textbook on Chinese medicine. And this textbook comes from about 350 BC, just like Charaka Samhita, etc. Or isme, there is one chapter about Nadi Pariksha. This is in the Chinese system of medicine. So this, and I will just, if I can quickly, my system is a bit slow. I hope you can hear me clearly. I just want to tell you which chapter. It's chapter 13 of this book. It is about Nadi according to the Chinese system. Now, I don't know if this book is available readily in India, but it is easy to obtain. And the Chinese use the word qi, spelled Qi, to explain what we understand as prana in our system. And when I read through this book, and Sanjay ji will know about this because he has connected us with many people in Bangalore, with our Nadi Tarangini in Joshi ji in Pune. When I read this book and when I look at what is explained here, it is quite amazing that there is an understanding that dates back across a few thousand years and in different cultures. So it is not only in our system. So whether in India we go to the Siddha system or the Ayurveda system, they are using this example. That means there is something there that we need to understand. Now, I was happy to just hear Amit Pal talking about how you do distinguish between the temperature of the finger and the temperature of the skin of the person you're testing. Now, these are very difficult things for a lot of people. For a lot of people, these kind of subtleties are very difficult to master. I will give you one example of why this approach is important and why we might need to modify a little bit to make it accessible for everybody. Sanjay ji will say it is very easy, 10 minutes mein sikha denge aapko pura nadi ki. Magar sabki bas ki baat nahi hai ye. Now, Sanjay ji will agree with me ki it is not for everybody. ठीक है, okay. It is important. It is in many cultures. Hamari Hindustan mein, it is in Siddha, it is in Ayurveda. Or we hear so many stories. Many people, kahin Rajasthan mein hai, kahin UP mein, kahin Assam mein, kahin bhi dekho, if you see a lot of people with this talent. Acha, so where do we go from here? Sanjay ji and Pawan Sharma ji and others, we have all come together in our platform, jo piche likha hua, independent. There is something we need to do to understand this better because it benefits everybody. Anirudh Joshi ji, you have heard him. Anirudh ji has used all the modern technologies and he has shown us how we can use vibration of the air to measure and to understand. And you have seen his data already. Krishna Paksh, Shukla Paksh mein, how the Nadi is different before the weekend, after the weekend. So there are many things that we can do. But where do we take this technology next? So I am saying this is useful. It is very important, this non-invasive diagnostics. You can just hold an Nadi and you can tell many things. And non-invasive approaches are very important for future medicine. Now, where do we go in the future? So I'm not debating about the usefulness of this procedure, but where do we go in the future? So I
feel we need to make it accessible for more people, more students, for several reasons. If you give them a tool to make it easy to understand, then they will be more interested, they will practice more, and then the skill will come to them. That is one thing. The second thing, if we have this slightly more easily usable, then anybody can use it. So where do we go from here? We look forward to leadership from Shilpa ji, Sanjay ji, and many others on this platform to guide us to understand that there is something here. Now, I said the Chinese have described this, they call it qi, we call it prana. Are we understanding this concept of prana correctly? If I can, Shilpa ji, if I can share one slide, yahan pe, and this is that section from the book. It might take me just 1 second to pull the slide up. Yeah, please. You can see. Give me just one second, and then it will be up here on the. Please tell me if you can see my screen. No, sir, not yet. I had shared this image. I will share it to Shilpa ji also, these images that I'm going to show you, so that anybody who's interested can study this. So this is that book. So this is a related book. And when we look at all these things, you will find that cultures have understood. Sanjay ji, I will send you, aapko bhi bhej dene ji, iski pura jo kitab ki jo hai, practical Chinese medicine. So is there some opportunity for us to interact with different cultures? Is that the way ahead? So is it to be done slightly differently? I don't know what the answer is. Probably. Korea walon ke paas kuch hai, China walon ke paas kuch hai. Should we come together in some way? So this is the chapter I wanted to show you. Yes. 18th article. Can you see this? Thoda sa saaf. Acha. Isme ye likha. Sorry, let me just stabilize this thoda sa. Discussion on manifestation of the pulse chi of healthy people. The plain questions. Ab yahan pe there is a very interesting connection here. Ye kehta hai ki emperor asked, what about the pulse of healthy people? Uncle Chi answered, a man exhales once with each pulse beat, while the pulse beats twice, and he inhales once while the pulse beats. So it's an interesting connection. Ki shwas ke saath he is connecting the pulse beat. I don't know if you do this in your system. Jab hum naadi pakadte, do you connect it with the pulse, with the breath? You don't. So you see, the Chinese man is understanding something that we are not understanding. Acha, dusri, then he goes on to say, and then the pulse beats once again in the interval. So saans ki, from one saans to the next is an interval, and it beats. This man is called a healthy person who has no ailments. We often measure the patient, a pulse in contrast to it. If one exhales once while the pulse beats and inhales once when the pulse beats, it is called a scant chi. Shayad hamari nadi mein we will call it, I don't know what we will call it, we give it a name, some kind of. So the point I want to make is, there are perspectives that we can gain from Purani kitabon se, or agar China jao, we will be able to bring the Chinese Ved into our discussion. And I'm looking to Sanjay ji, Shilpa ji to see how we can make this happen. Ek to hai ancient technology. If we take this knowledge and go to where we are with Anirudh ji, can we make something else that connects with breath work that the Chinese understand? Theek hai na ji? So I feel that connection with breath work is automatically connection with the rest of the body's physiology. That is what we are understanding.
but there may be a better way to teach students. There may be a better way to develop the next generation of machines for us. So, number one, we cannot dismiss the fact that there is a connection between Nadi and health. The Chinese man is saying there is a connection between breathwork and Nadi. Agar Sudhir Bagga ji se pucho, Sudhir ji who runs the Life of Science, Sudhir Bagga ji se agar pucho, Sudhir ji will say it has to connect to heart rate variability. That is a, I don't know how many Vaidyas know about heart rate variability. ठीक है ना जी? What is clear is breath work controls heart rate variability. So I feel there is a way in which we can approach this science. We must advance it more. It is very important for the future to understand this. And if there are people among us who can understand how to distinguish the Nadi, how to improve the sensitivity. If I talk to Dr. Vasant Lad, he will say, divide the ungli into 4 sections, north, south, east, west, and then feel the pulse. Now everybody, he can do it because he's been doing it for so many years, 50 years or more. But how do we teach our young students about this? Maharashtra mein, Shayad Sanjay ji, you know this, there is another school that says you divide this into 5 sections here vertically. Now, that is also correct. But how do we teach it to our young students? And how do we teach them to make the connection? So, Shilpa ji, my comment at this point is a very simple one, that there is a big future for this. Definitely. And that future is in our hands. And Sanjay ji is very special that he is pushing for this. And he wants more people to learn about it, more people to practice, more people to connect with. And I'm saying, let us also connect with other cultures. So number 1, China, number 2, Korea, number 3, Japan. Thoda, let us do that. Let us advance the work that is being done by Anirudh ji in Pune in an open way so that more young students will go connect with this and see if they can find something else. And in Sanjay ji already knows Basavaraj ji in Bangalore. He has an interesting machine that connects Nadi to the Chinese meridian system. So there it is. So let us see and let us become that platform where this dialogue extends. And Shilpa ji's college can be a good place for us to focus on this space. And let us take this forward. And then when we connect with Shayad Sanjay ji already knows UP mein Dr. Sahab, unka naam kya hai ji, Bajpai ji. Deshbandhu Bajpai. Deshbandhu ji. So there are people there with some skills, and let us bring them all together, because connecting this, what I particularly like what Amit Pal says, there is a connection between how he said, the temperature of the finger and the temperature of the skin. This is so important. So important. I finish off, Shilpa ji, with some specific 1 or 2 examples. Whenever I with students, I say, take your finger and just check the sensitivity on your 4 fingers, waise karke dekho. And you will find that there are some fingers that are more sensitive for some students. And we are saying Vat Pitta Kapha here. Maan lo, this finger is less sensitive. Are we missing some opportunity for revising this protocol? Vat Pitta Kapha, you need 3 fingers. Should we be using the most sensitive fingers, or is that against the whole logic of prana? I don't know. These are open questions, For me, I teach students another thing. I say, do this. If they say this is the most sensitive finger, to increase the sensitivity, I say, do it clockwise and do it counterclockwise. And see if you can notice a difference. And people say, pehli cheez to bilkul aasan, ye 4 ungliyon mein thoda sa daba ke dekho, kahan pe sensitivity jata. And that is straight away. Somebody says, this is more sensitive. This is.
have we standardized this procedure? अच्छा, दूसरी चीज, take your most sensitive finger, वैसे clockwise लगाओ इसको थोड़ा, so clockwise just turn it, और counter clockwise करो, और अब बताओ कहाँ पे sense, which is more sensitive, and they can notice this. इसके मतलब जो अमित पाल जी ने जो बताया कि there are differences and there are kinds of sensitivities that are there in people, and sometimes we need to understand that also. So I'm just saying that we have many gaps in this approach. We need to fill those gaps, and only discussion like this will help us open up those areas. Number two, the whole concept of prana is an area that needs deep study, very deep study. यहाँ पे last किताब एक है हमारे पास, biophysical aspects of coherence in biological order. And when we are saying pran is what keeps order in the biological system, then we need to see what is the basis of this. So my final comment to our Vaidyas, number one, it is a very special skill. Amit ji, aapne jo bataya ki kahan pe, if you want to understand pith, kahan pe, which part of the, that is a very important logic. वो जो logic जो आपने बताया, that is a very important logic. Modern medicine doesn't have this logic. कि पित्त कहाँ पे, that logic doesn't exist, but it is a way to integrate the system. It's an integrative expression, and we shouldn't lose that. But at the same time, we must try to refine our approach. You have a beautiful concept, Vat, Pitta, Kapha, Panchabhut Siddhanta, all these are very rich concepts, you know. Modern medicine doesn't have it. So don't lose that. Anuruddha Joshi has given us a machine. Basavaraj has given us the machine. Sanjay ji is pointing us in a direction. So let us come together and stay together and move this forward. So these are my words. Immense potential for the future and immense opportunities for the future. And we need to advance this thinking. But we must also be aware where we can refine our thinking and our methodology. So with those few words, I thank Shilpa ji for having me on this platform. I thank Sanjay ji for listening to my words. I am not a Nadi play. I play with this every day. I try and see if I can divide my finger into 5, whether I see north, south, east, west, whether I can do at 7 levels. They say Lard ji has taught us 7 level pe kaise karte ho. So I do all this, but I'm not a clinician. I'm a DNA biologist, but I understand that DNA biology is not the way to understand human life. And human life has to be understood, I feel, using the language of Ayurveda, number one. And within that, the deeper concept of prana. And within that, understanding how to monitor the flow of prana in the system and between systems. So this is my short review of what is in my mind and where I feel, with the guidance of young people like yourself and senior people like Shilpa ji, Sanjay ji, and others here, where we can take this very, very important diagnostic system for the future. There may be some people among you who will be like Ravi Shankar, who can play the sitar. There is something called the sitar, there is something called a player. There are so many sitar players, but there is only one Ravi Shankar. So similarly, there may be people among you who are doing Nadi analysis, but there can only be a few Ravi Shankars there. So is that the case? Do we make it easy for more people? These are all open questions. Namaste ji. Thank you, Shilpa ji. These are my brief thoughts. I'm happy to be here, and thank you for having me on this platform. Namaste. Thank you, sir. Thank you very much. Really a great thought you have just said about that collaboration, about the Chinese, Japanese, and whatever there are the schools of learning Nadi Pariksha. So thank you very much. And here we are at the end of this Nadi Prabodhini 2022. And I would like to invite Dr. Joshi sir to
welcome our today's guest of honor, Dr. Ramdas Award Sarji from Kopargaon, Maharashtra. Yeah. Good afternoon to all of you. Welcome to our final valedictory session of this Nadi Prabodhini series. I welcome to Vaidya Ramdas Award. The name, उनका नाम ही काफी है, वो कोपरगांव महाराष्ट्र में बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर हैं। सर को हमने अपने इस प्लेटफॉर्म के द्वारा सम्मानित भी किया है और उनके कई लेक्चर्स हुए हैं जो विभिन्न विषयों पर हुए हैं। कोविड के दौरान जब मेरे को लगता है कि सबसे ज़्यादा लोग उनके लेक्चर्स को ज्वाइन करते थे और बहुत सारे लोगों को उन्होंने मोटिवेट भी किया है। तो आपका सर बहुत बहुत स्वागत है नाड़ी प्रबोधनी के इस सीरीज में। इसका वैलिडिटी सेशन है, वैलिडिटी सेशन। यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि सर ज्वाइन कर चुके होंगे, शिल्पा जी। और सर आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। वैद शिल्पा इरमे जी, आप सर का थोड़ा सा परिचय दे देंगी और बेहतर होगा। शिल्पा जी, मुझे लगता है कि आप शायद सर ज्वाइन नहीं हुए अभी, आई थिंक। तो ये नाड़ी प्रबोधनी जो ये 3 दिन की सीरीज है, ये इसमें विभिन्न पेपर प्रेजेंटेशंस भी हुए हैं और यहाँ पर सबसे पहला प्रयास रहा है कि इसमें पेपर्स भी नए नए स्कॉलर्स ने प्रेजेंट किए हैं, जिसमें अच्छे पेपर्स को सेलेक्ट भी किया गया है। और अभी आप उन प्रेजेंटेशंस के बारे में भी आप जानेंगे और उनमें से कुछ अच्छे प्रेजेंटेशंस जो हुए हैं उनको यहाँ पर उनके लिए प्रशस्ति पत्र भी उनको दिए जाएंगे, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि 3 दिन के सेशंस में जो भी चीज़ें आपने नए वैद्यों ने सीखा होगा नाड़ी के बारे में, इसमें विभिन्न नए से लेकर के जो हमारे ख्याति प्राप्त लब्ध प्रतिष्ठित वैद्य हैं उनके भी आपने व्याख्यान यहाँ पर सुने। और मुझे उम्मीद है कि आपने यहाँ से कुछ नाड़ी के बारे में और आपकी अपनी प्रैक्टिस में, जैसा कि अभी यहाँ पे मदन थंगवेलु सर ने कहा कि आप विभिन्न अलग अलग सिस्टम्स को भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान जब विस्तार लेता है तो वो किसी एक देश की सीमा में नहीं रहता, तो विभिन्न देश की सीमाओं में ये ज्ञान जाता है। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि सर जब ये हमारी जो वैदिक नॉलेज थी एक समय बहुत एक्सट्रीम लेवल पे थी, बीच में बहुत सारे, अगर आप नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय की जानकारी तो भारत के लोगों को थी ही नहीं। नालंदा विश्वविद्यालय की जानकारी हमको तब हुई जब चाइनीज एक जो यहाँ पे स्कॉलर था, जब वो इधर घूमने आया था तो उसकी डायरी मिली तो पता चला कि यहाँ नालंदा नाम का एक विश्वविद्यालय था, तो जहाँ वैदिक ग्रंथ भी रखे गए थे। हालांकि वो बाद में बुद्धिज्म को एक्सप्लोर करने का एक सेंटर बन गया था, लेकिन वहां पर बहुत सारे स्कॉलर्स आते थे जापान, चाइना और कोरिया से, और वो लोग वहां पर स्टडी करते थे हमारे वैदिक शास्त्र को। और उन्होंने ये सब नॉलेज खुद जो वेनसांग था इसने अपनी डायरी में मेंशन किया है कि जब मैं भारत में नालंदा विश्वविद्यालय में हूँ तो इस समय में 1300 स्कॉलर्स यहाँ पर वैदिक ग्रंथ का नॉलेज ले रहे हैं। तो निश्चित है कि ये ज्ञान यहाँ से चाइना भी गया, कोरिया भी गया, जापान भी गया, और वहां पे उन लोगों के वहां के वैद्यों ने अपने हिसाब से इसको परिष्कृत किया और अपने अनुभव भी जोड़े। जो आपने अभी मदन थंगवेलु जी ने जो चाइनीज किताब दिखाई आपको, ऐसे विभिन्न हमारे विभिन्न देशों में जो वहाँ की जो मेडिसिन हैं उनमें वो मेंशन है। तो निश्चित रूप से बहुत सारी ज्ञान जो हम ले रहे हैं ये बहुत सारा टूटा हुआ ज्ञान है, हो सकता है कि वो वहां से हम उसको मिलाएं तो हमारा ज्ञान और परिष्कृत हो सकता है। इसीलिए हमें विभिन्न जो हमारी अलग अलग देशों में जो चल रही विद्याएं हैं, विधाएं हैं, उनको भी हमें अपने साथ में जोड़ करके और एक कोलैबोरेटिव स्टडी करने की जरूरत होनी चाहिए। तो इसमें हम उम्मीद करेंगे कि सभी से हम मदन थंगवेलु सर से ही अनुरोध करेंगे कि कोई जापान के या कोई चाइना के, कोई कोरिया के ऐसे मिल जाएं कोई, तो उनको भी इस प्रकार के हम सेशन में जोड़ें और उनका भी कुछ इसमें नॉलेज आए तो बड़ा, तो फिर हमारी जानकारी बढ़ सके, क्योंकि वहां पे वो क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो मैं यहाँ पर जी हमारी तरफ से एक ही सोच है जी कि सीनियर लोग हैं हमारे साथ, शिल्पा जी है, संजय जी है, तो इनके साथ जोड़ के एक बनाए छोटी सी एक पन्ने, एक पेज का एक प्रपोजल, और उसको डायरेक्ट
संजय जी और शिल्पा जी से डायरेक्ट भेजे हमारी एम्बेसी चाइना पीकिंग में, बीजिंग में जो इंडियन एम्बेसी एम्बेसडर को, और जापान में एम्बेसडर, कोरिया की एम्बेसडर को भेज दें हमारी यहाँ से, आपकी तरफ से, कि कहेंगे कि हमारी हुआ एक चर्चा, यहाँ इतने लोग आए थे, ये these were the topics discussed, और we want to interact with, एक चीज तो वो. Second, we will independently identify the people in these places, क्योंकि वहाँ every country has their traditional medicine, university भी है वहाँ अलग अलग जगहों में, तो वहाँ we will interact directly. So this is what I feel easy steps we can do. Just for them, just for our ambassador साहब लोग जो बैठे, let just for them to know that we have discussed these things here, we feel we need to interact. Number two, Sanjay ji is already connected with IIT Mumbai, and it's a big, it's a prestigious interaction that is going on, and we can take this forward. जो आपने जो बताया, हो सकता है कि some of the older understanding is developed and maintained in its full form in some locations. हो सकता है. जैसे हमारे देश में, when we go to different places, there are many people very talented, बहुत very talented people. Award sir join है, हो चुका. They always have that interactive impact, because that is what the essential phenomena is. So we can connect the broken links and to the final what was the earlier phenomena, and with the use of technology. I'm really glad Amit has joined IIT PhD program for pulse diagnosis at Parul University. Naveen ji is doing a fantastic work by bringing up all those things together, and he himself is one of the finest and fantastic Nadi Vaidyas. He has his own technique of doing Nadi Pariksha, and he teaches it very freely to everybody. So this is how, if we all start sharing our knowledge, so this knowledge will reach to every single student of Ayurveda across the globe, and that will automatically will compel all of us to interact with the other systems, and then to make some interactive phenomena, and then integration will be an invariably inevitable phenomena, and that integration of traditional knowledge across the globe with the best of technology, with machine learning and with artificial intelligence, with best of the sensors available now, the wearables are going to be the future probably, which I foresee in next 10 years of time. 10 years is a long time, 5 years down the line. The multiple variables will come in the market. Those not only will access the pulse, but the variations according to every possible phenomena, and will direct us immediately what to do and what not to do. So that is not far away. But then interacting and integrating all these worldwide phenomena, association like European Ayurveda Association, where you are heading, sir, could be of immense importance, because if we go to China or Chinese, even if I write to even Naveen ji, because he's been with Ayush Darpan for last 10 years and has done global phenomenal work in the field of Ayurveda. So if his things are coming in picture, probably there will be some ear given to us. Otherwise, IIT writes, probably they may hear or may not, because they are, how Chinese are so closely knit. They don't want to get the things out of it. Hope so, and soon the interactive phenomena will come up. Thank you very much, sir. And thank you, sir. Thank you, sir. Active after your. Thank you, sir. आपने बहुत अच्छा सजेशन दिया, बहुत बढ़िया सजेशन दिया. हम प्रयास करेंगे कि हम एम्बेसी के थ्रू अप्रोच करें. तो वैद्य शिल्पा जी, सेशन को कंक्लूड करने के लिए आप आगे की कार्रवाई करें. जी. Yes, sir. Just we have I think Dr. Awad sir is right now busy. तो end करते हैं हम लोग. सभी का बहुत बहुत आभार. Just looking forward with our just end up sir result declare करेंगे paper presentations के. Result तो declare paper presentations तो सभी ने बहुत अच्छे से किया है, but फिर भी एक पहले first 3 numbers हमने निकाले हैं. Numbers नहीं है, just appreciation for those who have presented well, and just have a throwback on this Nadi Prabodhini. I just made a short video of this. I will just share the screen.
So thank you very much, all the speakers, judges, scientific panel members, all the participants. Thank you very much. Sir, just declare कर दीजिए first 3 numbers. मैं शो करूँ जी जी सर्टिफिकेट? आप शो करिए, मैं बताता हूँ। जी, जो हमारे पेपर प्रेजेंटेशंस हुए हैं उनमें 3 बेस्ट पेपर्स को चयन किया गया है। वैसे तो सभी के पेपर्स अच्छे थे, पर 3 पेपर्स बहुत ही अच्छे थे। सबसे बड़ी बात है कि नाड़ी में पहली बार पेपर प्रेजेंटेशंस कराए गए हैं, लोगों का इंटरेस्ट आ रहा है। तो अभिजीत एस मखदूम जी, इनको फर्स्ट पोजीशन नाड़ी प्रबोधिनी जो में सेमी वेबिनार वेब इवेंट में आपने जो पेपर प्रेजेंटेशन दिया, उसके आधार पर आपको ये सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट हमारे द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। हम आपको इसकी हार्ड कॉपी जो है सॉफ्ट कॉपी मेल से आपको भेजेंगे। बहुत बहुत आपको बधाई है डॉक्टर अभिजीत एस मखदूम जी। दूसरा बेस्ट पेपर, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको बहुत बहुत बधाई। इतने बड़े बड़े वैद्यों के समक्ष आपको ये प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है। दूसरा ज्योति मेवाल जी, साइंटिफिक पैनल ने डिसाइड किया है कि आपका नाड़ी प्रबोधनी में पेपर प्रेजेंटेशन कैटेगरी में आपको सेकंड पोजीशन जो है आपके पेपर को बेस्ट प्रेजेंटेशन में दिलाना गया है। आपको बहुत बहुत बधाई। आप और तीसरा बेस्ट प्रेजेंटेशन जो है वो डॉक्टर राजेश कुमार वर्मा का पेपर प्रेजेंटेशन कैटेगरी में बेस्ट पेपर के रूप में रहा है। आपको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इन तीनों ही बाकी भी पेपर्स अच्छे थे, पर इन तीनों को बेस्ट पेपर कैटेगरी में माना गया है। हमारे साइंटिफिक पैनल ने इसको डिसाइड किया है और आपसे उम्मीद करते हैं जिनके पेपर्स पब्लिश नहीं हुए हैं तो आने वाले डेफिनेटली जो हमारा ई वर्जन आता है आयुष दर्पण का मैगजीन का, उसमें आपके पेपर्स भी पब्लिश होंगे जी। तो ये बाकी लोगों ने जिन्होंने भी पार्टिसिपेशन किया उन सभी के सर्टिफिकेट्स उनको ईमेल से भेजे जाएंगे। ओके, यस सर, यस। और जो हमारा ई इशू है वो भी हम लोग जल्द ही पब्लिश करेंगे उसको। और एक शिल्पा येरमे जी और हमारे द्वारा एक किताब लिखी जा रही है नाड़ी विज्ञान की, वो किताब भी आपके समक्ष उपलब्ध होगी और वो भी आपको काफी जी, वो भी आपको मिलेगी 2 days। या ओके, सो थैंक यू वेरी मच ऑल एंड हियर वी एंड ऑफ दिस नाड़ी प्रबोधिनी एंड होप आप सभी यहाँ पे आए। आप सभी का बहुत थर्ड सीजन विल कम सून। ओके, थंगवेलू सर जी, अमित पाल जी, नीलिमा रस्तोगी जी, साई राम जी, बहुत सारे तो स्टूडेंट्स भी हैं, नरेश कुमार मित्तल जी जिनको मैंने नाड़ी पढ़ाया है, सतीश कुमार रावल जी, ज्ञानेन्द्र सहपाठी जी, आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार, शुभ रात्रि। फिर आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। अमित पाल नमस्कार। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।